this class. How's everyone doing? I'm just gonna start the link here. Copy, lock. Okay, let's get started, guys. How's everyone doing? How's everyone doing? Why has nobody joined the channel? Seconds. How's everyone doing? Sir, please check my DM. May D, I don't check DMs because there's so many. तो आप मुझे जब लाइव आते हैं तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया करें. I can help you, okay? There's probably like, I'm not even joking, 5,000 DMs. I'm not even joking, right? I cannot get to everyone. मैं जब भी आपका जो क्वेश्चन होगा ना मे डी, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें ना आपको सब आंसर मिल जाएगा. आई कैंट आंसर, आपको मैं समझा नहीं सकता डीएम में, राइट? जब भी मेरी स्टोरीज़ देखें, मैं रोज़ स्टोरीज़ में लगाता हूँ वीडियोस, क्योंकि आप लोग वही चीज़ सवाल, एक ही सवाल मुझसे बार बार डीएम में पूछ रहे होते हैं. ओके गाइज, दिस वीडियो आई जस्ट पोस्टेड वन. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट. बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं. दिस वीडियो, how do I see the video? This one, guys. Okay, ये important वीडियो है. इस पे मैंने बात करी है डेज ऑन द मार्केट की. ठीक है, ये पूरी वीडियो सिर्फ एक मकसद पे बनी है, जो कि डेज ऑन द मार्केट. ठीक है, डेज ऑन द मार्केट आपको कैसे बताता है कि अगर इतने दिन है तो उसका क्या मकसद है, इतने दिन है तो उसका क्या मकसद है, इतने दिन है तो आपने करना क्या है, और इतने दिन है तो आपने कौन सी ऑफ़र देनी है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको देखें. ठीक है, क्लास के बाद देखें, क्लास में देखें, डजेंट मैटर. मेक श्योर कि आप इसको देखें. Ali, link in the bio, brother. You can start using the link or watch my YouTube videos. You can find all the process there. Okay. Yeah, so this is going to be very helpful for everyone. मैं Discord में भी इसको पोस्ट कर दूँगा, मुझे टाइम नहीं मिला. आज एजेंट से बड़ी लंबी बात हो रही थी, तो that's why. Okay. Alrighty, let's get started, guys. आज का जो क्लास का स्केड्यूल है, बेसिकली हमने नया स्टार्ट किया है, राइट? नया क्या स्टार्ट किया हमने? नया ये स्टार्ट किया है कि हम कोल्ड कॉलिंग करेंगे पहले. ओके, एंड देन आई विल, मैं आप लोगों को लीड्स दे दूंगा जो भी कोल्ड कॉलिंग की होती है. ठीक है, और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके बाद जाके हम डीएम देखेंगे. मैं आपको डील्स की अपडेट दे देता हूँ. I think Dion, someone Dion, I don't know whose agent was that. Dion agent, अगर आपको पता है तो आप लोग सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कौन किसकी है. Dion agent ने कोई ऑफ़र की एक्सेप्टेंस करी थी, बट उसने बोला है कि नॉन रिफंडेबल मनी जमा कराओ, राइट? कि वो पैसे आपके, अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको देने हैं, अगर प्रॉपर्टी नहीं लेते तो भी आपको देने हैं. So that's an issue. We are negotiating on that. Seth, Amen. So far we haven't heard back from him. Yesterday we sent him the contract. हमने फिल करके उसको भेज दिया था कॉन्ट्रैक्ट. आज उसका वेट कर रहे हैं. बाकी मेरे ख्याल से एमन आपने शायद आज भी कोई सबमिट कराया था, टीम ने बोला था, वो हमने ऑलरेडी कर चुका है. दूसरी चीज़ एस की, आई डोंट नो कि एस के साथ क्या चल रहा है. आई थिंक इट वाज अब्दुल्ला. अब्दुल्ला, वी हैव सेंड द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम वेट कर रहे थे. एस से सारी बात हुई. आज उसकी असिस्टेंट ने बोला है कि हम लोग अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं और उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया. अब कॉन्ट्रैक्ट मैंने खोल के देखा था, वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट किसी और बंदे के साथ हैं, हमारे साथ नहीं है. एंड आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एस ने मुझे अपने एजेंट से बोला था कि इसको कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के दो.
तो आज मैंने इसको ईमेल करी है, इसको फ़ोन भी किया है, और उसने उठाया नहीं कि क्या चल रहा है, आई एम नॉट श्योर. ओके. So that's the ace. For the LOI that we need to send for I think header, we got the stuff yesterday. We will fix the numbers today, and then hopefully we'll send something today for sure. Okay, we got the numbers that we asked for, so they are approved. We just have to run it again, comparable, and send it the contract. Send you the LOI or the company. Second thing, what else? Fahim, I think I was somebody in my team said they didn't get a DM from you for the properties that we need to follow up. From their point of view, there was three properties, two are not good. So I think I mentioned that, and one that was good, we are still processing. But you mentioned there is two more. तो आप मुझे DM कर दें list of the properties को follow up का, ताकि मैं confirm करके आपको दोबारा बता दूँ. और किसका रह गया है? I think Abuzar ka ek tha house, we are under contract on that. We're just waiting on marketing that deal. What was the address on this contract was ours? No, the address was ours. Oh, actually, I didn't. I don't remember checking the address, but I remember the contract name was a different name. He put a different LLC. So maybe अगर उसने गलती कर दी है तो वो एक अलग बात है, but he didn't put our name on the contract. Abdullah. Nasheed property, Fahim, I actually called him today. He didn't pick up. Today, as in yesterday, he didn't pick up. Joseph property की अभी update नहीं है. We're just working on that. बाकी की प्लीज़ जो आपकी नेक्स्ट की 3 प्रॉपर्टीज़ की अपडेट है वो प्लीज़ आप मुझे DM कर दें, ताकि मेरी टीम इसको देख के इसको रिस्पॉन्स कर दें. ठीक है. I don't know why I have YouTube on. Okay. What else? Why stuck? Why? What is it? there आपका फेस नहीं दिख रहा. Oh, yes, my video wasn't on. My bad. Sorry, guys. Have you checked my DM? Shahrukh will check the DMs in the class in the last 1 hour. ठीक है. First hour I'm gonna do DMs. अच्छा, अब जो leads होती हैं उसको कैसे distribute करना है, that's gonna be a question too. I think we're gonna keep it on the, हम कैसा करते हैं कि DM रिक्वेस्ट पे रखते हैं कि जिन्होंने DM रिक्वेस्ट करी हुई है, क्योंकि वो ज़ाहिर है सबको पता है कि DM रिक्वेस्ट कैसे होती है, तो उसी से हम लीड का स्ट्रक्चर रखते हैं. आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर. ओके. Again, so the DM request after the class is started. I'm excited to call a cold call in front of you guys, and it's going to be fun. काफ़ी टाइम से हमने करी नहीं है cold call. All right, let's get started. Okay. Now for cities मैं basically जाऊँगा अपने hashtag creative में. ठीक है, creative cities. Let's go with this city. Actually, okay, this city Alabama is also good, guys. If you're not sending emails on this, please do. ठीक है, ये वही डिट्रॉइट तरह का है. घर इसके 100 के अंदर आपको आराम से मिल जाएंगे, और बड़े घर मिल जाएंगे 3-2-4 वाले. तो मेक श्योर आप इस पर फोकस करें. यहाँ से मैंने रिमूव बाउंड्री कर दी, और सिटी के थोड़ा सा मैं क्लोज चला गया ताकि मुझे चीज़ें मिल जाए. ठीक है. अब अगर आप मेरी प्राइस देखें, हाई टू लो है. ठीक है, मेरा फ़िल्टर तो वही सेट है जो सबका सेट होगा, बट हाई टू लो. हाईएस्ट घर जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे इज़ $100,000 का. ठीक है. आप लोग बोलते हैं कि भाई 100,000 बहुत कम है कैश के लिए. नहीं, आपके पास 127 पॉसिबिलिटीज़ हैं सिर्फ इस सिटी में, राइट. और अब आई गेस हम और भी कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ 100,000 का किया हुआ है, क्योंकि मैं सेल्फ फाइनेंस का और कैश का दोनों का सोच रहा हूँ.
ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ हाथ से ना जाए. We'll do both. ओके, सो 100,000 के सारे ये घर आ गए. फॉर सेल मैंने कर दिया. 3 bedroom, एनी बाथ इज़ फाइन. प्रॉपर्टी टाइप मेरी मल्टी फैमिली हाउसेस हो गई. फिल्टर्स मैंने इसको सेट करना है. न्यू कंस्ट्रक्शन, प्री फोरक्लोजर हटा दिए, ऑप्शन हटा दिए. प्री फोरक्लोज सही है. एक्टिव, कमिंग सून, यादा यादा हटा दिया. ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक और काम कर सकता हूँ. डेज ऑन द मार्केट डजंट मैटर फॉर मी फॉर नाउ. एंड कीवर्ड्स डाल सकता हूँ. रेंट, सेल्फ फाइनेंस. मैं रेंट डालता हूँ क्योंकि मुझे रेंटेड प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए. ठीक है, जो ऑलरेडी रेंट हो उस पर मेरा कैश ऑन कैश अच्छा आएगा, और मेरा कैश ऑन कैश बहुत अच्छा आएगा, और मेरा कैश फ्लो भी अच्छा आएगा. और फिर मुझे डिस्काउंट अगर मिल जाए तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. ठीक है, डिस्काउंट मिल गया तो उसका फ्लिप भी अच्छा हो सकता है, और कैश ऑन कैश भी अच्छा हो सकता है. और अगर डिस्काउंट नहीं मिला, देन वी जस्ट गोना मूव ऑन. राइट, दैट्स प्रीटी मच व्हाट इट इज़. ओके, बहुत सख्त क्राइटेरिया मैंने रखा है गाइस. ठीक है, वो करके मेरे पास 18 रिजल्ट्स आ रहे हैं. जितना कम से कम जाऊँगा, मैं सारे 18 लोगों को काम कॉल करूँगा कि ये सारे काम के घर हैं. ठीक है, एक तो रेंट है, ऊपर से 100,000 से नीचे हैं, सेल्फ फाइनेंस और कैश दोनों लग जाएगी. एंड मोस्ट लाइकली विल गेट अ गुड डील. ओके, alright, cash offers. I think for leads we have to mention the word lead instead of DM. Yes, Adnan, वी कैन डू दैट. बट अभी के लिए ये सबने डीएम की रिक्वेस्ट भेजी है, तो डीएम की रिक्वेस्ट से मैं चलता हूँ. नेक्स्ट टाइम वी कैन से एनीथिंग, लीड, डीएम, व्हाटएवर, आई कैन फॉलो दैट ऑर्डर. ठीक है, आप लोगों को ऑफर ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है सेफनेस और कैश का. वॉइस सबसे आप सबको सही आ रही है सर की? आई थिंक सो. ओके, ऑलराइट. प्राइस को जगह हम करते हैं होम्स फॉर यू पे. ओके, एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, क्योंकि मैंने दोनों देखने हैं. सबसे सबसे पहला देखिए, अब क्योंकि मैंने बहुत सख्त फ़िल्टर सेट किया. मैंने रेंट, मैंने बेडरूम, मैंने प्राइस, मैंने फॉर सेल, मैंने प्रॉपर्टीज़. मैंने जितना सख्त रेंट सेट कर सकता था उतना किया, ताकि मेरे पास इतने आ जाए कि इन 18 रिजल्ट्स को मैं उठने से पहले सबको कॉल करके छोड़ूं. ताकि मुझे कल पता होगा, यार मैंने कल इस सिटी में ऑफ़र दी थी. ठीक है, इस सिटी में अब मेरा काम नहीं है. मैं डिस्कोर्ट में वापस जाऊंगा, उसके बराबर वाला सिटी उठाऊंगा और उसमें ऑफर दूंगा. डज दैट मेक सेंस? इज इट क्लियर? वेरी इजी. आपने बहुत सख्त चीज़ें सेट करी, अपने फिल्टर्स. आपको कम से कम प्रॉपर्टी मिली. एक वक्त में आपने वो बैठ के सारी प्रॉपर्टी ख़त्म कर ली, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है. अच्छा, मैं जब भी ज़िलो खोलता हूँ, मैं हमेशा इस पर क्लिक नहीं करता. ठीक है, मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करता हूँ, ताकि ऊपर जो है न्यू टैब खुल जाए. ठीक है, और फिर हम देखेंगे इस टैब को. मैं अगर इसको करूँगा तो फिर ये खुलेगा, फिर वापस बैक टू सर्च करूँ. हो सकता है मेरे फिल्टर्स ऊपर नीचे हो जाएं, वो मिट जाए, तो फिर मुझे पूरा सेट फिर करना पड़ेगा, और फिर मैं भूल जाऊँगा कि इस पर मैंने करा था ऑफर, या इस पर करा था, या इस पर करा था. इसको बेसिकली मैं लॉक कर देता हूँ, इसको कोई नहीं छेड़ना है. इसको करा मैंने, इसको खोल दिया, फिर मैं इसको करूँगा, फिर मैं इसको करूँगा, देन मूव ऑन. ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पैटर्न सेट है. पहला काम मैंने इसकी वो देखनी है, घर की कंडीशन. घर की कंडीशन 0.6 वाली है, सो दैट्स समथिंग इन माइंड. प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन 3 bedroom 2 car garage. So this is owner who listed the property. I don't know, और ये लिखा हुआ है पेंडिंग. ओके, इसका मतलब ओनर जो है ना इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है. मैंने टाइम नहीं वेस्ट करना. आई विल गो टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, दूसरी खोली मैंने, इसकी इमेजेस नहीं है. मुझे पता चल गया कि इस घर में रेंटर होगा, और प्लस मैंने रेंट भी लिखा हुआ है. पेइंग 1100, गुड. इस पर मुझे अगर डिस्काउंट मिलता है तो भी गुड है, और सेल्फ फाइनेंस पे भी गुड होगा. ठीक है. सेल्फ फाइनेंस मॉर्गेज अदर क्रेडिट ऑफर विल नॉट बी कंसिडर्ड, प्लीज डू नॉट इनकार. ओके, ये खुद बोल रहा है कि सेल्फ फाइनेंस मॉर्गेज टेक ओवर विल नॉट बी कंसिडर्ड. ऑलराइट, सो लेट्स कॉल. इस पर सिर्फ कैश ऑफर लग सकती है, तो हम बिल्कुल कैश ऑफर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स हैव अ लुक.
Verizon Wireless. The number you dialed has been changed, disconnected, or is no longer in service. If you feel you have reached the... 1 second, let me dial this again. 3248. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. Wendy Drive Buyer. Guys, Thanks. Please stay on the line. जो moderator हैं YouTube पे guys, I would appreciate if you can help some of the people here if you have time. I'm sorry, this person is not available. If you would like to leave an additional message, please reply. I hate it when someone don't pick up. I'm gonna call them again. Fuck, frick it. Whatever they, what they're gonna do, right? They're gonna yell at me. That's okay. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. Wendy Drive Buyers. Thanks. Please stay on the line. I'm sorry, this person is not available. If you would like to leave an additional message, please reply after the tone. Hey Tony, hope you're doing well. This is Syed. I was just calling because one of my deal fell through on the other property in close to Wendy Drive. So I have a pre-approval. My pre-approval is around $50,000 on the property, which is very close as a comparable. So I'm just giving a call to see if it's acceptable or if it's worth presenting. I'll shoot you a quick message as well. We'll go from there. Talk soon. Bye for now. Okay. All I did is basically call and send them a random number of pre-approval. ठीक है, उसको बता दिया कि मेरे बराबर में एक घर में जो ख़रीदना था वो डील फॉल थ्रू हो गई। मेरे पास प्री अप्रूवल है 50,000 का, क्या ये ओके है या नहीं? And then we will follow. For now I'm just gonna save his number, his property, or Wendy Drive. Hey Tony, hope you're doing well. Just shoot you a quick voice note on the property located at Wendy Drive. Okay, so there we go. Let's see who's the first one on the DM list. Abdullah, I'll send you this deal, okay? But please guys, make sure do not waste your time or my time. आपको follow up करना इस पे लाजमी है, and everything in that terms, okay? ऐसा ना हो कि मैं आपको लीज दे रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि यार नहीं मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करता, तो फिर किसी और का बेसिकली हक मार है। अच्छा अब्दुल्ला, आपने करना ये है कि इस प्रॉपर्टी पे ईमेल करनी है, उसको बोलना है कि मैंने कॉल, आप बस बोल दें मैंने कॉल करी थी, डजेंट मैटर, या वी कॉल्ड यू, आपने बोलना हमारे वी कॉल्ड यू, मैं एक्विजिशन मैनेजर हूँ जो भी है, और इसकी ईमेल निकाल के टोनी को आपने ईमेल स्टार्ट करनी है। 50,000 की मैंने इसको ऑफ़र करी है, 50,000, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है आपने देने 50,000 है, आपने इनिशियल ऑफर 50,000 करनी है, ऑफर कैश, ठीक है। फिर हम वहाँ से ऊपर आएंगे और उसको 94 से हम नीचे लेके जाएंगे। ओके, सो दैट वाज 94 HVAC, दिस वन।
Alright, so this is I'm pretty sure ये रेंट है, तो मुझे इतना इशू नहीं है घर के हालात देखने का क्योंकि ऑलरेडी someone paying. Let's see, estate settlement. Here is must sell. Here is must sell. Um, ठीक है. अच्छा, ये वो घर है जो हम 3 दिन से इसकी बात 2 दिन से हमने बात करी. क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको प्रोबेट बोला जाता है और उसको सेल करने का. तो ये वही घर है कि इसका इंतकाल हो गया जिस भी ओनर का था और उसके हीयर्स मस्ट सेल. ऐसा हीयर्स को बोलते हैं उनके बेटे या फिर सिबलिंग्स या नेक्स्ट टू द पर्सन हु इज़ गोना टेक दिस प्रॉपर्टी. ठीक है. So this would be a good property to call. I don't know if it's rented or not though. That's the issue. Affordable payment and lose it. Okay. Five one seven 4 6 5. The number you are trying to call is busy. Please try again later. Oh, you're paying 2 3 4 5 1 7. The number you are trying to call is busy. Please try again later. Okay, I'm gonna call this later. Then I'm gonna move this property in the corner here. Let's move to the next one. 3 by 2 house, great rental investor, tenant in place, expires, yada yada, no owner financing. Okay. 419. 419 days. Wow, 400, more than 1 year, guys. I do not know what's going on with this. Shashi Realty. Hi, I'm looking to speak to Paul Shashi. He's not available. Could I help you? Yeah, I was Take looking a at message? no, I'm just looking at the Harrison Road property. Just want to have a quick chat and discuss about it. Okay. Are you looking to buy or Yeah. buy? Oh, okay. We represent the seller. Yeah. You will need to get your real estate agent Okay. they'll be able to answer questions and, have access to the MLS. If you don't have anybody here in Montgomery, I can give you someone's name. I thought we don't need to have an agent to. Oh, yes, you will. The real estate agent is going to have to be the one to submit the offer to us. So we usually have attorney write up everything for us, and we Okay, just. that's fine, but you're going to need a real estate agent to answer your questions, get information, get inside, etc. We represent the seller. I understand that completely, but usually I never had to hire an agent if I don't need to. So I was just wondering Okay, if well, I. you don't have to hire one. I am just saying that you're wanting to get information about the property. Yeah, from a listing agent. Yes. No, sir. No, sir. We represent the seller. You will need to get your realtor to give you the information. So if you represent the property, you'd be the listing agent, correct? The listing broker. We are the listing agent. We represent the seller. You're the buyer. So you will need to get information about it from your realtor. We don't talk with the buyers. We don't discuss things with the buyers. But I'm Represent the coming as an seller. attorney, right? So if I'm coming with a lawyer, I wouldn't need an agent Well, to that's represent. fine, but how are you going to get the information? 'Cause it's not That's going how to we be do that. from That's us. why we call and talk to the listing agent and Okay, figure out but the offer. I'm glad that works for you sometimes. However, here, we do not have you talk to the listing agent. We represent the
seller. So who would Therefore, call who? you are the buyer. You will have to get the information about the property from a realtor Right. or your attorney. If your attorney can get the information, that's fine too, but it won't be from us. So who? So if my buyer's agent will contact the listing agent, correct? Which is you guys. Whatever, no, they have access to the MLS. So you're saying the listed agent don't talk to anyone. The buyer agent has to go to MLS and get the things from there. There's no That is talking. correct. Okay. That's correct. The buyer needs to go get their agent or their realtor, whomever, can go into the MLS and get the information, set up the viewing. We don't handle any of that. Okay. So, and if attorney would not, I don't think attorney would have access to MLS. So in that case, how would we go about it? Well, then you would need to get a realtor to access it. That's what I started out But saying. according to that the if state law, you don't need an agent, right? So that means you would have to pass Okay, on then the you go situation. knock on the door. If you want to represent yourself, you're welcome to go over to the house and knock on the door and explain who you are. I and can't see- because you're legally in the contract with the seller, right? So I Okay. cannot knock on the We door. represent, sir, I'm just explaining to you how we do it here. We represent the the seller. So you as the buyer need to have your agent give you the information, pull up the MLS, whatever. But I You just don't have to mentioned I use don't that have an agent. Okay, you don't have to use that agent to submit the offer if your attorney agrees to do it. Yeah, but then But how do I get the information on the house if I I don't can have give the you agent? I can give you a real estate agent's number, or you can look up one for yourself, or have one that you deal with, whatever your preference is. But you just said I don't need an agent, correct? But then you No, asked you. that's not what I said. That is not what I said. I said if your attorney agrees to do the submission of the offer, that's fine. But you will not speak to the listing agent. We represent the seller. That's all I can explain to you. So you'll need to get your own. Are you an agent as well? Like I'm just in general, just wondering. I'm not the agent. That makes We sense. represent Yeah, that makes sense. the Because the agent will not you- say that because it would be against the law Okay. for you No, to it's not not present. against the law for us to say we represent only the seller. It's not against the law for us to say that. No, it's against the law that if you're saying that I have to go get an agent and only then you will provide me the information. No, That- no. I That's literally not what have the I call said. recording. You know I what, can show sir? you that. I'm going to discontinue this conversation. I because appreciate you are that because taking I would my love words that to out of discontinue. context. You take Oh my goodness, man. These stupid people. She has no idea who paid for her. She has no idea what's going on. She has no idea. Seller. So funny how she was saying that. Let's see if I can get this number. Yeah, I don't really have Paul Shady number. What is it, Paul Shady? Okay, let's give it a quick call to Paul. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. Harrison Road buyer. Thanks, Harrison. Please stay on the line. Chassis Realty.
Um, again, Shashi Realty is probably the worst company I've ever came across. देखिए अब आप लोगों ने बात सुनी ना, मसला ये है कि उसको जो सामने फ़ोन पे बैठी हुई है ना, वो एजेंट है, वो सिर्फ एक एसोसिएट है, राइट? उसको आई डोंट नो $15 पर आवर पे उसको बिठाया हुआ है, और शी जस्ट रिसेप्शनिस्ट, उसको उतनी एजुकेशन नहीं है, राइट, कि किस तरह प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, बाई किया जाता है। और इसी वजह से ये प्रॉपर्टी बेचारा सेलर इतने टाइम से 419 दिन से बैठा हुआ है, क्योंकि जब कॉल आती है शैशी रियल्टी को, वो बोलते हैं कि हम नहीं बात करते आपसे, आप जाके एजेंट लेके आएँ और फिर बात करेंगे। दिस इज़ प्रॉब्ली स्टूपिड, बट ऑल्सो ये है कि um, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ अगर आप इसमें थोड़ा सा घुसें तो मोस्ट लाइकली यू कैन डू इट, बिकॉज अगर आपको मसला कर रही है तो वो सबको मसला कर रही है, राइट? सो लेट मी एक्चुअली हैव अ लुक बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस। People search Fast and Furious. एक इसमें लेट्स हैव अ लुक कि ये प्रॉपर्टी पे नाम आता है नहीं आता। I don't know the address. Oh, that boiled my blood for a second. It was so hard to keep my calm. Okay, looks like Keika Williams Savannah H6173. Yeah, there's few numbers. I don't know. It's gonna be a lot of work. I'm gonna pass it. We don't have time, right? अगर नहीं सेल करते तो बेटर है, जितना टाइम बैठना है उनको। Let's move to the next one. This is the house. Looks good. 29 days. Tony. Wait, इसका Tony है, उसका भी Tony था। Let's call Tony again. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. Midway Street buyer. Thanks. Please stay on the line. I'm sorry, this person is not available. If you would like to leave an additional message, please reply after the tone. Hey Tony, I saw one more of your property. Again, I'm expecting. I have a pre-approval for this. I'm looking to invest money as soon as possible. Please give me a call back. I'd love to have a chat on both of your properties that's listed on Zillow. Talk soon. Bye for now. आयशा जी, आयशा अगर और रिमशा, रिमशा, इफ़ यू हैव जॉइन द कम्युनिटी, आपके पास ऑटोमेटिकली वॉप अकाउंट पे मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक वीडियो है, आपने वीडियो को फॉलो करना है और डिस्कॉर्ड में आप शामिल हो सकते हैं। अगेन, आपके पास मैसेज आया, उसको वीडियो, उसकी वीडियो देखें, ओके? ये सब ऑटोमेटिक होता है, हम हाथ से पकड़ के किसी को डिस्कॉर्ड में नहीं डालते हैं। इट्स ऑल ऑटोमेटिक, ओके? ओके, लेट्स कॉल दिस वन। 200 days on market. Wow, ये क्यों सेल नहीं हो रहा है यार? That's weird. Let's call. 334 730. Thank you for calling Camelot Properties. Visit us on the web at www.camelotproperties.com.
CamelotPropertiesOnline.com. For rental properties, press 1. For real estate sales, press 2. To use the dial by name directory, press 9. For the receptionist, press 0. To repeat this menu, please stay on the line while your call is transferred to the operator. Hello? Thank you for calling Camelot. This is Glenn. How can I help you? Hi, I'm looking to speak to the listing agent of Delano Avenue. I believe it's Kelly E. Okay. Well, I'm not able to transfer you to that person, but I can provide your name and your phone number, and I'll send you to her. Sure. May I have your name, please? Just out of curiosity, I recall one of the other company in the city. Seems like agents are not talking to the investors. You have to have a buyer's agent to have a chat with you. Is that correct? No. Well, once I provide the number to or the details to Kelly, she's Yeah. actually calling all. Okay. Yeah. Yeah, I just had a conversation with one other company. I think not too far from you guys, but she was like, "No, you have to go to get an agent. An agent needs to contact my listing agent, and only that way you'd be able to get some information on the property." And that was kind of odd. Maybe I'm missing some law that came out yesterday that I'm not aware of. So. Not really. Not quite sure about it as well. But anyway, or I can provide you Kelly's number if you'd like. Yeah, if that's okay, I'll just give a quick call and ask about the property, and we'll be done. Yep. Let me know when you're ready. I'm ready. 334 Yeah. 354 Mm-hmm. 6932. Sounds good. I'll give her a call. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay, let's give a call, Kelly. I don't know why people are so scared to give numbers. They are agents. I can literally Google her number. 6932. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. 334354932. Not available. The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. You gotta be kidding me. These agents, man, pissing me off. Somebody needs to pick up the damn phone and talk to me. Okay, let's call decision. Hopefully this would be good. Hi, this is Syed. Yeah, I had a missed call from this number. Is it Kelly? It is. Hey Kelly, this is Syed. I was just looking to talk to you about your Delano Avenue property. Yes. Yeah, so do you have a couple minutes or did I catch you at a bad time? No, you can go ahead. Yeah, so I was actually going to buy one of the other property on like the couple street north, but contract fell through. I found issues with that property that wasn't we were willing to take on. So I do have a pre-approval of similar structure, similar square footage of 52,000. So I just wanted to give you a call and see if there's a way that we can present this, or is it not really presentable at this point? Sorry, you are cutting out. Can you repeat?
going on? Oh. Hello. Hi, sorry, Kelly. I think we got disconnected. Okay, so what kind of a loan are you pre-approved It's just a for? private money loan. It's like a investment loan. Okay, I don't know that it'll go. It might be a cash only thing because it does not have a working unit. He's willing to replace it with an acceptable offer, but you Okay. did say you're approved for what, 52? Yeah, but it's more like likely gonna be it's a flip loan, so it doesn't really matter essentially if it has a work or not. I mean, if it has work, it's just better in a sense because that's the loan it's for. All the DSCR loans or investment loans, they've required a heat source It's that it's I've worked it's a with. private money, so we're not going to DSCR. I agree that it will need some of the work. From the pictures of it, I see that roof is new and things are a bit better, but for our rental portfolio, we do bring it a little bit more better to increase the rent. So it's more like a flip loan, so we'll get it increased and get it up to the market um, value. Okay, gotcha. Yeah. Okay, yeah. Have you already ran the for the rent? The rent so far I'm guessing it's 950. But if we fix few things and bring it up to the market, I'm guessing we will be able to get 1100 to 12. Correct? That sounds about right. Yeah. Yeah, okay. So good deal. So what information did you need from me? Yeah. I just wanted to see if we can sort of present the offer and see if Mr. is willing to Yeah, entertain it, and then I'll yeah, submit the paperwork absolutely. and we can go from there. Yeah, that'll work. Yeah, if you want to just text me the entire offer at this number, I'm driving right now. Okay. But if you want to text it over to me, I'll be more than happy to submit it to the seller, write it up, and present it. Sure. Is it okay if I send you an email? I'm just on the road. I have my accusation manager that works with me on in the properties in the city, and I'll have Uh-huh. him write up a proper offer and send you the initial numbers that we found, and then we can go from there. How's that sound? It's a little more Yeah, that's professional, I fine. guess, in a sense. I can send it over. Okay. All right. Do you have my email address or do you need it? Yes, I would require the email address. If you can shoot me a text, or that'd be great. Yeah. Yep, Perfect. I will do that. Awesome. Thank you. I'll have my agent work on it, and we'll get the paperwork ready in the meantime. Okay, great. Thank Awesome. you. Thank you. Bye for now. Okay. So 50,000 on this. I said 52. We'll send it around 50 to 52. But 50,000 on this would be good. AC unit वो बोल रहा है कि इसमें लगाना है, बट सेलर खुद कर सकता है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि अगर हमको 50 का मिलता है, सिर्फ एसी का काम है 10,000. 50 का हम लेते हैं, 60 का इसमें एसी लगा के फिक्स करते हैं, तो ये घर अबाउट 100,000 का है, राइट. और 95 का, क्योंकि मैं हाईएस्ट प्रॉपर्टी देख रहा हूँ लिस्टिंग पे. मैं इसको सोल पे भी चेंज कर सकता हूँ. सो या सो आप जितनी भी सोल्ड प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे 100,000 की, ठीक है. तो अगर ये प्रॉपर्टी मैं 50 की लेके आता हूँ, जो मैंने खो दी है प्रॉपर्टी, तो आई थिंक देयर इज़ अ वर्क, राइट. सो $10,000 का वर्क हो सकता है इसमें, और वी कैन गो फ्रॉम देयर. सो एनीवेज, whoever I'm giving this property to, अब देखें ये जो प्रॉपर्टी है ना, इट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. इसने कोई मेंशन नहीं किया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट गोइंग थ्रू. सो दैट मीन्स इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. सेलर ऑलरेडी थोड़ा सा मुश्किल में है. वी कैन गो फ्रॉम देयर. 70,000 सोल्ड. इसने 10,000 का लिया था और 70,000 में कॉन्ट्रैक्ट पे गया था. या सो दिस इज गुड. Alright, so let me send the email. Who was Fahim? I'm sending you the DM for this offer. 50K, 50
ठीक है केली की email आ जाए बस and then we should be able to do it. Okay, one second. Um, okay. All right. I sent the DM. Brian Abdul said that. Okay, let's go to the next one. This one could be good, guys. She didn't say no on 50, right? That means that's okay. क्या हमने ये next time वाली? Okay, let's go. Okay, next one. 3, 3, 4, 2. Keller Williams Montgomery, this is Tyler. How can I help you? Hey Tyler, I'm looking to speak to the listing agent for South Boulevard property. I Give believe me it's one. Hurd is the last name. Okay, Mr. Laquan. He is not in the office today, but I can give you his cell phone number. Yeah, for sure. So it's going to be 205 Yeah, 266 yeah. 2520. Okay, perfect. Thank you. How do you say his name? Laquan? Laquan? Okay, sounds good. Thank you so much. Bye for now. I think it's some sort of policy that the agent don't put their numbers here. That's why किसी भी listing में agent का अपना number नहीं है. Hello. Hi, is this Laquan? It is? Hi, I was just looking to speak to you about your South Boulevard property. Do you have a couple minutes? Yeah, what you got? Yeah, so I just we were supposed to buy one other property not too far from South Boulevard, but the contract fell through. I have a pre-approval of about 50,000, so I was just calling and see if it's worth presenting to the seller. Not for 50,000, no sir. Okay, so in terms of the listing time, is there any reason why it's been listed for a while? Maybe I'm missing something in the pictures. Nope, you're not missing nothing, it just ain't sold. Sorry, can you repeat that? I said, you're not missing anything, you just haven't sold. Oh, just We haven't sold. had it, It's just the market all pretty for the slow street. right now. Market kind of slow, so Okay. we get so many, offers that we can't entertain. So you 50,000, that ain't gonna work. Okay, and the tenant is around 950 right now. Yep, so to the end of October. Okay, and just a quick question on the roof. Do you think it's good to go, or because I see a little bit of discoloration? We haven't seen any evidence in the leak, so I think it's good to go. Okay. Ken hasn't said anything. Okay, and it looks like from inside it's nicely done. Recently rehabbed. That's correct. Yeah. That's correct. Okay. Do you think it's worth presenting, or you think it doesn't even worth presenting at this point? Where you want it? Well, I can get my lenders to check the property again, this one, but it was very close comparable to the one we just fell through. So I just thought I'll give you a call and see if it worth presenting the offer so that I don't have to run back to lender. Okay. Yeah.
So do you I think mean, maybe should we present it? I don't have an agent as well, so I don't know if you are no, we okay got to. one more piece. We're not open to anything at 55, and I'm just gonna tell you that's not worth it. Sorry, there's a lot of noise We're coming not, out, man. Sorry. yeah, let me call you back. Sure, let's In do that. about 30 minutes. Okay, let's do that. Thank you. Bye. या सो अब देखिए मुझे अभी से पता चल गया कि क्या मेरी कंपैरेबल से अगर मैं छूटते देखूं तो सब थाउजेंड पे लगी हुई हैं, ठीक है, 100,000 पे लगी हुई हैं। मुझे बस डिस्काउंट चाहिए 50,000 का। 50,000 का डिस्काउंट मैं मांग रहा हूँ हर बंदे से। 50 नहीं तो मुझे 40,000 का 50% ऑफ नहीं मिल रहा तो मुझे 40% मिल जाएगा। अगर मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आप 70% डालें, अगर आप लोग देखते तो इस पे 0.7 की ऑफ़र देते, राइट। एज अ नेगोशिएशन टेक्निक मैं उसे स्टार्ट ही 50,000 से कर रहा हूँ, राइट। तो अब वो कितना मुझे ऊपर लेके आ सकता है, दैट्स अ क्वेश्चन। और मैं कितना ऊपर जाऊँगा, दैट्स अ क्वेश्चन, राइट। तो तो ए आर वी इस प्रॉपर्टी की 100,000 है और 80,000 पे लिस्ट है और मैं उसको 50,000 पे लेके आ रहा हूँ। दैट्स अ होल डिस्कशन। सो ही इज़ गोना कॉल बैक, आई एम गोना मूव हिज इन द कॉर्नर। इसको हम एक दफ़ा फिर कॉल कर लेते हैं। इसने कॉल नहीं उठाई थी लास्ट टाइम, डेविड ने। The number you are trying to call is busy. Please try again later. ही इज़ बिजी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? किधर बिजी है भाई जान? काम शाम नहीं करना आज? ओके सो कौन सी प्रॉपर्टी हमने अभी करी है इस पे? चार्ल्स लेन। Charles Lane, I think this one, South Boulevard. House अंदर से ठीक है। Hello? Hi, is this Jason? Yes. Hey Jason, I was looking at one of your Champion Street property. Do you have a couple minutes? Yeah, I do. Yeah, so just out of like a high level information, I see that it's currently tenant occupied at 950. Yes. Okay, perfect. And the lease is ending in 2027, 26. It's February. Well, also too, can you specify which championship products? I have two listings. A 1731? Oh, sorry, can you say that again? 1731. Okay, all right. Oh, yeah, that one's still available. Yeah, and it is rented, correct? Just to make sure. Correct. What was the? I will look at your other property as well. The only reason I'm calling because we were supposed to buy the property couple streets north of Champion, exact same size, exact same comparable, and that one fell through. So I have a pre-approval, so I'm just calling to see if I can sort of acquire this property for our rental portfolio. A pre-approval was about 50,000. So I just wanted to give you a call and see if it's worth presenting at all. Yeah, my client's not gonna, to be honest, isn't gonna go that low because the other one he has on Champion Street is pending at 70, and it's an identical house. And We're like same level of finish and everything. okay, what about the age of the roof? I see might be a little bit of discoloration. I gotta check with them off the top of my head on how old the roof is. Okay, that's all right. That's one stone off the top of my head. That's all right. So okay, so you're under contract at 70 for the other property. So Yeah, you and would it's not like see. the two houses, like finish on the inside's identical, tenants are paying identical rent, everything. Okay. Okay, sure. So what I can do, maybe I run it back with my lender. Apparently, they're saying in terms of fixes that we would need.
we would need about 20 grand on this, so that's why they gave that number to us. But I can run it back for this specific property and kind of see where we go from there. Yeah, I mean that because that the 1731 champion has been, other than the living room that hasn't had the paneling painted. I mean, as you can sort of see from the photos, the owner did have it all renovated, updated and everything before the tenants did move in. Okay. What do you think would be a decent offer for this one? I will see if I can fight with the lender and bring him up a little bit. Yeah, I mean, it would have to be, very close to 70. Okay. Sure. And what's the status of the other property? Maybe if it didn't, I mean, hopefully, congratulations on the going under contract. But if it doesn't go through, maybe we can talk about both at the same time. I'll Yeah. maybe able to So- negotiate better with the lender. Yes, the 1742 is, I think it should be closing this week. Okay, so you have gone through the inspection period and everything is done. Yeah, yeah. Oh, okay, Yeah, they're, okay. yeah, the buyer on that one's cash. I mean, Right. they're buying as is. Okay. I mean, Sounds good. So let me do one thing. I'll run it back to my lender and see what we can come up with in these terms, what price and everything, and then I'll shoot you an email if that's okay. I'll have my acquisition manager who do most of our acquisitions in Montgomery, and then I'll have him reach out to you with the final numbers, and we can go from there. okay, yeah, and if it was amazing too, if it's, if the holdup's the lender, at least once 1742 closes, then you're going to have, Yeah, a the near comparable. identical comp. Yeah, that's why I actually wrote down the number too. That I'm gonna send them this property, and you said it's gonna close in next week. I think it's, well, probably this week, but next week at the absolute latest. Okay, sounds good. But we'll send it for now, and then if anything changes in terms of the closing, we'll run the numbers again and we'll come back to them. They're pretty good friends of mine, so they run a number pretty frequently for us. Okay, and also, if you want to take a look at 205 2nd Street, it's about a mile away from those properties. That one is rented for $1,000, and that one, the seller might have a little bit more flexibility on the price than what it's listed at. 205 second. Yeah. Yeah, it's about a mile north of Okay. those Champion Street houses. Give me one quick second. Let me just put the numbers in. Right, it's a little bit of different structure from the top, Yeah. but hopefully it shouldn't be a problem. Yeah, and I know, and then, because around that 2nd Street house, I had a listing that was another investment property one street over Okay. that was a 3-2, and that one sold at 85. Okay. Okay, well, we can send an offer on this one for sure. I feel like its inside is good. It's currently rented. That's all we need in terms of cash flow. And yeah, we have the pre-approval, so we can just send it and see what the seller thinks on that. Okay. Okay, sounds good. So I'll send the paperwork shortly with an email. If it's okay, would you be able to text me your email? I just have your Yeah, I phone can number do that. listed. Yeah, I'll text my email. All right, that'd be great. Thanks, Okay. Jason. Bye. All right, thanks. Bye. So this is what happened, guys. अगर आप एजेंट से अच्छी बात करें, तमीज़ से बात करें, वो आपको उठा के एक नहीं चल रही तो आपको दूसरी दे देगा. So I will save his number with this one. उसने email भी भेज दिया. Very good. 205 second. Okay, let's see who's the next person so I can send him a text. So, first let me find out who's the next DM. I think it's Heather. Heather, you talked about the update, but you didn't say DM, but I'll give it to you just in case.
So send an offer on this one, Heather, and the offer is 50K pre-approval, $50,000 pre-approval, and we have to send offer on this one as well. Okay, guys, look how much discount you can get. ठीक है, मैं सिर्फ बात साफ सुथरी प्रॉपर्टी जिसको मैं बोलता हूँ आप 0.7 से मल्टीप्लाई करें, मैं 0.6 या 0.55 से मल्टीप्लाई करके उसको ऑफर दे रहा हूँ, और वो बोल रहा है हाँ ये नहीं चलेगी, ये वाली प्रॉपर्टी पे चल जाएगी, राइट? सो दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस डिस्काउंट लेना है, और डिस्काउंट मिलने में आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है? अभी तो मैं सेलर फाइनेंस पे पहुंचा ही नहीं, अभी जब डिस्काउंट वो कैंसिल करेगा, बोलेगा नहीं चाहिए इतना डिस्काउंट, फिर जाके हम उसको सेलर फाइनेंस की ऑफ़र देंगे, अभी तो सारी कैश चल रही है, ठीक है? और उसी पे वो 50,000 पे हाँ बोल रहा है। अब मैं 77 तक आ गया हूँ, तो मैं काफ़ी नीचे जाऊँगा, मैं बात करूँगा 45 या 40,000 की। Okay, 1 second. What's that? Okay, so let's call this guy JC. Hello, and thank you for calling 334 Property Management. If you would like... This one is under contract, so I'll move on. No need to waste time on this. I didn't see that, but now I do. Okay, South Sudan property, 32 days, very good, churned. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. 4th Street buyer. Thanks. Please stay on the line. Hey Juman, this is Syed. I was looking at one of your listing at 4th Street. Do you have a couple of minutes to chat about it? Hold on a second. Sure. What was that? I was looking at one of your property at East 4th Street. Okay. Just wanted to have a quick chat on this. The only question I had, I guess, was the roof. Looks a little bit of a discoloration on it, so I was wondering how much life left on that. Hold on 1 second. I couldn't hear you. No, I'm just asking the roof. Looks like there's a discoloration on it, so I was just wondering how much life you think it might have might left. You said you was wanting a combination of it? Roof. I was looking at the roof of the property. Oh, the roof. Yeah. Oh, and you said how much life it has on it? Yeah, because I looks like it might need a replacement soon. Yeah, it probably will need one soon. Okay. But I mean, you probably get like maybe about 3 to 4 years out of it. Okay.
Now, the reason I was calling is because I was supposed to close on a property on Second Street, but didn't really happen. But I have a pre-approval of 40,000 on that property. It's the same structure, 3-1, about 980 square footage. So I'm just giving a call. That is it worth presenting the offer? You think, or not really? For 40, Yeah. nah, we can't do 40 on that one. Okay. However, I mean, let me ask you a question. For sure. What specifically are you? What specifically are you looking for? So- and what I mean is, like, how many properties are you looking to acquire in that Montgomery area? What is your budget? So the budget is unlimited, right? Like as long as the number makes sense, we have the team on ground. The lenders are already good to go. We just need to find the property that's sort of rent ready with the minimum repairs. This one looks like we might need to go in and do some roof, just to, be secure a long term. And you say you're doing rental, right? Correct. So it's gonna be for rental portfolio, but this one may be Okay, a bit of what a kind of- flip. Okay, so and I'm not trying to like over talk you or anything, but I'm trying to get an understanding so that we can kind of work together. Maybe we could collaborate on coming to an agreement or something. 100%. What type of rentals are y'all looking to do? Traditional renting or like more government assisted renting, like Section 8? Well, I think Section 8 renter, we weren't approved for a market rent. So we are looking into a market rent right now because Section 8 rents that we were approved for, it was about $50 to $80 lower than what market was getting the rents. That's why we're kind of focusing on market rents right now. Market rent. Yeah. Okay. So the history of this The- one, I was looking at. Sorry, I didn't mean to talk you over, but $1,000, right? You're getting on this, or we're getting on this? Who? You getting it what again? $1,000 on this for the rent. Or what address were you looking at? 4th Street. So it's 2429. Oh, no, yeah, we were getting a thousand on that, but Yeah. yeah, that one's not gonna go. Tell you what, Yeah. yes, we were 1,000 in rent possibly on that one. Mhm. And then we have another one on 2412. Oh, you know what? I thought you were talking about the other actual house. That roof is in great condition. It's not like it doesn't have any issues with it at all. Now, For there is a- 2429. Yeah, 2429. Yeah, there's nothing wrong with that roof. No active leaks or anything. Okay. Well, it just looks like it might need replacing. Maybe it's just dust on it. I don't know. Pardon? Have you went and viewed it? No, I haven't viewed it. I'm just looking at the property. I checked the Google Earth and stuff like that. So that's Yeah, how I was. That's not really accurate way to like view the actual roof, though. I'll be honest with you because I do this every day, so Right. No, I understand for sure. I can give you real depiction. For sure. But I do encourage if you are wanting to look at it, it makes more sense. It will make more sense long term under your final decision to actually view the property. You know what I mean? Well, the problem is we're out of state investors. I guess that you probably saw my numbers from Texas, so I probably wouldn't fly in. I'll have my contractor walk the property. Yeah, I'll work with out-of-state investors. Like, pretty much all my clients are out-of-state investors. Okay. And this is the reason why I'm recommending that to you. I would love to see you be successful in your journey. As I understand, you just had a closing that didn't go through. Right. What's the reason behind that? There was issues with the house that more than what we anticipated. So there was a leak in the roof and things like that. That's why I'm kind of, thinking of the roof first. Got you. Which absolutely makes sense. These properties have been rented out before, prior to going to the market, of course. That one does have HVAC system on it. Currently, to my understanding, there's no roof leaks at all. Okay. However, we do have people that do roofs for, not a tremendous lot of money. Mm-hmm.
and that is something that we could, kind of align for you if necessary if you want to put a new roof on there as well. But here's my offer though. If you have unlimited funds, do you guys have a certain amount of homes that y'all want to purchase? 'Cause it sounds like it's more than just you, right? Yeah, it's a couple of more people, but I do the acquiring for the most part. Awesome. So you are the guy I need to be talking to. That's So correct, I yes. currently have 4 other homes in the market right now Okay. that would be of interest to you. Sure, I'd love to have a let- look. Can we write some addresses down real quick? You have a pen? Yes, I'm actually at the computer right now. I got that one that you just mentioned, 2412. Yeah, so 2412. And keep in mind, these homes have already kind of been touched, renovated, stuff like that, for the most Okay. part, to get them to a livable standard because we do Section 8 rentals. Okay, very nice. You know what I mean? So they're really already kind of up to code as they would need to be. Okay. Sometimes that code does change, so there may be some other requirements as of today's date, but for the most part, you would have like new flooring, painting, some fixtures and stuff like that already present in these homes. So 2412 East 4th 1, completely repainted, new flooring. Hold on a second. Yeah, it looks like a brand new house here. 24. There is a door placing. I guess the washroom might need some work, but other than that, it's pretty good. Sorry, I'm back here. So, new flooring, recently repainted and stuff like that. It's a 3-bedroom, 1 bath, which is the same as 2429, which is a 3-bedroom, 1 bath as well. But there is a closed-in back area that's kind of like unfinished. That could be a 4th room on the one that's on 2429. We just Okay. have to have it fit drywall or the ceiling and stuff like that have to be finished. Then we also have 3729 Princeton Road. Okay. And then I also have 3808 Dilworth Road, or street, I think it's road though. And that one's ready for $4,000 right now. So what I'm offering to you is we could do, and this is what my guys prefer to do, because I'm about to remarket these things as properly, because I didn't put them as exclusively as a bundle, but I'm about to do that today. Okay. So they are by the same but- owner? Yeah, these are all the same owners. Oh, I see. Okay. So, yeah, so it'll work out best in your favor. If you have unlimited funds and you're looking for multiple properties, here's a portfolio, basically, Right. And what's the rental Down on your situation? Sorry, go ahead. Most of them are vacant. Most of them vacant. Yeah, most of them are vacant. Okay. Yeah, I mean, They're vacant because they're not vacant because of any issues. They're vacant because the partners, they're separating. mhm. So no one would put any more money into it or put a tenant into them and claim extra, fees or anything like that. They just put everything on pause until they're splitting ways. Right. So, from my understanding, I'll have a chat with the lender, but like the 2029, 2412, and 3808, they're all 3-1. They're the same square footages and almost the same layouts. So I think the appraiser might come in around the same price, similar. About $40,000? No, the appraiser's not going to come in at $40,000. No, not 40,000. I'm just saying like we can, if I get an approval on this one on a bit a higher amount, it might work for all of them, other than 3729. So this one is 3.2 and 2,000 square footage. So that would be a little bit different, but I will check with the lender and see what we can come up with in terms of the offer, and maybe it'd be better if Well, we. I want to give you what's doable. Sure, That way you can do your comparison notes, okay? let's do that. Yeah, because I don't want you to come back and like super low, try and lowball this thing. Because like again, these houses, I'm trying to give you more information so that there's less finagling back and forth. Correct. Okay. Right? So again,
from the top, we got 24, 29, which was repainted. New carpet and stuff like that was put in it when we first did it, of course. It's in good condition. It has HVAC units on it. 2412, which is central air heat. 2412 doesn't have central air heat. It has more window units on it, but it's been repainted fully throughout. New laminate flooring and all in it as well. Big size kitchen as well. You have 3729, 3-bedroom, 2-bath. It has new flooring throughout the rooms. Has a new vanity in one of the main restrooms in the hallway, as well as new windows. Okay. Then you have 3808, which has a tenant in there currently. That tenant is supposed to be paying $1,000 a month. However, from the looks of, because I went over there yesterday, the tenant and her kids, they kind of just live messy. House is a good house, but they live very messy. I see. So we're probably going to get her out of that house. Okay. Is that the Section 8 tenant or regular? Well, that one has new, has been again fully painted, new flooring. I want to say for the most part that one has kitchen appliances in it as well. And it did have, at the present time, it had a new HVAC put into it. I'm not sure the condition at this moment because of that tenant, though. I see. So I'll have to check on that. But we're looking at, you can write these down for deal work, the 3-1. That particular area, it is this area, it's 80K. For Princeton, we're looking at 100. Okay. For 2429, I can go as low as 55 on that one. Okay. And then on 2412, we could do that one at 45. So you should have, what did I say, 45, 55, 100, and then 80. Okay. Okay. So that's a total of like 280. I mean, that's generally like the cost of one house that you're getting the portfolio. You know what I mean? Right. Yeah, definitely. And just out of curiosity, are they? So you mentioned they're not rented because of anything else, but the issues with the investors. Now, are you guys? That's primarily why they're not rented out. That is literally the only reason. Right. And let's just say, I mean, I don't have a management company out there, so I was wondering if you guys would be able to rent it out before closing, during the closing process. Probably not during the closing process. Okay. Because I used to manage these properties about 2 years ago, but then I decided to step away from managing properties. Okay. So now I strictly, work with investors as far as acquiring properties, because these are properties that I help them acquire. So they're just looking to sell them. You know what I mean? I see. However, if it's tenants you need, I could possibly line up tenants that could be of interest for these properties for you, but I don't hold hands when it comes to the management portion, though. Okay, so like we'll be on our own after that. Is that what you're saying? I get, like, after you buy these properties, I'm willing to, because I like to build a relationship with investors. Right. Like, if you're planning on buying any more properties, I can help you with that. Mm-hmm. Right? So for me to extend my hand to market these for rental properties for you and procure some tenants, I wouldn't mind doing that at all. Okay. Appreciate It's it. just that when it comes to the day-to-day managing, month-to-month managing, I don't want to do that anymore. I don't want to be responsible for that part anymore. And mainly because, like, most companies pay out charge 10%, which is like a standard. But, like, when I tell you it's just really not worth it for real for what I'm doing, because, again, I work, well, you don't know this, but
just so you know, I work in Georgia and Alabama. So I have Georgia properties and I have Alabama properties. Okay. And I have investment properties. I actually have off-market investment properties in Montgomery and Georgia. You know what I mean? So it's like Right. I have a lot of properties Very that nice. I'm selling. You know what I mean? So it's like Mm-hmm. I need to have that time for this stuff because Right. 10% on a rental fee doesn't do anything for me. You know what I mean? It Makes just sense. really doesn't. Makes sense. Totally. Yeah, I mean, we can definitely look into that. I mean, maybe if you know any management companies in the area that are good, if you can refer that to us, that would help as well, for sure. I can completely set you up with someone that Yeah. can manage these properties for you. Okay. And I wouldn't even mind training them on how to do it. It's just that I don't want to do Fair enough. it. You know what I mean? I personally don't want to do it, but I do have someone that can do it for you, though. Mm-hmm. Perfect. Yeah. So let me talk to my lender and see, and a couple of my partners too as well. But I feel like they will be for the most part good to go because we were approved for it for slightly closer to um, the similar square footages of all these houses. So let me run some numbers with them again. I have my acquisition manager actually, so I'll have him work on this portfolio, get the numbers ready, get it approved, and come back to you with a solid number. Okay. Yeah. Work on it, man. See what you could do. And hold on one second, because I do got one more thing I want to check really quick while I have you. For sure. Hey. Hey. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. What is your name again? Syed. You said Syed? Yes. Syed. Syed. Yeah. And You your got it. contact number you have for yourself is this number? That's correct. That would work perfectly fine. 753777679. You Okay. got it. Yeah. Do you need any alternative information from me? And again, we're trying to sell these as a unit, like as a bundle. Right. And I think if you go online, you'll see them online. I just reduced them significantly down for you. Mm-hmm. You know, and that is just because we're just trying to move fast on these things. For sure. You see, you can go on there and look at the prices, of course, and just let me know what your thoughts are, okay? For sure. Yeah. I mean, I don't want to promise anything. I just still have to get through the lender and everything in terms of paperwork. But I'm definitely interested in this. This is exactly what we fall through in terms of contracts. It's right up our alley. I just need to go through the numbers one more time with everyone, and we should be good to go. Okay, yeah, go through the numbers, man. And if necessary, like I said, I have roofers that I use to replace. Oh, and 3808 has a new roof on it, by the way. New roof? Yeah, it has a new Okay. roof on it already. Forgot to say that part. Yeah, I see the new. But again, Okay. like I have roofers that work for like severely cut prices. Right. We're get a roof put on there for like maybe $5,000, something like that. No way, really? Yeah. I got guys who do roofs for me. They do roofs for me. So is it like quality work, or you think it's just for us to get it sold on the market? Absolutely. I know, absolutely. It's quality work. Okay, Quality work. for sure. So yeah, these guys do houses for me for like my residential sales. Okay, For like insurance and all kind of stuff too. very nice. So yeah. So sounds good. And yeah, maybe give me a couple days. I might need a little bit of work on it, and then we should be able to get back to you. Okay. Okay, well, again, I can't make it. Now you will understand. You're in a couple of days. I can't personally make any promises or guarantees. For sure, I If I understand. get another call, because like I said, I'm remarketing these things as well. If I get more calls, then I'm gonna move forward depending on what they're talking about. For sure. Yeah, I mean, the only reason I'm saying couple because there's a lender in place
I just need to confirm the number. Other than that, we most likely would go ahead with this. Just confirm the numbers Okay. and comparables. I know there's a couple closing happening in I think I can't remember. I think it's 4th Street at 85. So that would bring up the value. So that's also why we were kind of hoping that those close happen quickly, so that we can get those numbers to them as well. But I'll definitely have a chat with them as we speak, as soon as we get off the call, basically. Okay. Okay. Just let me know. Awesome. Thank you, Jamal, and we'll talk soon. All right, we'll do. All right. Bye for now. Okay, well, it's a portfolio. Who was on the lineup? I think Faizan 41921. Faizan, if you are okay to take this, or you think I should give this to a bit more experienced person, what do you think? If you're here, Faizan, I would love to know. This would be a good one, guys. Why I say good one? Because as we speak, right, 70 की लगी हुई है, 55 उसने खुद बोल दिया कि मैं ले लूँगा, ठीक है, नंबर वन। ये लगी हुई 130 की, 100 उसने वैसे ही बोल दिया, ठीक है। ये लगी हुई 80 की, इस पे वो 80 ही बोल रहा है। ये लगी हुई 60 की, उसमें इसमें $45,000 बोले, right? They're all by one person. Um, the only reason I'm asking Faizan is because Faizan was in the lineup. Or was that Faizan? That's all. Let me see who was next person. Yes, I understand you guys are in line, but this is a good portfolio, guys. 4 property, all cheap, easy to sell. काम इतना ज़्यादा नहीं है इसमें. ज़्यादा से ज़्यादा काम वॉशरूम का मुझे लग रहा था, which is $10,000 less, right? साफ सुथरी properties हैं, so this helps. This definitely helps. After Faizan, I have M. Hussain. M. Hussain and then Ayman. M. Hussain, if you want to take it, you can, or else I'll give it to Ayman. M. Hussain. Going once, going twice. Okay, you said yes. Okay. Amazon, this is going to be very, very important that we go through these deals. Okay. Do not, if you have any questions, make sure to ask in #general, ask other students. Do not lose the deal. Okay. Work as best as you can. This is probably something we can close. इससे अभी भी negotiate करना है हमने definitely, but ये है कि these deals are good. This deal is definitely good. Copy paste. I'm just sending you a screenshot in this one. There we go. So guys, think about it, right? This is how easy it is. कितना सिंपल था, कॉल करना था, बात करना था. अब यही बात आप ईमेल भी कर सकते हैं, बट ईमेल पे थोड़ा आपको टाइम लगता है, बट टेक्निकली कॉल की, बात करी, उसने एक की जगह 4 प्रॉपर्टीज़ बता दी और चारों एक ही ओनर की हैं और चारों में उसने पकड़ के डिस्काउंट भी दे दिया. अब कर लो आपको जो करना था. सिंपल. How many calls I made? Probably like 10. 10 में से मेरी 2 conversation हुई हैं. Hussein, I've sent you the 4 deals. We are good to go on that. I'll do one more
for Amen, and then I will take the DMs. Okay, just let me do one more. Um, Honestly, we did 2 hours, guys. It's already 2 hours of cold calling, and I'm so excited to get more leads. You have no idea. आप लोगों के डीएम का मैंने एक साल का एक हफ्ते का बोला था, बट 1 घंटे का बोला था. But here we are. We're getting good leads, girls, guys. वो खुद ही से ऑफर दे रहा है कि भाई ये लो, 50,000 की चीज़ को मैं आप सॉरी 80,000 की चीज़ को वो 45 में खुद ही दे रहा है, right? So this is the power of choosing different cities than Cleveland, Detroit, Cleveland, Detroit, Cleveland, Detroit. Okay. This one looks like it's under contract. Yes, it's under contract. Okay, don't waste time. Let's move on to the next one. 137 days. Definitely rented. David Herman. I think this is also David. It's Laquan. David, yeah. So David का phone busy जा रहा है. I don't know what's wrong with David. So I'll move on from this property. Guys, एक और चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है, आपने सुना होगा मेरे बोलते हुए, जब आप एक सिटी पे फोकस करते हैं ना, तो आपको इसकी ARV पता चल जाती है कि आफ्टर रिपेयर वैल्यू इज़ अबाउट 100,000. ठीक है, अगर ARV 100 है, घर देख के बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है, 10,000 20,000 11,000 का काम आ रहा है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, क्यों? क्योंकि ARV की 100,000 अगर हमें स्टार्ट पे मिलता है, हमें 100% पता है कि 10,000 में ये काम हो जाएगा और फिर हमारे पास 60,000 का बचेगा बैलेंस, तो इन्वेस्टर के लिए गुड डील होगी. ऊपर से ये रेंट भी है. ठीक है, सारे घर हमने रेंटेड उठाए. मस्ट हैव अपॉइंटमेंट एंड ऑक्यूपायर्स यारा यारा. 438 days on the market. That is bad. It's too much work. I'm gonna go on next one. ये प्रॉपर्टी उसी बंदे की है, जर्मोन की, जिससे हमने अभी बात किया. Let me skip that. ये 59,000 की है. इसको हमने लेना पड़ेगा काफ़ी लो. 32 अंदर से ठीक है, अंदर से रेनोवेटेड है. 112 days. Owner has a thoughtful made upstairs. Okay, let's talk to Jonathan, and then I'll try to take a couple DMs, and then we'll close the class. Okay. Um. Four. Hi, this is John Van Herman. Sorry I missed your phone call. If you could just leave me your name and number or a text message for quicker response, I'll get back to you as soon as possible. I didn't see that. This one is under contract as well. What's going on, brother? Pay attention. For sale. And आप देख रहे हैं कितने सारे 3 bedroom 2 bedroom के house under contract हैं. That tells me this market is good. घर जल्दी move हो रहा है, right? इसमें काम है definitely, but 59 का है. That's off for 30,000. Thank you for calling Partners Realty. You've reached us during our lunch hours. We are currently closed from 12 to 1 p.m. Please give us a call back after those hours, and we'll be happy to speak with you. Or if this is an emergency, please press 1. Okay. Mr. Neil, I need your number.
This is Neil Bryant with Partners Realty. I am unable to get to my phone right now. Please leave your name, number, and a brief message, and I will return your call shortly. Thank you. Sorry, mailbox is full. God. Okay, never mind, guys. Even maybe next time. Unfortunately, no one is picking up all the properties I'm getting on a contract, so I'll end it here. इसको मुझे कॉल करनी थी लखवान को, लखवान ने मुझे करनी थी कॉल. ओके, डेविड भाई साहब का नंबर एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं. इसके पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं. दैट कुड बी गुड, बट लेट्स सी. डेविड साहब शायद सो रहे हैं. This is David Herman of David Herman Realty. Please leave your name and number, and I will call. Mr. David was busy. Now it's not busy, though he's not picking up. So I guess Mr. David will have a hard time selling these properties. Okay. Okay. So let's have a look at a couple DMs, guys. Again, I will not by any means be able to go through it. Okay. Guys, देखिए DMs में रोज़ ही देख रहे हो ना. एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखें. आपको हो सकता है बुरी लगेगी बात, बट 90% DMs ठीक है ऐसे होते हैं कि सर इसको चेक कर लें, इसको चेक कर लें, इसको चेक कर लें, इस पर कितनी देनी है, ये ठीक लगाइए, ये गलत लगाइए, आगे क्या करूं. ये सारे आंसर जो हैं आपके पास वीडियोस में हैं. ठीक है, ट्रस्ट मी. अगर आप एक दिन बैठें, उठा के सारी वीडियोस देखें, अपना नोट पैड निकालें और लिखें. ठीक है, ये वो काम नहीं है गाइस कि हम इस पे नोट ना लें. जिस तरह स्कूल में आप पढ़ते हैं ना, अगर आप नोट पैड में लिख के पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. तो वैसे ही आपने करना है. ऑनेस्टली अगर मेरा नोट पैड देखिए ना, मेरी इस डायरी में राइट ऑलमोस्ट भरा पड़ा हुआ है. हर रोज़ कोई 3 या 4 पेज. राइट, अगेन मेरी अपनी भी क्लासेस हैं, फिर लिखने की चीज़ें, फिर खुद कहीं से मिल गया, किसी ने कुछ एजुकेशन दी थी, लिखते लिखते एवरीथिंग एल्स विल बी आंसर. ठीक है, मैं आपको ये बोलता नहीं हूँ क्योंकि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा आप लोगों के. आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सबके क्वेश्चन वैलिड होते हैं, बट मसला यहाँ पे आ रहा है कि टाइम वेस्ट का मसला आ रहा है. राइट, कि मैं एजुकेशन जो आपको दे रहा हूँ, एक ही चीज़ को मैं बार बार बोल रहा था और वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है. राइट, सो अगर हम लोग कल भी हमने कितने लोगों से बात करी थी जिन्होंने कोर्स नहीं देखा हुआ था. राइट, और वो गलत ऑफर भेज रहे थे. राइट, क्या कोर्स छुपा हुआ है? नहीं. हैशटैग कोर्स में जाएं, आपके पास सामने. बट हम लोग खुद नहीं पढ़ रहे, खुद ऑफर नहीं कर रहे. राइट, आप मुझ पे डिपेंड हो रहे हैं. मैं हाँ बोलूँगा तब आप जाके इसको ऑफर देंगे, मैं ना बोलूँगा तो आप नहीं देंगे. और आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है. आपने कोर्स फॉलो करना है. कोर्स फॉलो करके अगर आपने हाँ बोल दिया है तो ग्रेट, अगर आपने ना बोल दिया तो भी ग्रेट. दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. बिल्कुल इसको फिगर आउट करें. वेंडी 2716. Guys, give me 1 second. I'm getting a call. Hello, this is Sid. Hi, this is Tony Alvarez returning your call. Hi, I think it was Wendy Drive property. Correct? Yeah. Yeah. So basically, I was actually calling you because I have a property that we want to contract on the 4th or 2nd Street, somewhere close, and exactly similar structure, 1300, and we were approved for about 60,000. So that contract didn't go through. So I was thinking, do you think it worth presenting to the seller? For 50,000, no. No? Okay. Is there anything that I might not be aware of the property in terms of the roof and stuff? Roof looks like it's brand new. Yeah, the roof is new. They get a lot of work done on the property. We have a tenant that is in the property that's paying the rent every month. So Okay. it's a great income property. You said Section 8? Rental? No, this one is not Section 8. Oh, okay. So there's This the one is a market. regular tenant. Right. So the Section 8 would be around, what, 1300? The one, no, the Section 8, that was a mistake they made. Actually, Section 8 is 975 that we're paying. That would be on Midway Street. Wait, on 4-1 they will pay 975? This is Wendy Drive property, right? This is 4-bedroom, 1 bath? Vandy Drive, yeah. Let me see. Vandy Drive is not Section 8. Okay.
So So the they mark, need to change that. I see where the confusion is. right? The Bendy Drive is not seasonal. Okay. So it's 1100 per month you're getting. Um, Mm-hmm. yeah. So it's not gonna work, you think? And the condition from inside is decent. The tenant has kept it well, you think? Yeah, it is. I inspect the property myself, and the house is in well conditions inside. It's Okay. very clean and very organized. Okay. So you think it's not they're not gonna budge on this offer at all? Not at all. No. Okay. What do you think would be the sort of the best offer we could do here? Something close to the asking price. Okay. So yeah, that I don't know if they will. Okay. So let me run the numbers with the lenders again. One more thing I wanted to ask in terms of the sell, like how soon they're looking to sell, because we have to acquire property basically within this month. That's as soon as you guys can close. Okay, sure. Sure. Let me run the numbers. I'll hopefully get. I have my acquisition manager in Alabama that acquires for us, so I will have him reach out and send the paperwork and get it ready as soon as we can, and hopefully by tomorrow we'll have a Okay. number for you guys to present. Sounds like a plan. Awesome. Thank you, Tony. We'll talk soon. Thank you. Take care. You too. Bye bye. Okay, who was the property? I gave it to them. I'm pretty sure I gave it to this one to someone. Wendy Drive. Who got Wendy Drive, guys? Please check your DMs. Wendy Drive. Did nobody go Wendy Drive? Abdullah got Wendy Drive. Okay, give me 1 second. Send him offer of 62K. Okay, Wendy Drive is done. Let's go back. Guys, okay, so let me go back to my speech, okay? Again, do not get offended, ठीक है? आपने गुस्सा नहीं करना, इसको गलत नहीं समझना, मैं आप लोगों की बेहतर के लिए बता रहा हूँ. अगर आप मेरा वेट करते हैं, मुझे डीएम करते हैं, बोलते हैं कि यार मैं इनका डीएम का रिस्पॉन्स आएगा तब जाके करूँगा, तो आप जाहिर सी बात है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगेन मेक श्योर कि आप अगर कोर्सेज देख लें स्टार्ट से फिनिश, wallahi there is nothing left, ठीक है? everything that I'm telling you, everything जो मैं रोज़ बताता हूँ कोर्सेस में मौजूद हैं. 2 वीडियोस जो जो मैंने YouTube पे अपलोड की थी, मैंने कोर्सेस में नहीं डाली थी, मैं वो एंड कर दूंगा एंड देन शुड बी फाइन. और गाइज अगर आप डिस्कॉर्ड में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी YouTube वाली वीडियो से छुट्टी है. YouTube वाली वीडियोस भी वेरी 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 इंफॉर्मेटिव. एवरीथिंग जो मैं यहाँ बता रहा हूँ मैं वो वहाँ पे रख रहा हूँ. एक एक चीज़ पे बहुत डीपली मैंने बात किया हुआ है, ठीक है? तो हो सकता है आपने कुछ सुन लिया होगा, कुछ नहीं सुना होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप YouTube की वीडियोस लाजमी देखें. दिस आई मीन इट्स फ्री. इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके लिए ज़रूरत की नहीं है, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, तो प्लीज मेक श्योर टू हैव लुक एट इट. I'll check couple DMs, okay? 2 DM जो सबसे पहले हैं, I'll have a look. I think it was Abdullah and there was one more person, ठीक है? बाकी बेसिक जो DM है मैं वो आपको YouTube पे आंसर कर देता हूँ. That's not a problem. Abdullah and Fahim, I think they are 2 people. I'll check both of you guys properties. Where's Abdullah? Right here. Looks like Abdullah may not be in class. Yeah, okay. I'll go with Fahim yours first. Okay. 20 what's the date? 21. Asking price. ओके आपके 4 पार्टियों ने यहाँ पे खोली हैं. पहली का था 94 की है,
We did not send any further replies under. We will absolutely take 60-65 today. We will absolutely take 50-60-65 today. Name Tina. Wait, what's going on here? Fahim, can you hear me? Mr. Fahim, are you here? Maybe not. इसमें मैं पूछना चाह रहा था, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें 94 की है और आपने वो एजेंट बोल रही है आपको 60 से 65 में ले लूँगी, करेक्ट? ये 100,000 की लगी हुई है, मैं 95 की. हेलो हेलो. जी आवाज़ आ रही है सर भाई? जी आपकी आ रही है बस. जी तो 60 में वो बोल रही है कि ले लेगी, करेक्ट? 60 65. जी 60 जी 60-65 ले लेंगे, लेकिन अभी हमने उसको ऑफर नहीं की थी, उसने खुद ही कहा इतने का ना. मैंने कहा कितना तक कर सकती हैं, तो उसने कहा इतने तक. ओके वेरी गुड. अब इसमें लिखा हुआ है कि पॉसिबल लैंड कॉन्ट्रैक्ट. लैंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सेलर फाइनेंस, ठीक है. इसको आप ऐसा करें. इसमें टेनेंट जी इसमें टेनेंट्स थे, लेकिन वो अभी छोड़ कर जा रहे हैं ना. वो कहती है मुकम्मल रेनोवेशन इसकी होनी है अभी. होनी है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होना है. जी रेनोवेशन मुकम्मल हो गई. हाँ तो फिर आई थिंक इसकी वर्थ ही 60-65 ही करती होगी. आप कंपेरेबल्स देख लें इसके, बट आपको काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा अगर ये फुल रेनोवेशन है. फुल रेनोवेशन का मतलब है $50,000-60,000. जी तो लेट्स से अगर हम इसको, चले हमने मान लिया इतनी ही वैल्यू है सही प्रॉपर्टी की. ये तो ख़राब प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू बता रही है, बट सही प्रॉपर्टी की अगर 100,000 है, हम इसमें 60 में लेते हैं तो 50-60,000 से तो हम ओवर आस्किंग पे चले जाएंगे, राइट? सो दैट्स प्रॉब्ली नॉट गोना बी पॉसिबल. तो आपको काफ़ी डिस्काउंट लेना पड़ेगा और कंपेरेबल्स रन करने पड़ेंगे. उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने के सेल हुए घर आसपास. अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसने ये बिल्डिंग की क्यों पिक्चर लगाई हुई है. दैट जस्ट वियर्ड. टी शर्ट दिखाना चाह रही कि हम लोग सिटी के बहुत क्लोज हैं, whatever. जी ठीक है. ऑलराइट, आपकी दूसरी वाली प्रॉपर्टी थी ये 5.09 की. We also got, guys, we'll also start calling on the bigger properties as well, inshallah. But let's focus on smaller for now. Thank you for generous offer. However, it will not work because the seller has an existing mortgage of 3 million to pay off. Would like to walk away with some money after the sale. You may apply for the market if you wish and put down information too. Okay, तो वो बोल रहा है कि $3 million जो है वो है प्रॉपर्टी, ठीक है. $3 million की एक्विटी है इसको मॉर्गेजेस पे. तो आपने उससे ये पूछना है कि व्हाट इफ़ आई ब्रिंग इनफ डाउन पेमेंट टू कवर द मॉर्गेज. एंड चलिए मैं आपको बोल देता हूँ. What if I bring the enough down payment to cover the mortgage so that Mr. Seller don't have to worry about that part, and we do a creative structure where I pay monthly payment on the rest of the equity. ठीक है सर. ठीक है, इसको आप लिखवा लें बेहतर, बट दिस इज वुड बी द आंसर.
अगर वो हाँ बोलती है तो फिर इस पर नंबर रन करेंगे सेकंड पोजीशन के, ठीक है? ठीक। Okay, so next is this one. We did not give any offer yet. Her reply is under. Okay, great. Can I contact you at your office or cell? Call me at this mark. इसको कुछ भी नहीं दिया, बस मार्क ने बोले कि कॉल करो, करेक्ट? जी सर। ये ज़्यादा दिन से मार्केट नहीं है, so that's one. इसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं पता मुझे, इसकी फाइनेंशियल्स नहीं पता. आई कैन क्विकली कॉल हिम. इससे बात करने के लिए कुछ है नहीं, बट उसको सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे वो चाहिए, इंफॉर्मेशन. ओके। Telephone number 516239888. Can't take your call now. At the tone, please record your message. When you've finished recording, simply hang up or press pound for further options. Hey Mark, this is Sayed. I was looking at one of your property at Dizamore Avenue. I believe you've been speaking to Fahim Khan. He's my acquisition manager on this property. We were just running some numbers, so I thought I'll give you a quick call and chat further. I will have him follow up on this from now on. Talk soon. Bye for now. Okay, आपने इसको बस follow up करना है and then we should be good to go. मैं उसका एड्रेस लिख लेता हूँ. Okay, that's good. Alright, 4.5. Okay. Okay, net open की दी हुई, that's good. We sent the initial email to his reply. My acquisition manager that's been in contact with you is Fahim Khan. I can send it over and call me discuss first. Thank you. I'll quickly call Eric. Okay, I'm gonna call Eric quickly as well, just to make sure. Hello. Hello? Is it Yes, Eric? hi. Yes. Hey Eric, this is Syed. I was looking at one of your property at is that Chauncey Street, Brooklyn? How are you, sir? Doing well. I believe you've been speaking to Fahim Khan. He's my acquisition manager on this property. Oh, yes. Yeah, so I just thought I'll give you a call myself to have a quick chat. Is it a good time? Okay, sure. Yeah, of course. For sure. So, yeah, you mentioned we wanted to know a little bit about it.
I have the OM on this property, so have most of the information. Just wanted to ask the financials that we have, is this current, like in 2025? We're in 2026. Yes, I mean like last year, um, basically, right? Like from July-ish or Absolutely. Yeah, okay, absolutely. yeah, From this okay, year, yeah, sounds good. absolutely. And is it like it's been a market for some time? I'm just wondering, has it been gone any under contract? Is there any reason why it's been on market for a little bit longer? We need a certain price, Okay, and we're patient to wait for it. We're not in any fair enough. specific rush. Fair enough. But the deal is deliverable. We know we just need to get to close to or at ask. We need to get offers that are in that range. And from the pictures of it, I'm guessing it's fairly renovated, all units. Yep, it's a 16. new building. It's a brand new building. Okay, very nice. Yeah. And is it a possibility to do something creative on it, or they're looking for straight cash or conventional sale? I'm sorry. So you're looking for? Is there any possibility of creative? Like, it doesn't have to be seller finance. If we were to bring in, let's say, a larger down payment and carry the rest. I'm happy to discuss it with them. I think not, but Okay. The yeah, the only reason I was wondering is because I believe it might have a mortgage on it. Is that correct? it does have a mortgage. That is correct. Yeah. Yeah, so we would need to I bring don't think it it's enough. suitable. I don't think it is suitable, but I can discuss it. If you want to provide me with an offer subject to X, Y, and Z, and how you Okay. structure it, I'll have a Sure. conversation with them and we'll get you some feedback. Sure. And the reason I ask because in this offer, like the way we structure it, we have to bring in enough down payment to cover the first position mortgage. Now, so but there is a limitation to it as well because we need to have seller to have at least 40% equity in the deal. Do you know if that is the case? You want the seller to have 40% equity in the deal? Yeah. I'm just wondering if that is true or not for this property. In this particular property, does he have 40% equity? That's correct. Yeah, that's the ask. I don't believe he does. No, I think he's more levered than 40%. No Okay. question. Okay. So that's Yeah. I'm guessing it's probably like maybe 5-6% since it's brand new. What's 5-6%? Like his equity in this deal. His equity is more than 5 or 6%, but it's less than 40%. Okay. No. Okay, fair enough. I don't know what his exact loan amount is. I think it's about 3.7 or 3.8 million. Okay. I think Okay. it's around that range, yeah. Sure. If that's helpful. Yeah, so we probably have to we can't do this creative then. We can't probably bring it enough equity enough money to bring it to pay off the mortgage first position. But I will look into this in terms of the conventional offer and kind of run numbers on it. With conventional, we do have to do a bit of a price cut in terms of the asking price, but I'll run the numbers and I'll kind of get back to you. I understand that Mr. Seller is pretty firm on the pricing. Okay. Okay, Sounds like a good deal. so thank you, Eric. We'll talk soon. Do you mind if you just send me an email right now? So Sure. I have your email. Yes, I can definitely do Do that. you have my email there? Your name was Syed, right? That's correct. You are Okay, talking so to Syed Fahim, Safari, but I will send you mine as well. Right. Okay. Okay, It was Fahim. correct. Fahim Khan. Right. Okay. Okay. No problem. Thank you. Numbers. Thank you. Talk soon. Take care. Thank you. Bye. One second. What was- Hey, Tia. Hey John, how you doing? Good, good. Okay, I just spoke to the owner. Mm-hmm. Here's what you wanted. He gets 6%
15-year amortization. You can pay them all after 10 years. So what you making in here, like a $220 extension for the payment, he said it's not making any sense. Extension for the payment. What do you So you mean? do the Sir? calculation. I'll give you that. Yes, give me the 6 number. years, 6%, right? That's why he paid right now for the whatever the carry over mortgage that he has, 6%. Okay. He has 6% right now. 15-year amortization. You can pay them all at 10 years, or 10-year or 15-year, he's saying. he give you 15 years, but you can pay them all after 10 or whatever you want to do. It's up to you. Okay. But minimum have to give him at least 15-year amortization. And That's what he carry right now. does he tell you anything about monthly payment? How much he wants? Well, how about the payment is that you can do the calculation 6% for 15 years, Yeah. whatever the loan amount is. Yeah, but that's the thing. We are going to refinance at the end of the 10 years, right? So amortization. You refinance after 10 years, yes. Yes. So for us, amortization doesn't matter because we are going to amortize at the end of the year. The amortization number, if he wants like an exact payment that is going to be at amortization. Exact payment you're gonna. Do you want me to do the calculation for you? How much is the exact payment? It depends on how much the payment that you're carrying. What is the mortgage amount that you're carrying in? No. If you're gonna carry the mortgage amount by 15 amortization, 6%, it's a simple calculation. No, it's not. You don't understand what I'm trying to say. What I'm trying to say is the amortization is not the issue. The issue here is the monthly payment. I want a lower monthly payment so we can cash flow. That's the whole idea. I can pay the money, the whole money. You have to lower the monthly payment, but how are you gonna pay him the mortgage? Now, Well, you gotta pay him those people too. You know what I'm No, saying? no, for sure. So If we you're gonna will pay him pay the wanna lower mortgage you for wanna sure. So right now, okay, you're okay with 6%, 15-year amortization. Look. You just want to lower the monthly payment. That's what you're saying. Right. So we will pay Mr. Seller's But not like bank $200. mortgage. Not like $200 a month. Doesn't not make any sense to anybody. Well, that's what I'm trying to say. So there's two options, right? So one option is we pay him his monthly payment, whatever he's paying to the bank, we will pay him. We will cover that, so he don't have to pay. And on top of that, we'll have a little bit money left over to give it to him for his pocket. Okay, that's one option. Not like the way that you put it in like $200 a month. That's like not even making sense to him at all. But How I'm you gonna paying. take I'm what paying. What are you gonna do with? I mean, let me finish. What is he gonna do with the $200 payment? What are you gonna do with $200? $200 you can't buy shit with this day. You go to shopping at a grocery store. Everything costs so expensive. What are you gonna give it $200 for? No. You know what I'm saying? You know what I'm saying? So there's two things, right? So if I pay him more, he would have to pay the mortgage from that. It's at the end of the day, it's the same thing, right? I am covering the mortgage. I don't know what that is, right? But I'm saying I could cover that, and whatever the leftover, I can say, oh, I'll pay this amount, but then he's gonna pay the mortgage. At the end of the day, he's gonna leftover with the same money, right? So this is the one option that we will pay the mortgage and the leftover we'll give it to the seller. Number one. Number two, we do a different deal where we bring in enough money down to cover the mortgage. We pay the mortgage over for Mr. Seller, the bank and us. The bank is out of the picture. It's only us and Mr. Seller, and we go with a seller finance deal then. Do you understand? So this is why if I pay off. I don't see what you're saying. I don't see what you're saying. You're saying you're paying him. You haven't carried him. Haven't paid him more every month. Whatever he paid right now, you haven't paid him. And like just say example, like he owned about $800,000, so we haven't paid $800 with a 6%, whatever, like $4,000, whatever. Okay. Mm-hmm. And then you have like $1 million on his part of it, 6%. How are you gonna pay him? So out of the 4,000, let's just say 4,000. From the 4,000, you wanna stress it out, like you pay him like maybe I don't know $300-400 a month. That could be the length of the time you put it a little bit longer. Then that's what I'm saying. That's what you're trying to say, right? You're mixing two correctly, different. yeah. These are two different structures, right? So one, we don't pay the mortgage. We just cover the mortgage monthly payment and give money to Mr. Seller. So that's one deal. The other deal. Why don't you just like literally just instead of going finance from him,
Why don't you just go and talk to the bank and pay him? You don't have to pay him anything. I agree, but that would be a big price cut for Mr. Seller, right? The reason the property has been on market for that long, there's a reason, right? Yeah, but he never had anybody give him an owner finance, to be honest with you. We never had an owner finance that he went to. Well, it's the owner finance. If he's going to do the let me see it. I'm going to calculate this right. Well, you know what? Put everything in an email. Let me see if I understand what you're trying to say. But not like Sure. he said if you're gonna pay him every month like $200 to stress it out. He said he don't even I want will that. I will write down in the word form, okay? I will write down in the word form, not in the numbers, so he understands a little bit better, and hopefully then we can have a different discussion, right? So maybe the numbers are confusing. I just wrote down quick ones and sent it to you. It might be confusing, so I agree. So I'll write it in the writing instead of numbers, explain everything, what it means, the deal structure and everything, and then send it to you, okay? Does that work? Okay. Yeah. Okay. But don't pay he said, don't give him like a $200 payment after whatever the loan. He said, what am I gonna do with $200? He said, his first impression is that, what are you gonna do with $200 if you pay a minimum for 10 years? So every year you're paying like what, $2,400? Right. But again, it's missing the mortgage payment, right? So if I put the mortgage payment in there, it's going to be a lot more dollars, and it's going to make more sense. So just play on the words, literally. Like if you say that, oh, we are paying that much money and you have to pay the mortgage, while we will pay the mortgage, and whatever's left over, we'll give it to you. So that's the idea. I see what you mean. You mean. I put everything in writing, and then we go from there, you know? Okay, sure. We'll do that. Okay, buddy. Thanks, John. Bye. Guys, this is a long day. Okay, I think I was just finishing up Fahim. Fahim, you're good to go, right? I sent him the things, I sent him the email, and he should be able to respond to you on this Brooklyn Street, okay? The other thing, guys, New York, the state of New York is very hard. This gentleman that I was talking to, John, he's also from New York. He's also from Brooklyn. It's just very hard to schedule these deals. Owner doesn't understand it. We have to go back and forth. Very, very hard. Okay. So if you are going for bigger properties, I would recommend going to the cities that's already in Discord and go to the set the filter high to low on the Zillow, and then offer the properties. Okay. Or just get this city here and just paste it and go from there. ये क्रैक्सी पर नहीं करें ऐसे भाई नहीं क्रैक्सी की बात करो आप बस वो सिटी ले लें सिटी लेके क्रैक्सी पे यहाँ पे पेस्ट कर दें राइट let me see I think Montgomery में अच्छी प्राइसिंग है let's take Montgomery and put it in क्रैक्सी ठीक है तो अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं Montgomery में बड़ी वाली वो आपको बता देगा ये 2 million की 5 million की 6 million की no issues here as well. ठीक है? Anything else? से भी वो है नीचे जरा देखिए अभी अभी जो आपने भेजी है वो वाली जी 9466 वो कॉल का बोल रहे आपने रॉबर्ट की ईमेल निकाल ली मेरे ख्याल से आप रॉबर्ट की ईमेल कर दें रॉबर्ट लिस्टिंग पेजर नहीं है रॉबर्ट की है और हमने इससे बात भी कर ली है इसने ऑफर भी दे दिया इसने कहा बात कर लें हाँ रॉबर्ट ही है फ़हीम आई एम टैप्ड आउट फॉर नाउ मैं बिल्कुल कल कर लेंगे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है अपडेट कर कल कर लेता हूँ इसने एक्सेप्ट करी है वैसे 66 या बस उसने कॉल का बोला है बस उसने कॉल का बोला है हमने जब ऑफर भेजा उसके बाद उसने कॉल का बोला ओके चलो ठीक है चलो कल करते हैं नेगोशिएट करनी पड़ेगी ओके थैंक यू yeah no worries alright guys I will get off on the Discord ठीक है अगेन अगर आप सिर्फ एक दिन लगा लें कोई भी एक दिन ले लें बैठकर सिर्फ सारे कोर्सेज देख लें आई कैन गारंटी यू गाइस
आपको कुछ और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं ऐड करता जाऊँगा यूट्यूब पे, आप लोग देखते जाएँ, कोर्सेज में ऐड करता जाऊँगा, देखते जाएँ, बट नथिंग एल्स यू नीड। Okay, so hopefully guys, every month that I gave you the deals today, please make sure you follow up, ठीक है। Please make sure you follow up and do not let it go. Okay, all right guys, I'm gonna go on the YouTube for a couple minutes, have a quick chat with the people there and on Instagram as well, and then we'll go from there. Thank you so much for everyone who is helping out in the Discord, in the YouTube as a moderator. Harry helped, I think Saad also helped. I appreciate it guys. I'll see you guys tomorrow. Good luck with everything. Keep calling or keep sending emails. Bye for now. Okay, for people who are on YouTube or Instagram, I am going to start answering your questions, guys. Give me 2 seconds. मैं बस खोल लूँ चीज़ें यहाँ पे, and then I'll help you out. Where's YouTube Studio? Walaikum assalam. Walaikum assalam. गाइज मेक श्योर, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा ना, आई डोंट नो इसको कैसे मैं बताऊं, बट ज़िलो पर ये नंबर क्या है, राइट। इस तरह सेलर की गर्दन है, इस तरह सेलर की गर्दन है और उस पर रोप है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। डेज ऑन द मार्केट ज़िलो पे आपको बहुत चीज़ें बताता है। डेज ऑन द मार्केट देखते ही आप ये पता चल जाएगा, एक्सक्यूज मी, डेज ऑन द मार्केट आपको देखते ही ये पता चल जाएगा कि सेलर कितनी जल्दी में है, कितना सेल करना चाह रहा है, क्या मुसीबतें हैं सेलर के साथ, एवरीथिंग इन जनरल, ठीक है, एवरीथिंग इन जनरल। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। मैं अगर इसको कोर्स में डाल के पैसे चार्ज कर पाता तो बिल्कुल मैं करता, बट मेरा इरादा नहीं है। मैं थोड़ा लंबा गेम खेल रहा हूँ, मुझे $5-10 लेके खुशी नहीं होगी, बट we'll get to it later. Anyways, okay, let's have a question. Look at the questions, guys. Muhammad Zuhaib Atari. I'm looking at your question, bro. मैंने वीडियो देख ली और डिस्कॉर्ड भी समझ आ गया। अब एक बात बताओ, मैंने 6 मंथ वाला पैकेज लिया, मैंने 6 मंथ वर्किंग की, बट आई नीड मोर सब्सक्रिप्शन एवरी मंथ। आई एम नॉट श्योर शोहेब अतारी आप क्या पूछ रहे हैं, बट शोहेब अगर आपने 6 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लिए ना, तो आपको 6 महीने तक कुछ नहीं पे करना। आपको और क्यों पे करना पड़ेगा जब आप 6 महीने का ले चुके हैं, राइट। इट डजंट मेक सेंस। आई हैव, मैंने 10 पे किया था, यस शोहेब अतारी। अगर आपने मंथली लिए 10 की, देन इट्स गोना बी मंथली। मुझे ज़िलों पर वर्क करना है, मैंने आज ही इंस्टा पे आपकी वीडियो देखी है, प्लीज़ मुझे भी सिखा दें वर्क। मोहम्मद जान, अगर आपको वर्क सीखना है बहुत इजी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, मेरे लिंक इन बायो में जाएं, उसमें 2 वीडियो अटैच हैं। पूरी वीडियो अगर आप देख लें वो, तो आपको समझ आ जाएगी। बल्कि मैं आपको एक एहतियातन, आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप ले सकते हैं तो, इन 5 सेकेंड्स, ओके, गेट रेडी। स्क्रीनशॉट के लिए रेडी कर लें, ये वीडियो देखनी है, ठीक है। ये वीडियो जिस पे नंबर 1 लिखा हुआ है, ये वीडियो अगर आपने स्टार्ट से एंड तक देख ली, यू नो द आंसर, यू हैव नो प्रॉब्लम। कोई इसमें सीक्रेट नहीं है, कोई मैं छुपा नहीं रहा, एवरीथिंग यू विल हैव इट देयर। जहान नुमा, वालेकुम अस्सलाम। मुसा भाई मेरे डीएम प्लीज़ चेक करें, फास्ट फैक्ट्स। यस आई विल चेक योर डीएम फास्ट फैक्ट्स। आपका नाम ख्वाजा हसन है। फॉर हुफैज़ा बनूरी, यार आप जो है ना, आपका एड्रेस मुझे दिख गया है, बट मैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। आप ये एड्रेस है मुझे यूट्यूब पे भेज दें, वहाँ पे आसान है, और वहाँ पे ज्वाइनिंग के मैसेज नहीं आते हैं। जैसे कोई भी बंदा ज्वाइन करता है तो आपका मैसेज छत पे चढ़ जाता है, मुझे नहीं मिलता फिर, राइट। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पे आ जाएँ, यूट्यूब यहाँ पे खुली हुई है, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, एड्रेस आपका उज़ैफ़ा, और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है।
Okay, let's have a look. Who was the past facts? Ismail Hassan, I think. Past facts, आप हसन है, correct? I'm not sure. I think Hassan, but मतलब भाई मैंने कल वाली प्रॉपर्टी में कंपेरेबल चेक किए थे 120 से 140 इस तरह थे और वो प्रॉपर्टी रेंट पे है 1700 बता रहा है. ओके फिर आपने एड्रेस दिया है. आई विल चेक योर एड्रेस. ये वाली प्रॉपर्टी 75K में एजेंट एग्री है. 330 डिजिशन फ़ी मांग रहा है. लोकेशन भी अच्छी है और रेंट भी ज़िलो पे 1000 है. 3,000 की वो क्या चीज़ मांग रहे हैं? ड्यू डिलिजेंस फीस. व्हाट इज़ दिस फ़ी? ये एक we can give him any fees, only sellers closing cost pay करते हैं. Okay, then you send me in the one more address. I'll check. 99 और आपको मिला है घर 69 पे 70 पे. Yeah, so it might need a little bit more discount on this. घर में ठीक है but front इसका ठीक नहीं है. 79 days, yes. Past facts, आपको जो 401 वाली स्ट्रीट 401 ईस्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको कम से कम भी आपको लाना पड़ेगा एट ए स्टेज ऑफ 60,000 से 64 के दरमियान. ठीक है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में काम है, दैट्स वाई. होपफुली आप लिसन कर रहे हैं. आप यहाँ पर हैं. Said please don't forget to send the things to Brian. He said you did not send anything. I told you we did not send anything, Heather. I told you that we got it. ठीक है, हमें कल मिला है सारा काम बैंक से, तो उसको नंबर रन करके आज हमें सेंड करना है. हमने उसको सेंड नहीं किया. Mr. Bro, I'm just filling the form to join your team. I have 1.6 years experience in USA medical and know also about GHL and automation and web funnels. Jahan Numa, yes, आप सबमिट कर दें, हमारी टीम उसको चेक कर लेगी. नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्वीन से हाय क्वीन. Uzaifa Banuri, sir. Uzaifa, I think you are from here, right? Uzaifa, अगर आप from Instagram से आए हैं तो आपने पेस्ट करना है अपनी चीज़ें. ओके, प्लीज़ पेस्ट करें अपना एड्रेस. आई विल चेक योर एड्रेस. ओके, ओके, लेट्स सी. मेरा DM, thanks bro. No wait, Mohammed Jan. DM please aid by Mushtaba. Mushtaba, I'll check your DMs. Where's Mushtaba? Right here. ओके, पहली ईमेल है आपकी स्पेंसर. मैं लास्ट की स्क्रॉल करता हूँ. Got it, that's helpful, thank you. I'll review everything with the team and get back. Describe is the best email to send it to. Yes, आपकी ईमेल है. स्पेंसर को आपने ईमेल करनी है. मुश्तबा, you're good to go. आपका सिटी ठीक है, टाउन ठीक है, लोकेशन ठीक है. तो आपका जो पहला 1400 वाला घर है, 1400 प्राइस का, 1400 नाम में आ रहा है, वो घर ठीक है. आपने बस ऑफ़र करनी है जो ऑफ़र आपको ठीक समझ आ रही है. ठीक है,
दूसरा वाला घर जो आपका 6940 वाला है 43rd, वो थोड़ा इशू है, ठीक है। गाइस जिस भी एड्रेस पे आपको कोई एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस पे लिखा हुआ है 123 मेन स्ट्रीट #15, ठीक है। 123 मेन स्ट्रीट ये पूरा एड्रेस हो गया, उसके बाद लिखा हुआ है #15। इसका मतलब है कि नंबर 15, तो उसका मतलब है ये पूरी प्रॉपर्टी है, उन पूरी प्रॉपर्टी में से वो आपको सिर्फ 15 यूनिट, 15वां यूनिट आपको सेल कर रहा है, ठीक है। एक यूनिट, पूरा घर नहीं सेल कर रहा, वो एक यूनिट सेल कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्डिंग में से सिर्फ एक यूनिट पिक करके ओन कर लें और बाकी यूनिट कोई और बंदा ओन करता है, ठीक है। तो मुश्तबा आपका जो सेकंड वाला घर है ना, वो वाला है जो जिसमें लिखा हुआ है #715, ठीक है। #715, दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज वो जो यूनिट है इसका मतलब ये 75 यूनिट की बात कर रहे हैं, पूरे लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो या तो आप एजेंट से कंफर्म करें, एजेंट से उससे यादरिया यादरिया नाम है एजेंट का, यादरिया से आप कंफर्म करें कि इज़ इट 1 यूनिट और इज़ इट लाइक द होल प्रॉपर्टी। So that's the issue with the second one. The first one is good. The first one is good. Fake property says, "Bhai, can you check my DM?" Yes. Fake fact right here. इस हाउस को कॉल करने का कह रहा है। I'm not calling right now, Raheel, but I can check your property for sure. I'll call tomorrow. The property is okay condition. It needs to work definitely. बिल्कुल साफ सुथरी नहीं है। 4 bedroom, 1 bathroom, Tennessee. 38 days on the market. फैक्ट रही, आपने उसको ऑफ़र दिए, आपने उसको ऑफ़र दी किसी चीज़ की, कितने पैसों की, या बिल्कुल भी नहीं दी अभी। उसके बाद कितना वैल्यू तक ही डील कर सकते हैं। मियान समीर, आप कितने भी, डजेंट मैटर आपकी क्या वैल्यू है। देखिए पैसे जो है ना टेक्निकली अनलिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि हम मेरे अपने पैसे नहीं हैं, इट्स अ पूल ऑफ इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो पैसे डाल के प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ठीक है। तो पैसों का मसला नहीं है, मसला आता है डील का। अच्छी डील पे पैसे बंदा लोन लेके डालेगा, अपनी अम्मी से लोन लेगा, बाबा वाले से उधार लेगा, पैसे उसमें डालेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की डील अच्छी है, ठीक है। सो कितना वैल्यू तक डील कर सकते हैं हम। मियान समीर, आपने ये देखना है कि डील कैसी है। 2 डील्स स्ट्रक्चर हमारे पास हैं, एक है कैश ऑफ़र कि पूरे पैसे कैश देना, 30% ऑफ, 40% ऑफ, बट कैश ऑफ़र जो होती है 100,000 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं लोगों के पास 100,000 से कम ही पैसे हैं, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, बट वो एक प्रॉपर्टी पे नहीं लगाना चाहेंगे इतना सारा कैश, ठीक है। तो अगर कैश प्रॉपर्टी है तो 100,000 से नीचे, सेलर फाइनेंस है तो डजेंट मैटर, 5, 10, 15 मिलियन वट एवर वी कैन डू, ठीक है। और सेलर फाइनेंस में आप ऊपर ओवर आस्किंग नहीं करेंगे, सिर्फ अगर 5 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 5 मिलियन डॉलर्स की है, तो हम $500,000 डाउन पेमेंट देंगे अभी के लिए, और बाकी के जो पैसे हैं वो मंथली पेमेंट में देंगे। 84 की हो गई, 92 की है, जो भी है, 98, 96 मंथ्स, ठीक है। कहाँ पे डीएम कर रहे हैं सर। क्वीन जो डीएम आप लोग का पूछ रहे हैं ना, वो डिस्कॉर्ड में कर रहे हैं। तो अगर आप डिस्कॉर्ड में नहीं हैं तो आप यहाँ पे मुझे ईमेल अपना घर लिख दें, मैं आपको यहीं पे आंसर दे दूँगा। जो बंदे डिस्कॉर्ड में हैं वो मुझे डिस्कॉर्ड में डीएम कर रहे हैं, जो डिस्कॉर्ड में नहीं है वो यूट्यूब लाइव पे कमेंट्स जिस तरह करते हैं ना नॉर्मल, प्रॉपर्टी एड्रेस कमेंट करें, उसके साथ जो आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हुई है वहाँ पे, तो उस तरह मैं देख रहा हूँ। एजेंट वांट्स टू कॉल फेक प्रॉपर्टीज, या
Um, let's see. Okay, I will call agent for now, just to make sure that we talk to this agent. Thank you for calling Century 21 Platinum Properties, located on Wilma Rudolph Boulevard in Clarksville, Tennessee. We're so happy to serve you. We're so happy to serve you. Such a white girl accent. Oh, come on, Ed. Hello, Hello, is it Melody? this is. How can I help you? Hi, I was just looking at one of your property at Sycamore Street. Do you Yes, have a couple sir. minutes? I do. Perfect. You actually talking to Fake Raheel through the email. So I just Yes. yeah. So I just thought I'll give you a quick call to kind of have I mean not have to go through back and forth on the email. Sure. Yeah, so I actually we sent this I mean we were under contract with the property not too far from your street, but it fell through. It's kind of the similar structure, similar bed and bath. So I know that we have a pre-approval of about $60,000. So I just wanted to kind of ask, is it worth even presenting, or you think I have to figure it out some other way for the cash offer? Oh, you are asking about offering 60,000? That's correct, because we have a pre-approval. We got a property under contract at the Simone Street. I think it's probably north of you, but not too far. Similar structure of a house, but the contract fell through. The house has a few issues that we weren't told or we didn't know about. So I just want to entertain that offer on the other property so that we can just acquire the property for our portfolio. Yeah, I can present them an offer, but I don't think they'll come down from 99 to 60. Okay. Is there any You reason, can't. like in terms of the property, that it might need work, the roof need works, or anything like that? Just so it's not any issue, then we go under contract. There's some things that need work, but nothing like major. They've had the roof replaced in the last 5 years, Okay. so it already has a good roof. Some of the flooring needs to be replaced or updated. The plumbing is fine. There's no plumbing issues. A lot of it's cosmetic, and some Okay. of the wood on the back on the outside patio needs to be replaced because the water has gotten to it. Right. But And from your opinion, what do you think the ARV would look like on this property? that's a good question. I had looked at houses in that area when I first listed it. Let me see here. I think that I found a lot of kind of new constructions going up, so it was That's hard correct, to find yeah. a good comparable. Let me look here. I think I can pull up what I previously looked at. Okay. Looks like there's some newer constructions going for sale, different square footage, because that one's very special because It's a bigger, yeah. antique home, but I see a couple that have gone for sale that
that sold this year that were like $239. There's one that was $239 up the road. I think it's one of the new constructions because they did just build some, so that would be a brand new one. The one on, let's see, that's the one that we have for sale right now. Just trying to look here. And some, once you work into it, how much you could resell it for. Yeah, it's I mean, if you do like a minimum rehab, yeah, the minimum would at least be like the inside of it, and then but it has a quite a bit of square footage, so basically everything will be that much more, right, in terms of More, coverage. yeah, correct, because of square footage. But of course, it's a much bigger square footage house, so it would sell for 100%. more as well. 100%, yeah. Yeah, and I'm looking, you know, I see a bunch of different kinds of prices, but in the newer construction ones, those are going for $229, $230. So obviously it would be lower, cheaper to sell than a new construction, but that kind of gives you an idea of what the new constructions are going for that are just right around the corner. Okay, yeah. There is one that we looked at was recently that was sold. It was I think 8.5. Kind of odd, but it's on the Mount Moria Road. That one went for pretty cheap, but I just wasn't sure if it's correct or not. Maybe because I'm only looking at Zillow. I don't have MLS access. So based on the Zillow, it was just 65,000. House is in a decent condition. Looks like the everything was renovated, but it still went for 65,000. I see it. Hold on. Now Moriah Street. I'm there right now. Okay, let's see what this one is. You remember what the street number was? Yeah, on it's Mount a Moriah Street? 312. 312. See if I can find 312. Okay. Oh, there it is, 312. Okay. Okay, yeah, that one was, it sold for 65, but that was in 2024. So, of course, Right. it was a different market. We try not to look too many years back since it changes year to year. Yeah, that one did sell for that amount, you know. Yeah. On the other hand, there is the 3.2 that was sold for 60, 98. It's also 2024, but it's just kind of odd how the comparables are jumping up and down quite a bit. The 3.2 sold for 98, 8.5 sold for 65 the same year. Mhm. It's just interesting overall. Yeah. And let me see here. Let me see if I can see what this one looks like. Because of course I don't know what condition it was in. No. Mariah Street. And okay, nothing's coming up for that. Let's see. No, Mariah Street, Whiteville, Tennessee. It did go for, yeah, it went for 65. It was 3 bedroom, 3 bathroom, 1,986 square feet. Which one is that? 312 Mount Moriah Street. Interesting. It It says sold for, on the Zillow, it's saying it has 8 baths apparently. yeah, I'm looking at 312 Mount Moriah Street, Whiteville.
Exactly. Yeah, I think there's a 3 bedroom, misinformation. yeah, 3 bedroom, 3 bathroom, built in 1920, 1 acre lot. So Yeah. it was similar. It looks like the roof has a lot of holes in it. So when they bought it, it needed a new roof, it looks like. But yeah, I'm looking at a 3-3. That's Hmm. how many bedrooms it's bedroom, bathroom is what it's showing me. Okay. So, but yeah, if you're interested in putting in an offer, of course, I can take them a verbal offer. If you are able to raise your limit higher than 60, I would say that would probably be looked at a little bit more favorable since our price is 99 right now. Right. Is it possible if you can just have a verbal chat with them right now? I will send in information for the with my lender. They will get back to me probably tomorrow. So it's going to take a bit of time, or tomorrow or the day after. So it's going to take a bit of time for us to get the final approval from them. Okay. But I know they will be close to that price because of the nature and how far we are from them. So things were pretty close to the current house. Okay. Okay. Well, So I'll talk to them verbally and yeah, see what they think about it. sounds good. In the meantime, we'll work on this and hopefully I'll get you something in writing via email. That's okay. Okay. Yeah, you have my email address. Yes, the acquisition person that we have on team, he's on this, so you should have it. Okay. Perfect. Great. Awesome. I'll talk soon. Thank you Thank so much you. for your time. Bye-bye. Bye. Okay, so what did I say? 50,000? मैंने 50,000 की ऑफर दी है, 60,000 की दी है. कोई पीछे जाए यार, इसको मुझे बताएं. द प्रॉब्लम देखें, ये जो आपका घर है, इट्स एन बहुत छोटे सिटी में गाइस. आई थिंक किसका घर था ये? आई थिंक फिक्र हिल आपका जो घर था, इट्स एट ए वेरी स्मॉल सिटी. इसको आप 50,000 की ऑफ़र तो कर दें, ठीक है. उसको बोलें कि इस तरह आपकी बात हुई थी, 50,000 की ऑफ़र है, यार. बट आप सिटी की जो आपने पिक किया है वो दैट्स अ स्मॉल सिटी गाइस. इट्स वेरी हार्ड टू सेल एनीथिंग, ठीक है. फोकस करें बिग सिटीज़ के आसपास का एरिया, दैट्स द बेस्ट वन, ठीक है. क्योंकि सारे लोग बिग सिटी पे जाते हैं, हम बिग सिटी पे नहीं जा रहे. हम बिग सिटी के आसपास का एरिया, जिस एरिया में जैसे आई डोंट नो कोई स्ट्रीट जैसे लाहौर है, कराची है, दिल्ली है, उसके बाद एक गांव आता है. फॉर एग्जांपल दिल्ली के बाद एक गांव आ रहा है. उस गांव को जब वो सिटी मुंबई फॉर एग्जांपल एक्सपेंड हो रहा है तो वो उसको ले लेगा, राइट. और वो उसी पार्ट बन जाएगा. तो इसी तरह इन्वेस्ट उनको ज़्यादा पसंद आता है जो सिटी से थोड़ा सा बाहर हो. दैट्स वेयर यू हैव टू डू इट. ओके. फेक प्रॉपर्टीज, बट मैंने आपको बता दिया क्या करना है. फिलहाल मैंने आपके एजेंट से बात कर ली है, यू गुड टू गो. अच्छा भाई, कल वाली प्रॉपर्टी फिर सबमिट करा दूँ. 80K में फाइनल है. फाइनल है. आपने बोला था कि कंपेरेबल रेंट चेक करना था, वो चेक कर लिया है. आपने अगर चेक कर लिया है रेंट वगैरह तो वो सब उसमें मेंशन करना प्रॉपर्टी डिटेल्स में, और उसके बाद आप उसको सबमिट करा दें. वी आर गुड टू गो ऑन दिस. उज़ैफ़ा बनूरी सर आपने लिखा है, बट आई डोंट नो आपने क्या पूछा है. Where is it? Okay, bro, I have only the funnel and web project, and my GHL subscription was ended and I lost my project. So I can only send you the funnel and web project on Google form for internship. Yes. Numa, Jahan Numa, yes, you can do that, no problem. मैंने उसको ऑफ़र नहीं करी. फिक्र रही, मुझे पता है आपने नहीं करी. मैंने उसको एहतियातन ऑफ़र कर दी, बहुत लो ऑफ़र करी है, ठीक है. 50% ऑफ पे ऑफ़र करी है. उसने बोला है हाँ मैं भी देखती हूँ करके उसने बात करी है. बट इसका मतलब है 50% नहीं तो आपको 40% ऑफ तो मिल ही जाएगा, ठीक है. से एक डील पर 15% कैश एंड कैश आ रहा है.
Heather, it's probably going to be tough, very tough. आपकी जो यंगस्टाउन की प्रॉपर्टीज़ थी उन सब पे 16 या 15% था, राइट? उस पे तो हमने बाहर के डिस्पो भी ऑफ़र करी थी, किसी भी डिस्पो ने बाहर वाले ने भी नहीं लिया था। उज़ैफ़ा बनरी सेंड कर दिया है। उज़ैफ़ा आपने नहीं सेंड किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला आपका। आपका एड्रेस नहीं मिला मुझे, आपने बस लिखा हुआ है कि आप मैंने सेंड कर दिया है। नकी से 20% ही ज़रूरी है। यस हैदर, 20% बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है रियल स्टेट में। अगर अगेन ये वही बात है कि अगर आप खुद लेते, क्या आप लेते 20% वाली पैसे? क्योंकि आपके पास पैसे लिमिटेड है ना, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, पैसे लिमिटेड है। आपने पैसे लगाने हैं, क्या आप 15% कैश ऑन कैश पे लगाओगे या 20% कैश ऑन कैश पे लगाओगे? ठीक है, तो इसी तरह सारे इन्वेस्टर देख रहे होते, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ही बंदे हैं, ऐसा नहीं है उसके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड पैसे हैं, राइट? भाई मेरा नेटवर्क नहीं ठीक से, मैं डिस्काउंट में नहीं आ सकता, मैं डिस्काउंट में नहीं आ सकता। भाई मेरा नेटवर्क, नॉट श्योर आप क्या पूछ रहे हैं। नहीं 30% है, 30%। उज़ैफ़ा अगर आपकी 30% ऑफ आपकी प्रॉपर्टी है दैट्स गुड, ठीक है। इंस्टाग्राम अगर आप मिस कर रहे हैं, मैं आपका जवाब नहीं दे पा रहा, तो प्लीज़ जंप ऑन द यूट्यूब, वहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखें और ऑफ़र लिखें। मैं आपका एड्रेस खोल रहा हूँ कंप्यूटर पे और फिर मैं उसको बता दूँगा। बस भाई 311 वाली प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहते हैं? ड्यू डिलिजेंस फीस में यूज़ साथ नेगोशिएट। आप फास्ट अगर वो ड्यू डिलिजेंस की फ़ीस बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, ठीक है? उसने कोई अपना तरफ से कोई नंबर बनाया है। ड्यू डिलिजेंस हम करते हैं, वो नहीं करते। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है घर को चेक करना, मेक श्योर कि घर में कोई इश्यूज तो नहीं है, इंस्पेक्शन करना, पेपर वर्क चेक करना, उसको ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। रेंट चेक करना, वो सारी चीज़ें। अब ये तो हम करेंगे, उसका क्या काम है ड्यू डिलिजेंस में? आई डोंट अंडरस्टैंड। वो हमारे लिए रेंट ढूंढ के लाएगा, क्या करेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। बट उसको बोलते हैं ड्यू, उसको पूछ लें कि ड्यू डिलिजेंस फॉर व्हाट, राइट? अगर ड्यू डिलिजेंस करनी होती तो हमको करनी होती, या टाइटल कंपनी करती है घर को चेक करने के लिए, एजेंट का कोई काम नहीं है। हमने डील, ओके, मैं आपका किसका, 1 सेकेंड, my God, why is it doing this? Okay, pulse, possible videos, हमने डील क्लोजिंग डेज और इंस्पेक्शन टाइम कितना कहना चाहिए? डील क्लोजिंग डेज होते हैं 30 डेज, इंस्पेक्शन टाइम होता है 7 to 10 बिजनेस डेज। अगर आप 7 बिजनेस डेज ला पाते हैं तो हमें 7 दिन मिलते हैं सेल करने के लिए। अगर आप 10 दिन बिजनेस डे ले पाते हैं तो हमें 10 दिन मिलते हैं सेलर को सेल करने के लिए। Barry, you have a question? Ask me your question, Barry. Okay, I'm answering question from the YouTube guys because YouTube में आपका कमेंट भाग नहीं जाता ऊपर, ठीक है? ये प्रॉपर्टी फुल रेनोवेटेड है, इसको कितनी ऑफर देनी चाहिए? अगर फुल रेनोवेटेड, पॉसिबल वीडियोस, फुल रेनोवेटेड प्रॉपर्टी पे आपने 30% ऑफ देनी है मिनिमम। आप स्टार्ट 40% पे करें, उससे बात कर कर करके 30% पे आके फाइन कर दें। Usman said hi, possible I will check your property but आप उसको 30% ऑफ दें and you should be fine. आपकी प्रॉपर्टी पे पॉसिबल वीडियोस, उस पर लिखा हुआ है ऊपर कंटिंजेंट, इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है, नंबर 1, और प्रॉपर्टी साफ़ सुथरी नहीं है। अगर आप वॉशरूम देखें तो वॉशरूम में दरार पड़ी हुई है और पानी का लीकेज दिख रहा है, ठीक है? सो दैट्स अ कॉस्टली रिपेयर। अगर आप घर कमरे में देखें, कमरे में इतना बड़ा बड़ा सा होल है, दैट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है? तो इस पर 0.30 नहीं चलेगी, 0.50 या 0.60 चलेगी। Who got a deal today? I'm not sure. There was 2 people who got a deal today. For Saath. Uzaifa, hi. Adnan Mahmood said, सर LOI डाउनलोड किया है पर वो डिफरेंट फाइल में कोडिंग शो कर रहा है, वर्ड फॉर्म नहीं है, उसकी कैसे ओपन करें?
अदनान, दो ऑप्शन हैं, एक तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं या आप गूगल फॉर्म, ठीक है, उसमें गूगल लिंक है, गूगल डॉक्स का लिंक, आप गूगल डॉक्स का लिंक उठाएं और उसमें यूज़ करें उसकी गूगल डॉक्स में, उसको कॉपी करना पड़ेगा। आपने मुझे एडिटिंग रिक्वेस्ट नहीं देनी, उसको कॉपी करें और करके फिर आप गूगल डॉक्स में यूज़ करें और उसको एडिटिंग करके डाउनलोड एज PDF कर लें। अदनान वर्ड ओपन करो। यस अदनान, 20% रूल हर सिटी में है। यस, 20% रूल इन्वेस्टमेंट का रूल है, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे S&P 500 10% देता है विदाउट एनी लेवरेज। कोई उससे आप लेवरेज नहीं ले सकते। रियल एस्टेट से आप लेवरेज काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। दैट्स अ डिफरेंस। बट स्टॉक मार्केट फॉर श्योर आपको 8% दे रही है, 8 से 10% दे रही है, तो प्रॉपर्टीज़ यूजली 10% मोर देते हैं, ठीक है। आप ये ख़ुद भी आजमा सकते हैं, किसी भी इन्वेस्टर से बात करें, उसको बोले मैं 10% कैश ला रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पैसे, राइट, और 15% मेरे पैसे मुझे मिलेंगे 9 या 10 साल में। 10% का मतलब है, राइट। अगर 20% का मतलब है 5 साल, फिर भी 5 साल छोटी चीज़ नहीं है। 5 ईयर्स में आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। जितने पैसे लगाएं उतने वापस 5 साल में। उसके बाद आप ज़ीरो से आएंगे, उसके बाद फिर ये घर फ्री है आपका, ठीक है, क्योंकि आपने जितने पैसे लगाए थे 5 साल में सारे वापस आ गए और आप घर भी ओन करते हैं, ठीक है। बट 5 साल में लगाना, पैसे वापस आना, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सर भाई आपने 60 के ही बोला उसको, ओके। अगर मैंने 60,000 बोला तो आप बिल्कुल 60,000 दें इसको, नो प्रॉब्लम। या तो आप 55 देते मेरे ख्याल से, ताकि नेगोशिएट करके 50-60 तक हम आ पाए। प्लीज़ टेल मी हाउ टू जॉइन द डिस्कॉर्ड TF गेमिंग। मैं लिंक दे आपको नीचे डाल देता हूँ, आप बस उसको ज्वाइन कर लें। वॉप अकाउंट है उससे। क्विक क्वेश्चन गाइस, हमने डिस्काउंट रखा था उस पे, हमने डिस्काउंट रखा था मेंबरशिप पे। अगर आप लोग वो दे पा रहे रिव्यू, ठीक है, अगर आप लोग रिव्यू दे सकते हैं वॉप पे जाके या फेसबुक पे जाके या वीडियो बना के, तो 20%, 30% और 50% का डिस्काउंट था। डज एनीवन डिड दैट? मैंने चेक नहीं किया, मैं तो भी क्लास से हटा नहीं, बट अमर ने, किसी ने करा है जो भी क्लास में है? अगर आप लोग यहाँ पर हैं, अगर करा है तो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज आई गेस आई कैन चेक द गूगल फॉर्म, बट मुझे नहीं पता है किसी ने कि वो करा ही नहीं करा, विच इज़ अ गुड थिंग गाइस। बेसिकली आइडिया ये है कि आपको रिव्यू देना है अभी तक जितना आपने पढ़ा है उस पर, और रिव्यू दे के अगर आप फेसबुक पे रिव्यू दे रहे हैं तो 10% ऑफ नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर आप वॉप अकाउंट जो कंपनी है जिस पे आप ख़रीदते हैं, जिस पे आप पूरी कम्युनिटी है उस पर देते हैं तो 20% ऑफ, और अगर आप छोटी सी वीडियो 20 सेकंड की बना के देते हैं तो 50% ऑफ, और अगर आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो 90% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन, राइट। तो इट्स अ गुड डील। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आई हाईली रिकमेंडेड। आपको सिर्फ एक, आई मीन झूठ नहीं बोलना, सच ही बोलना, बट एक उर्दू में बोलें और ChatGPT को दें, वो आपको लिख के दे देगी, सही से रिव्यू बना के दे देगी। रिव्यू इंग्लिश में उसको पेश कर दें, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल एंड यू आर डन। एनीवेज, लेट्स गो बैक टू द DMs, ठीक है। वो प्रॉपर्टी 3 बेड 1 बेड मल्टी फैमिली, ओके, लेट्स टॉक टू बैरी। मैंने एक डील डन की है 59,000 से 40,000 तक, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्या करूं? आपकी वीडियोस देखी थी, कहाँ सबमिट करना है, ठीक है। पहली बात बैरी, अगर प्रॉपर्टी 59 की है, ठीक है, और आप 40 में लेके आए, आई डोंट नो कितना डिस्काउंट बनता है, प्रॉपर्टी का अच्छा होना लाजमी है, ठीक है। आप ऐसा करें, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आप अपना, आपको एड्रेस मुझे देना पड़ेगा, एड्रेस के बगैर मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। तो बैरी, अगर आप मुझे यूट्यूब पे आके एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर लें, मैं यहाँ पे आपकी एड्रेस खोल के आपको आपका अंदाज़ा बता दूंगा कि क्या 59 वाली, लेट्स से 60,000 वाली प्रॉपर्टी आपको 20,000 सस्ते में मिली है 40,000 की, ठीक है।
तो क्या ये सही प्रॉपर्टी है, अंदर से कैसी है, अंदर से देखे बगैर हम ऑफर नहीं दे सकते, ना मैं कंफर्म कर सकता हूँ। मोबाइल पे कम कर सकते, मोबाइल पे काम कर सकते हैं मिस्टर परफेक्ट, यस यू कैन। ठीक है, से प्लीज चेक माई डीएम। ओके, वन सेकेंड ब्रदर, मैं डीएम किया था कॉल, वन सेकेंड। भाई मैंने आपको डीएम किया था कल, लेकिन वो यूनिट 25,000 डॉलर से नीचे नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, आप मुझे गाइड कर दें। उस्मान अली, मैं जो बताने जा रहा हूँ ना नेक्स्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको रिकॉर्ड कर लें। अगर आपने उसको ऑफ़र दिए और वो नहीं मान रहा, आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पकड़नी है, दैट्स इट। आपने टेंशन नहीं लेनी कि वो क्यों नहीं मांग रहा, उसको पीछे पड़े हुए। अगर वो नहीं मांग रहा ना, नहीं मान रहा आपकी प्रॉपर्टी, वो नहीं देगा आपको डिस्काउंट, एंड ऑफ द स्टोरी। आप अगर बैठे हुए सिर्फ उसी पे रुके हुए हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसको बोले दैट्स ओके, इफ़ यू नॉट गिविंग डिस्काउंट दैट्स ऑलराइट, आई एम गोना कम बैक इन अ मंथ and I'm gonna reach out to you again because your property is not gonna sell for 1 full month। ठीक है, उससे बोले कि अगर आपको मार्केट पे रहना है तो ठीक है, मैं अगले महीने आपसे आके बात करता हूँ, फिर देखते हैं कि मार्केट में आप मेरी ऑफ़र लेते हैं या नहीं। ठीक है, मैं आपके सामने आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स को 60,000 का डिस्काउंट, 50,000 का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट ईजी से मिल जाता है। बट अगर कोई नहीं दे रहा, उसकी सुई वहाँ पे अटकी हुई है, तो अटके रहने दें, वो खुद बैठा रहेगा मार्केट पे काफ़ी टाइम। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट्स इट। हमने अपना टाइम इन लोगों पे वेस्ट ही नहीं करना जो जो एक चीज़ में फंस जाते हैं आके। ठीक है, TF link opening, yes, thank you Saad for helping, appreciate it। Said please don't forget to send the details to Brian today, yes I don't send it but we will send it today for sure। वैसे मैंने डील्स में बैंक स्टेटमेंट वगैरह का क्या काम होता है। मुश्तबा सेठ, वैसे इन डील्स में बैंक स्टेटमेंट वगैरह का क्या काम होता है। वो आपसे पैसे मांगते हैं ना, आपके पास बैंक में पैसे हैं कि आप उतनी ऑफ़र दे रहे हो, अगर पैसे नहीं है तो वो बोलेंगे कि मेरा फ़ायदा ही क्या है, राइट। तो आपसे बैंक स्टेटमेंट और बैंक से वेरीफाइड कॉपी मांगते हैं, जिसे बैंक खुद साइन करके उनको भेजता है। यस हैदर, ऑल चेक इट। Christopher Kelly, Facebook, give me a good review. Ask him about the seller finance deal he has. I asked about the address, etc., but not replied. Facebook link. I'll open Facebook. I don't know if my Facebook is logged in here. EXP will be Kelly. C Kelly. Heather, you want me to call him to give me the deals? आपने किया तो है वो। Just listed, we sold 4.9 million. I think it's a brokerage. किस प्रॉपर्टी के किस सेलर फाइनेंस का बोला उसने। 1704 1704 वाली प्रॉपर्टी या फिर कौन सी प्रॉपर्टी। Bro, done. I have submitted the Google form of MUSA. John Muna, I'm not, अच्छा आपने शायद IT के बारे में बात कर रहे हैं। Yes, okay, that's good। मास्क में वीडियो बन सकती है। Naki, no, it's not possible because then what's the point, फिर लोग समझेंगे कि किसी को भी पकड़ के बना दी वीडियो। कुछ प्रॉपर्टी पे ईमेल एड्रेस नहीं होता, उनका क्या करना है। TF गेमिंग, आपको गूगल करना पड़ेगा। अगेन आपने वीडियो देखनी है, कई सारे आंसर इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, अगर आप वीडियो उठा के देख लें
आपको सब मिल जाएगा। TF गेमिंग, आपने ये वीडियो देखनी है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। जो भी आपको ईमेल की चाहिए वो इसमें मिल जाएगी। हाय मूसा, हाय थाफा, तफाजुल खान वेलकम। भाई अगर मैं स्टूडेंट लेकर आऊँ तो मेरी सब्सक्रिप्शन फ्री होगी। हसन सिद्धू, इतना नहीं सोचा यार मैंने या हम लोगों ने कि ऐसा होता है। आई थिंक देयर इज़ अ रेफरल डिस्काउंट, अगर 30% ऑफ आपको मिल जाता है आपकी सब्सक्रिप्शन पे, कि अगर आप किसी और बंदे को लेके आते हैं और वो जब तक सब्सक्राइब करता है। सैयद, इज़ 80% ऑल्सो अप्लाइड ऑन द 6 month प्लान? 80% ऑल्सो अप्लाइड ऑन a 6 month प्लान? I'm not sure what you're saying, Heather. No, what does I ask? Heather, हैदर, अगर आपने उसको एड्रेस नहीं दिया, उसने एड्रेस नहीं दिया, तो आपने प्लस एड्रेस पूछ लें ताकि अंदाज़ा हो कि हम दे क्या रहे हैं। मैं कॉल करके उसे यही पूछूंगा ना, एड्रेस दे दो, तो आप उसको फॉलो अप पे रखें, या तो मैं आपको कल कॉल कर लूँगा, ठीक है। बट इट्स मेरी कॉल की नीड नहीं है, अगर आपकी बात चल रही है, उसने सिर्फ रिप्लाई नहीं किया, वो कर देगा रिप्लाई, फॉलो अप, बट अगेन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एज वेल एट द सेम टाइम। मुझे आपका ये सवाल नहीं समझ आया, 6 month वाला। एक्सप्लेन इट लिटिल बिट, ओके। 80% और 6 month। Usman says, okay, for example, I am on 1 month plan, but I do all three. It will be 80%, then shift to 6 month. It will cost around 10 to 15. I'm not sure exactly. लेकिन सब्सक्रिप्शन जो बनी है ना, $10 पर मंथ की है, और $50 पर 6 month, ठीक है। टेक्निकली आपको 1 month फ्री मिल रहा है, जो कि 17% ऑफ है। तो अगर आप 6 month की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी बस बिल फिर 6 month के बाद ही होगी ना, उससे पहले नहीं होगी, ठीक है। और आपकी वही कंटिन्यू होगी क्योंकि आपने लिया उतने की है, राइट। $15 वाला वो हमने अभी ऐड नहीं किया, जैसे ही वो ऐड होगा ईमेल्स वगैरह उसमें ऐड होंगी, दैट्स डिफरेंट। सही, नो, ओके। मूसा भाई, आप मेरा कमेंट क्यों नहीं दिखता? उज़ैफ़ा बनूरी, उज़ैफ़ा आपका कमेंट मेरे ख्याल से कोई मसला है, आपका मुझे एक भी मैसेज नहीं आया। आपका लास्ट मैसेज मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आया था। उज़ैफ़ा बनूरी, आपका आया था नहीं 30%, ठीक है उज़ैफ़ा। आपका लास्ट मैसेज मुझे दिखाया है जो कि पास्ट फैक्ट्स के ऊपर है, उसमें लिखा हुआ है नहीं 30%। या तो आप लिंक सेंड कर रहे हैं, लिंक ना सेंड करें तो यूट्यूब आपको खुद ही मना कर रहा है, कैंसिल कर रहा है आपका कमेंट। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आप एड्रेस आपको भेजें, जैसे सब लोग भेज रहे हैं एड्रेस, बस आप वैसे ही एड्रेस भेज दें। यार आप ही ने तो AI के लिए कहा था, इसलिए पूछा था, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, आपको मिल सकता है AI एजेंट। हनान ब्रदर, ओह ओके 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 है। हनान, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं ये समझा कि आप बोल रहे हैं कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का स्टूडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। बट आप बात कर रहे थे कि AI का जो बंदा है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझा आप डिस्कॉर्ड की क्लास की बात करें, इस वजह से मैं हंस रहा था, बिकॉज उसका सोचा नहीं था। बट अगेन आप पकड़ के लाते हैं कोई AI का बंदा और हम उसको एंड अप हायरिंग करते हैं, देन यस वी कैन फिगर समथिंग आउट, वी कैन मेक समथिंग डील। आई डोंट थिंक इट विल बी फ्री, बट इट विल बी अ डिफरेंट अमाउंट। वैसे वैसे इन डील में बैंक स्टेटमेंट वगैरह का क्या काम होता है? मुश्तबा, मैंने आपको बताया था, आपका कमेंट दोबारा पढ़ रहा हूँ, बट डील का काम ये होता है कि आपको पैसे दिखाने होते हैं कि कितने पैसे हैं। वो आपसे क्यों बात करे अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, राइट। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये बात होती है बेसिकली। सर मैं आपके साथ वर्क करना है, सुबहान, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू से रहो। ज़िलों में साइन नहीं करना होगा क्या? नहीं,
तोफाज, आपका नाम है तोफाजुल ख़ान। तोफाजुल ख़ान, ज़िलों पे हमारा कोई काम नहीं है सिवाय सिर्फ एजेंट का नाम और उसकी ईमेल निकालने के अलावा। कोई काम नहीं है, ना ही आपको लॉगिन करना है, ना ही आपको ईमेल डालनी है, कुछ भी नहीं करना। गूगल करते ना जिस तरह एड्रेस, उसी तरह गूगल करना, ज़िलों का पेज आ जाएगा और ज़िलों की प्रॉपर्टी आपको सामान दिखा देगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई ईमेल की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ज़िलों में, ठीक है। इट्स एन ओपन सॉफ्टवेयर एंड फ्री, ठीक है। अगर फ्री नहीं होता देन इमेजिन हमको कितनी मसली होती। उज़ैफ़ा, आपको तो नज़र आएगा। आस्क अदर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से यूट्यूब आपको दिखा रहा है कि आपने भेज दिया, बट दूसरों को नहीं आ रहा नज़र, राइट। तो किसी गाइस, किसी और को ज़ैफ़ा का मैसेज दिख रहा है जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी एड्रेस डाला हुआ है, यस और नो? हम चेक कर लेते हैं। शुक्रिया सर, मैं यहाँ नहीं था इसलिए दोबारा पूछा। ओके, या नो वरीज। अस्सलाम वालेकुम, एक एजेंट है, उनको मैंने ईमेल भेजी थी, उन्होंने मुझे कहा प्रॉपर्टी सेल हो गई है और उन्होंने साथ में एक लिंक भेजा, ओपन करने पर एरर आ रहा है, क्या मैं पाकिस्तान में हूँ तो उसने लिंक किस चीज़ का भेजा है? उसने हो सकता है लिंक भेजा हो कोई और प्रॉपर्टी उसके पास हो जो वो आपको बोल रहा है कि आप ये देख लो, ये देख के इस पे ऑफ़र दे दो। तो हो सकता है इसने लिंक उसका भेजा हो, तो आप उसे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगर नहीं खुल रहा तो आप वीपीएन लगा लें एहतियातन, आपको फ्री वीपीएन मिल जाएंगे। वीपीएन आप फ्री में ब्राउज़र पे जस्ट गूगल करें फ्री वीपीएन, आपको मिल जाएगा। कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स का वीपी एड्रेस लें और उसमें एड्रेस नहीं मतलब उसमें सिलेक्शन करें और आपको घर मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। मैंने जैसे किया था अब क्या करूँ क्वीन, यही मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये करना है, आपने वो वीपीएन लगा लें और उससे खोलने की कोशिश करें। अगर खुल जाएगा उसके करेंगे तो मोस्ट लाइकली उसने कोई और प्रॉपर्टी भेजी होगी क्योंकि उस पर ऑलरेडी काम हो चुका है। कैन आई स्टार्ट फ्री दिस वर्क बिकॉज आई एम फ्रॉम यूके बेस्ड ट्रैवल एजेंट, आई वांट टू डू दिस वर्क फॉर मोर लर्निंग एंड अर्निंग। Munib Noreen, yes, Munib, you can definitely do that from UK. We only work in USA and Canadian properties, USA mainly for now, but आप इसको UK से कर सकते हैं, आपको ज़िलो खुल जाएगा, आपको ऑफर शेयर चली जाएगी। मैं आपको अपना नंबर दे दूँ उधर सेंड कर दूँगा, मैं आपको अपना नंबर दे दूँ उधर सेंड कर दूँगा। यार आपका पता नहीं क्या मसला चल रहा है, बट आप आई थिंक आपने एक आपकी वो वाली प्रॉपर्टी है ना जो 11501, करेक्ट उज़ैफ़ा, वो वाली प्रॉपर्टी है? यस और नो? नो और यस? यस और नो? Okay, I'll just type it Lock Avenue. ओके, इसमें आपको आपने बोला था यार ये डेविड है, इस डेविड को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गधा इंसान है डेविड, ये जो आपका एजेंट है रियल्टर, बहुत इसने मसले करे हुए हैं पहले हमारे साथ। आई नो दिस गाय वेरी वेल, बट आपको वो क्या बोल रहा है, इस घर का बहुत बुरा हाल है, इसको आप अगेन गाइस दैट्स अ प्रॉब्लम। उज़ैफ़ा, इस घर में ना काफ़ी काम है, ठीक है। अगेन आप कोर्सेज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन घरों पे ऑफ़र नहीं दो तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपने पैसे वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप घर लाएंगे तो हमें मार्केट करना होता है और ये घर इतना ख़राब है, इसका टफ है। तो ओनली रीज़न ये अच्छा इस वजह से कि ये ड्यूप्लेक्स है, इसका मतलब 2 फैमिली रह सकती है। दैट बीइंग सेड, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लेके आना पड़ेगा।
अगर आपको कोई 15 से 20 हज़ार का डिस्काउंट, 15 से 20 हज़ार में ये मिलता है तो जाके ये घर ठीक रहेगा, ठीक है। वो भी मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि इस बंदे ने, जिस बंदे से आप घर ले रहे हैं, उसने घर लिया था 20,000 का, ठीक है। उसने मार्केट में लगा हुआ है 49 का, कोई भी काम नहीं किया उसने, ठीक है। तो आप उसको जाके बोलो मैं आपको 20,000 देता हूँ आपके घर के, और ये घर मेरा, ठीक है। देन इट कुड बी डन समथिंग। 1 साल से कम का वक्त में उसमें फौरन से सेल कर रहा है और विदाउट एनी डिस्काउंट। Asif, I just want to say you are an awesome guy. Fake properties, fake Raheel, thank you. I appreciate it, man. You are awesome too. The way you see the world is the world you are. I don't know if that makes sense, but जैसे आप दुनिया को देखते हैं वैसे ही आप दुनिया खुद होता है। तो अगर आपको दुनिया, सामने वाला बंदा, सामने की दुनिया अच्छी दिख रही है तो आप अच्छे हैं, सामने वाला बुरा लिख रहा है तो आप बुरे हैं। That's just how the world works. But just remember, it's very important, guys. The way you see the world is the world you are. Okay, very, very important. It's a very good quote somebody told me a long time ago. मुझे नहीं पता किसने बोला, बट जो भी बोला ये सच बात बोला। क्योंकि जिस तरह आपको दिख, अगर दुनिया में आपको दिख रहा है सारे गरीब हैं, सारे पागल हैं, सारे काम नहीं करते, सारों के साथ मसला है, अब सारों 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 करें और उसकी बात नहीं करें जिसमें मसला है, जो कि आप खुद हैं, राइट। सो रिमेंबर, I love talking about this, guys. You have no idea. I love talking about this wisdom and mindset, because this is how the world works and लोग देखते नहीं हैं, राइट। अगर आपको हर जगह गुर्बत दिख रही है तो आप भी गरीब बनेंगे, आपको हर जगह सब लोग अमीर दिख रहे हैं तो आप भी अमीर बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चेंज करना है, अपनी लाइफ से बाहर आना है, मुसीबतों से बाहर जाना है, तो आपने अपने आसपास के 5-10 लोग वो रखने हैं जो उन मुसीबत से ऑलरेडी बाहर हैं, और इस मुसीबत से निकलने के लिए आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपको चीखता चिल्लाता रहता हूँ, अकेले काम में कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 दिन करेंगे मेहनत से, 11 दिन आप छोड़ के चले जाएंगे। बट अगर आप कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं ना, 15-20-50 लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, सबका एक ही विजन है, तो तब जाके आप मोटिवेट होंगे, राइट। अगर आप खुद कर रहे हैं ना, आप 10 दिन करेंगे, 20 दिन छोड़ देंगे, फिर 10 दिन करेंगे, आप कभी भी क्लोज नहीं कर सकते। बट आप लग के 6-7 महीने काम सीख लें, इन अ फेम ऑफ कम्युनिटी, इन द शेप ऑफ कम्युनिटी, आप अपने कनेक्शन ज़्यादा बनाएंगे, आपकी डील ज़्यादा क्लोज होगी, आपको मोटिवेशन उतनी ज़्यादा मिलेगी। आप बोलोगे यार ये हुसैन कौन होता है डील कॉन्ट्रैक्ट में लाने वाला, मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, या हैदर कौन होता है, या अबूजर कौन होता है, या कोई भी और कौन होता है, उसने वही ईमेल करी है जो मैं ईमेल कर रहा हूँ, उसके पास वही फैसिलिटीज़ है जो मेरे पास फैसिलिटीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, दूसरे का नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रही प्रॉपर्टी, राइट। देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ऐसा कर कर करके आप उस लेवल पे आ जाते हैं जिस लेवल पे आपको दिख रहा होता है कि भाई हर जगह डील क्लोजेस हो रही है। अगर आप ये भी सोचेंगे यार किसी की भी डील क्लोज नहीं हो रही, मेरी भी नहीं होगी, तो यस दैट इज़ ट्रू। अगर आप बोलते हैं सबकी डील क्लोज हो जाएगी तो मेरी भी हो जाएगी, एंड दैट्स ट्रू, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मुझे शौक है इन चीज़ों का, तो मैं निकल जाता हूँ इस रास्ते पे। बट एनीवेज, थोड़ी देर सब्र करो, 10 मिनट में मिल जाएगा। रिमशा, डिड आई मिस रिमशा's मैसेज? भाई मैंने पेमेंट, रिमशा, ओके सॉरी आई मिस्ड इट। भाई मैंने पेमेंट कर दी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कैसे ज्वाइन करूँ। रमशा बतूल, आपको करना ये है, जहाँ पे आपने पेमेंट करी है ना वॉप में, वहाँ पे जाके अपने मैसेजेस खोलें। ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, और उसमें एक वीडियो है कि कैसे ज्वाइन करना है डिस्कॉर्ड, और वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। आप प्लीज़ अपना डीएम चेक करें, उसमें वीडियो है, वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कैसे हुआ जाता है। और जैसे ही आप उसको फॉलो करेंगे आप आ जाएंगे डिस्कॉर्ड में, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको फ़ौरन डी में आता है, लाइक विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। थैंक्स मुश्तबा फॉर आंसर, आई मिस्ड हर मैसेज। ओके, मिस्टर बदू सेज ओके, फेक एंड हैंडसम गाय, थैंक यू। अबूजर भाई मैंने 2 प्रॉपर्टी सबमिट में जमा करवाई थी, मैंने एजेंट से बात की है, उसने कहा है आपकी ऑफ़र मेरे तक अभी रिसीव नहीं हुई है। Abuzer, I'm sorry, you have, I'm sorry,
उसने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स नहीं आए. अबू सर सेंड मी द DM ऑफ द 2 प्रॉपर्टीज़. आपकी 2 प्रॉपर्टी से बात चल रही है, उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, बट मैं हो सकता है या तो उनको उनका स्पैम में चला गया या क्या गलत ईमेल है, आई डोंट नो. अगर आपने ईमेल सही सबमिट कराई है देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. रमशा बतूल से ओके थैंक यू, या नो प्रॉब्लम. ये एड्रेस है लोकेटेड एट 7807 4th Avenue क्लीवलैंड, लेकिन वो कह रहा है कि इफ़ यू आर गुड टू प्रोसीड प्लीज़ फिल दिस फॉर्म आउट फॉर द ऑफर एंड आई विल गेट इट ड्राफ्ट अप एसएप. ठीक है. ठीक है. आप कुछ बोलते हैं कि मुझे ईमेल में सेंड कर दो, कुछ बोलते हैं मुझे गूगल डॉक्स में कर लो, बात एक ही चीज़ है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है उज़ैफ़ा. ओके. 80,000 की प्रॉपर्टी है और घर इज़ नॉट इन अ ग्रेट सिचुएशन. ये घर मुझे पता है एक्चुअली, इस पे काफ़ी लोगों ने ऑफ़र दी हुई है, सो आई नो दिस हाउस. आई नो दिस हाउस. सो इस घर पे आपने हुज़ैफ़ा ऑफ़र कितनी दी है, दैट आई नीड टू नो. अगर आपने ऑफ़र 0.6 0.5 की दी है तो ठीक है. अब क्या करूँ, आपको वो फॉर्म खोलना है और उसको फिल करना है. अगर आप डिस्कॉर्ड में हैं तो हम कर लेंगे, वरना आप फॉर्म को फिल कर दें और कुछ चीज़ें बता दें. बट ऑफ़र आपकी 0.6 या 0.5 होनी चाहिए, क्योंकि उसमें काम है. कल आप बात कर लें क्लास में एजेंट से. आई विल ट्राई बट आई डोंट नो कौन सी प्रॉपर्टी, सो प्लीज़ सेंड मी द प्रॉपर्टी एड्रेसेस. सईद भाई मेलोडी सेलर डिक्लाइन द ऑफ़र. ओके, उससे पूछें क्यों और मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. फेक फेक रही हो आपको. किसी पे अटकना नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी से मूव ऑन. ठीक है. आपके सामने है कितने स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं, 30 40 50% ऑफ, आपके सामने की बात है राइट. तो अगर वो नहीं देना चाह रहा तो नहीं देना चाह रहा, अब आप उसके कुछ भी कर लें वो नहीं देगा. बट उससे पूछ लें क्यों, हो सकता है उस पर लोन हो. अगर लोन है तो फिर उस प्रॉपर्टी को हम डिफरेंट तरीके से डील करेंगे. डिस्कॉर्ड में नहीं हूँ हुज़ैफ़ा, दैट्स ओके. फॉर्म में कोई लीगल चीज़ नहीं होगी, आप फॉर्म में चीज़ें डाल दें और डाल के इसको भेज दें. डूक नाउ प्रॉपर्टी एजेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द कैश, चेक द नेबरहुड हाउस होल्ड एरिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन. एजेंट ने एक्सेप्ट नहीं करी तो आप, अगर कैश आपकी एक्सेप्ट नहीं करी तो आप उसको सेलर फाइनेंस की ऑफ़र दें. I want to start this work from the beginning. Mr. Gill 2024. Yes, brother, you can definitely start it. Make sure to watch some of the YouTube videos and then you'd be good. Okay. Okay, hopefully that answered your question, guys. The most important thing, guys, आपने ये सोचनी है कि दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना. एक है कैश ऑफर, तो कैश बात करेंगे जिसमें इन्वेस्टर सारे पैसे कैश लगाएगा या लोन लेके आएगा बैंक से 20% का, अगर वो क्वालिफाई होता है तो. ज़्यादातर इन्वेस्टर क्वालिफाई नहीं होते क्योंकि उनके पास मंथली पैसे नहीं आ रहे होते, वो कोई जॉब नहीं कर रहे होते. ठीक है. तो ज़्यादातर वो नॉर्मल लोन के लिए क्वालिफाई नहीं होते. तो एनीवेज कैश वो हो जाएगा. सेलर फाइनेंस, हम सेलर को बैंक बना के सेलर को पेमेंट दे रहे होते हैं. ठीक है. तो वो बन जाता है सेलर फाइनेंस ऑफर या सेलर फाइनेंस हाउस. ठीक है. उसमें हम 10% अभी देते हैं, 10% ऑन टॉप देते हैं और बाकी पैसे 84 मंथ्स की पेमेंट प्लान में देते हैं. दैट्स इट. 84 मंथ से कम भी चल जाता है बट बहुत कम केसेस में. ठीक है. बहुत कम केसेस में. लाइव ओपन नहीं हो रही. आई एम नॉट श्योर ब्रदर. लाइव ओपन हो रही होगी जब तो आपने मैसेज किया है. ओके. गाइज डेज ऑन द मार्केट. ठीक है. मैंने एक नई वीडियो बनाई है अभी के लिए जिसका नाम है डेज ऑन द मार्केट.
जिसका नाम तो है ज़िलो पे ये नंबर सेलर के गले पे हाथ रख लेता है, वो इट्स अ डिफरेंट, बट प्लीज़ वॉच दैट वीडियो डेज ऑन द मार्केट। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको मसला होगा। डेज ऑन द मार्केट बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूं। कितने दिन से प्रॉपर्टी ज़िलो पे लगी हुई है, ठीक है, कितने दिन से प्रॉपर्टी ज़िलो पे लगी हुई है। अब भले ये ज़िलो है या आपका मार्केट है, आप उसको कुछ भी बोल दें, कितने दिनों से प्रॉपर्टी ज़िलो पे लगी हुई है। ना द प्रॉब्लम हियर इज़ के अगर प्रॉपर्टी 10 दिन से लगी हुई है इसका डिफरेंट मतलब होगा, प्रॉपर्टी 50 दिन से लगी हुई है उसका डिफरेंट मतलब है, प्रॉपर्टी 100 से लगी हुई है डिफरेंट मतलब है, प्रॉपर्टी 300 या 400 में लगी हुई है उसका डिफरेंट मकसद है, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपको डेज ऑन द मार्केट पता हो कि अगर 5 दिन से लगी हुई है, राइट। आप खुद सोचो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने सेल करनी है, 5 दिन आपने लगा के रखी है ऑनलाइन। क्या एक बंदा आ रहा है पीछे से, वो बोलता है मुझे 30% ऑफ दे दो अपनी प्रॉपर्टी पे, आप बोलेंगे जी हुजूर ये लो सारे पेपर और घर ले लो? नहीं, आप बोलेंगे मैं अभी सिर्फ 5 दिन लगा हुआ हूँ, मैं हो सकता है थोड़ा और रुक लूँ, हो सकता है मुझे कोई और प्रॉपर्टी कोई और ऑफर मिल जाए, तो मैं थोड़ा सा शांत रहूँगा, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है। तो वो 10 20 30 दिन लगा रहेगा, उसको ऑफर नहीं आएगी अच्छी, तो वो थोड़ी सी उसको खुशी होने लग जाएगी, ऐसे खुजाते ना हाथ पे, यार प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी को सेल करवाओ, क्यों नहीं हो रही है। तो 30 डेज 25 से 30 दिन ये वो टाइम होता है जब खुजली होने लग जाती है लोगों को कि प्रॉपर्टी सेल क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। जी दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट। इस स्पॉट में अगर आप कैश ऑफर देते हैं 30 से 40 दिन की अंदर, मोस्ट लाइकली आपकी कैश ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है और आपका घर निकल सकता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हम जाते हैं कोई 100 दिन पे, ठीक है। 100 दिन पे क्या सेलर को खुजली नहीं होनी चाहिए? सेलर को तो इतनी जोर से खुजाना चाहिए कि उसका खून निकल जाए, राइट। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। भाई 30 दिन पे खुजली हो रही है, फिर 100 दिन पे तो उसको अपने हाथ से इतना खुजाना चाहिए कि खून आ जाए, बट नहीं खुजा रहा और वो चुपचाप बैठा हुआ है। वो इस वजह से कि सेलर को अपनी प्राइस चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर सेलर को प्राइस अपनी चाहिए, वो डिस्काउंट लेने की कोई भी मूड नहीं है, इसका मतलब है आप लोग क्या ऑफर करेंगे? पुट इट इन अ चैट। आप लोग अगर सेलर 100 दिन से लगा हुआ है और वो बोल रहा है, दिखने में आपको पता चल रहा है कि वो अपनी प्राइस उसको चाहिए जब भी उसने सेल नहीं किया, तो वो उस पर क्या ऑफर देंगे आप? पीपल टेक्स्ट प्लीज चैट, क्या ऑफर देंगे उस घर पे जो 100 दिन से लगा हुआ है और उस पे आपने हाय मोहम्मद, हाउ यू डूइंग? स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड आपको यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ेंगी। मेरे लिंक इन बायो में यूट्यूब अकाउंट है, आप उसमें जाके स्टार्ट से वीडियो देखें, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मैंने बनाई हुई सब चीज़ों की। मोहम्मद सेज डिस्काउंट, नो मोहम्मद, यू कैन नॉट आस्क फॉर डिस्काउंट, क्योंकि अगर डिस्काउंट देना होता तो वो 30 दिन में दे देता ना। अब वो 100 दिन तक लगा हुआ है, तो इसका डिस्काउंट नहीं है, इस पर कोई और ऑफर लगेगी, डिस्काउंट तो हमारी कैश की ऑफर आ जाएगी, ठीक है। अब मुश्तबा से सेलर फाइनेंस, अबूजर से 0.6 की नहीं, ठीक है। अबूजर 0.6 की ऑफर नहीं लगेगी, इसका मतलब हम 40% डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। अगर उसको डिस्काउंट देना होता तो वो 100 दिन में दे देता और घर को सेल करवा देता, बट उसने नहीं करी घर को सेल, वो रुका हुआ है, तो इसका मतलब डिस्काउंट तो उसको चाहिए ही नहीं है। जो मुश्तबा ने बोला ना, आई एग्री विद दैट, ठीक है। हम उसको देंगे सेलर फाइनेंस की ऑफर, क्योंकि सेलर फाइनेंस में हम घर के पूरे पैसे देते हैं। 100 चाहिए, ये लो 100,000 ये रहे, और पूरे पैसे को हम सेलर को देते हैं और पैसे से 10% ऊपर देते हैं, ठीक है। सेलर को कोई भी मसला हो सकता है, उसको उतने पैसे चाहिए हो, किसी की शादी में लगाना हो, घर का इश्यू हो, कुछ भी हो, उसको उतने पैसे तो चाहिए। हम बोलते हैं कि ठीक है हम उतने पैसे आपको देते हैं सेलर फाइनेंस की ऑफर पे, 100 दिन से लगी हुई है और देते हैं, तो वो बोलेगा हाँ, राइट, क्योंकि उसको प्राइस ही फंसा हुआ था। हम उसको अगर प्राइस पे देते हैं तो हम वापसी में बोलेंगे ठीक है हम आपको 84 मंथ्स के मंथली प्लान में आपको घर देंगे, आप वो ले लो। दैट्स हाउ इट गोस गाइस, ठीक है। अगेन द वीडियो, यार वीडियो का थंबनेल मुझे नहीं पता किधर गया, बट
Let's see, I'll show you guys. Downloads, where's downloads? Right here. One second, can I put it here? No, I can't. Okay. घर अगर 50 दिन से लगा हुआ है तो आप कौन सी ऑफर देंगे? ठीक है, आई एम क्रिएटिंग अ पूल इन यूट्यूब, टेल मी द आंसर. ओके, कैश, seller ads. ओके, कैश और सेलर फाइनेंस का मैंने पूल खोला है. टेल मी व्हाट यू गाइस थिंक. ठीक है, 50 दिन से प्रॉपर्टी लगी हुई है. द क्वेश्चन इज कि 50 दिन से प्रॉपर्टी लगी हुई है और सेलर फाइनेंस की ऑफर देनी है या कैश. दैट्स द आंसर. ऑल्सो कैश. मुश्तबा मैंने वो किया हुआ है थंबनेल व्हाटएवर जो बोलते हैं पोल. Mostly people say 80% people saying seller finance, 67 says cash. Price daily देखिए 3.56. सर अगर लिस्टिंग में मेंशन है कि नो होलसेल्स तो क्या हम ऑफर दे सकते हैं लिस्टिंग पे? देखिए, अगर उसमें उसने मना कर दिया कि होलसेल नहीं करनी, ठीक है, हम उन प्रॉपर्टीज़ पे भी ऑफ़र कर सकते हैं, बट आपने ये ध्यान में रखना है कि उन प्रॉपर्टीज़ पे आप ज़्यादा डिस्काउंट आपको लाना पड़ेगा, नॉर्मल से ज़्यादा. ठीक है, क्यों? क्योंकि करना ये होता है कि उससे हम प्रॉपर्टी लेते हैं, अपना नाम लिख के ख़ुद ख़रीद लेते हैं, हम ओनर बन जाते हैं प्रॉपर्टी के. ठीक है, फॉर कितना टाइम? मे बी 10 मिनट, मे बी 15 मिनट, और 16वें मिनट पे हम वो प्रॉपर्टी वापस सेल कर देते हैं किसी और इन्वेस्टर को. ठीक है, तो 15 मिनट की होल्ड करी, सेल खरीदी. अब प्रॉपर्टी जब मेरी होगी ना, अब मैं उसको आग भी लगा दूं कोई मसला नहीं है. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, उस सेलर की नहीं है. सेलर ने साइन कर दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए, ख़त्म बात. तो उसको बोलते हैं डबल क्लोजिंग. और अगर डबल क्लोजिंग में कॉस्ट बहुत लगती है, मुझे यहाँ से क्लोजिंग कॉस्ट पे करनी है, फिर मुझे यहाँ से भी क्लोजिंग कॉस्ट पे करनी है. ठीक है, फिर मुझे खर्चा आएगा दोनों चीज़ों का. सो दैट्स वाई so far everyone is saying seller finance. 62% says seller finance, or I guess 48 person said seller finance. Okay, this is interesting. I know this is going to be trouble. ठीक है, रीज़न वाई दिस इज़ गोना बी ट्रबल, मैं पोल को एंड करता हूँ. मोस्ट लाइकली आप लोगों का आंसर राइट है जिन जिन लोगों ने सेलर फाइनेंस की ऑफ़र दी है. ठीक है, जिन जिन्होंने सेलर फाइनेंस की ऑफ़र दी है उनका आइडिया मोस्ट लाइकली ठीक है. अब देखिए, 50 दिन ये उस मिडल में आ जाते हैं, उस मिडल में जहाँ पर आप अपने आप को आप बीच में मालूम करते हैं. क्योंकि अगर आप 30 दिन के हैं तो इसका मतलब कैश 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 आसान चल जाएगा. बट 30 दिन का ये मतलब नहीं है कि वो सेलर फाइनेंस की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा. किसी को भी ज़्यादा पैसे आते देखते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप उसको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं अपनी उसकी अपनी प्रॉपर्टी से, तो उसको क्या मुसीबत है कि वो नहीं ले. ठीक है, एक ही मुसीबत ये है कि उसको सिर्फ एक मुसीबत ये होगी कि उसको पैसे अभी नहीं मिल रहे, अभी पैसे कम मिल रहे हैं, बाकी आगे. सो इसके अलावा और कोई मुसीबत नहीं. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों को देखें. अगर वो कैश मना करता है सेलर फाइनेंस की, जो छूटते ही फ़ौरन से पहली फुर्सत में आपने सेलर फाइनेंस की ऑफ़र देनी है. दैट्स इट. ठीक है, 50 का अगर मैं होता ना, मैं प्रॉपर्टी पे देखता 50 दिन लगी हुई है, मैं फिर एक और चीज़ देखता.
मैं ये देखता कि ऊपर प्राइस की जो लिस्टिंग प्राइस है उसके ऊपर लाल कलर का छोटा सा उस पर लिखा हुआ है कि प्राइस कट या नहीं, ठीक है। प्राइस कट अगर लिखा हुआ है तो नहीं, अगर नहीं, अगर प्राइस कट नहीं लगा हुआ तो मैं फ़ौरन से सेलर फाइनेंस की ऑफ़र दूंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि प्राइस कट करने का शौक नहीं है सेलर को और वो अपने पैसे चाहता है, ठीक है। अब 50 दिन तो लगे हुए हैं बट ऊपर लिखा हुआ है प्राइस कट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो 50 दिन से पहले से पैसे कम करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं उसको फ़ौरन से दूंगा कैश ऑफ़र, क्योंकि उसने प्राइस कट कर लिया है। तो वो हो सकता है उसको सारे पैसे अभी चाहिए हों वन, और उसको उतने नहीं चाहिए जितने वो मांग रहा है, वो कोई भी पैसे अभी दे दे, ले लूँगा, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के और भी चीज़ें हैं मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। गाइस दिस इज़ द वीडियो, ठीक है, रिसेंटली पोस्टेड, ये वाली, दिस इज़ द वीडियो जो आपको बताती है डेज ऑन द मार्केट, ठीक है। 31 डेज ऑन द मार्केट। आपने गर्दन पे उसके हाथ रखा हुआ सेलर के इसी वजह से है कि अगर आपने ये समझ लिया तो आपको निगोशिएशन कैसे करनी है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। निगोशिएशन करनी समझ आएगी आपको, सेलर को पुश करना आएगा। अगर फॉर एग्जांपल सेलर बोलता है कि भाई 31 डेज ऑन द मार्केट तो है बट मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो आप बोलेंगे आपका दिमाग ठीक है, आप 30 दिन से मार्केट पे हैं, आपको ये नहीं पता कि अगर 30 दिन से मार्केट पे हैं और कोई नहीं लेता प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि आपकी आस्किंग प्राइस ज़्यादा है। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, यही मसला है, इसी वजह से सेल नहीं हो रही। और अगर आपको चाहिए अपनी प्राइस तो मैं देता हूँ आपको अपनी प्राइस, आपने मुझे बस इतना मंथली पेमेंट में दे देना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू गोना टॉक। जब आपको पता होगा कि इस डेज और मार्केट से ये मसला है, उस डेज और मार्केट का ये मतलब है, तो फिर आप उसको कॉन्फिडेंट बात कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंटली इसको बात करें। ओके, ऑल्सो कैश, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सैयद भाई प्रॉम्प्ट वाली वीडियो कब आएगी? प्रॉम्प्ट वाली वीडियो, ईमेल प्रॉम्प्ट, यस, प्रॉम्प्ट वाली वीडियो मैं बना लूँगा बट जो उसके प्रॉम्प्ट्स हैं वो मैं डिस्कॉर्ड में दूंगा। आई थिंक इट वुडंट बी फेयर टू गिव इट टू द यूट्यूब टू एवरीवन, ठीक है, क्योंकि अगर जो पे कर रहा है दैट मेक सेंस। भाई मेरा पूछने का मतलब ये है कि कंपैरिजन हाउसेस की प्राइस बहुत लो है तो क्या सेलर फाइनेंस की ऑफ़र भी दे सकते हैं? यस, डूक डूक नाउ डूक नाउ 4473। देखें, अब आपने बात सुननी समझनी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपका घर 100 का है, घर के आसपास के सारे घर जा रहे हैं 150 के, 160 के, ठीक है। आप उसको सेलर फाइनेंस की ऑफर देते हैं 150 की, ठीक है। तो इसका मतलब आप मार्केट पे आ गए, और अगर वो एक्सेप्ट करके आपको घर दे देता है तो इसका मतलब है एट आस्किंग आपने घर ले लिया, आपको घर एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा, ठीक है। तो ये डील तो बहुत अच्छी बन गई, ये तो आपको भी पता चल गया। अब आपका घर लगा हुआ है 100 का और आसपास के सारे घर लगे हुए हैं 60 के, 70 के, ठीक है। तो अगर आप उसको सेलर फाइनेंस की ऑफर देते हैं, क्या ये अच्छी डील है? क्योंकि सेलर फाइनेंस की ऑफर में तो हम उसकी एड आस्किंग पे आते हैं, इसका मतलब हम 100,000 देंगे, भले उस जैसा घर 60 का लगा हुआ है, हमें उसको 100 देना है, वन। नंबर 2, हम उसको ज़्यादा भी देंगे, 110 भी दे सकते हैं क्योंकि हम सेलर फाइनेंस की ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। बट आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आप सेलर फाइनेंस की ऑफर देते हैं आपने 10% डाउन, जब आप मुझसे पूछेंगे ना कि भाई ये घर कितने का लिया, 100,000 का घर है सेलर फाइनेंस पे मैंने इसको लिया, तो मैं बोलूँगा ये घर मैंने 10,000 का लिया है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, सामने वाले घर पे जो तुमने हाथ रखा हुआ है ना, ये घर मैंने 10,000 का लिया है। अब वो बोलेगा 10,000 का कैसे, 100,000 का है, उसने तुमको 10,000 में बेच दिया। आप बोलोगे नहीं, उसने मुझे 10,000 में नहीं बेचा है, ठीक है, उसने बेचा तो 100 में है, बट मैंने पे सिर्फ 10 किए हैं और बाकी की सारी पेमेंट्स मेरा रेंटर पे करेगा। समझ रहे हो ना? आपने 10,000 दे के पूरा घर खरीद लिया और पे कौन करेगा? रेंटर पे करेगा। समझ रहे? सो इट्स अ बिग डील। आपने 100,000 का घर खरीद लिया है 10,000 में, और समझ गया 90 मंथ्स की पेमेंट है, 84 मंथ्स की पेमेंट है, यादा यादा यादा, एट द एंड सेलर को पैसे तो नहीं मिल रहे, ठीक है, बट आप तो नहीं पे कर रहे हैं ना, पे कौन कर रहा है? रेंटर कर रहा है।
तो आपने जब भी आप बोलोगे कि भाई ये घर, फॉर एग्जांपल ये घर है मेरे पीछे, कितने का लिया, मैं बोलूँगा 10,000 का, मैं बोलूँगा दिमाग ख़राब है, 10,000 का कौन बेचेगा तुमको घर, ये घर मैंने सेल्फ फाइनेंस पे लिया है, इसका मतलब है कि मैं रेंटर को रख रहा हूँ इस घर पे और वो पे कर रहा है, तो मेरा खर्चा 10,000 का था और रेंटर बाकी की पेमेंट पे कर रहा है, तो टेक्निकली मेरी जेब से सिर्फ 10,000 का है, राइट। तो अब आप ये देखो, आपका घर 100 का है, बाकी के घर आपने 110 में खरीद लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, 110 में खरीद लिया, उसका डाउन डाउन पेमेंट आएगा 10,000 की, फॉलो रखना, ठीक है, ये बात फॉलो रखना। आपने घर ले लिया 110,000 का, उसकी डाउन पेमेंट आई $10,100 की, ठीक है, आपने घर खरीद लिया। अब आसपास के घर में से एक बंदा आता है, बोलता हाँ भाई कितने का घर लिया, तो आप बोलोगे यार इसकी परचेज प्राइस जो थी ना 110 थी, तो वो हंसेगा, ये वाला बंदा बोलेगा, हंसेगा, तो बात दिमाग ख़राब है, मैंने ये घर लिया है 60,000 का, ठीक है, मैंने 60,000 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्रॉब्लली गोना भी 80,000 तक आएगा, लेट्स जस्ट सपोज 80,000 की बात करते हैं, लेट्स से 30% ऑफ, लेट्स से 70,000 की बात करते हैं, ठीक है। अब वही घर उसने उसी जैसा दिखने वाला 70 में ले लिया, तो वो खुश हो रहा है, ठीक है। तो आप उससे पूछोगे कैसे लिया है, तो बोला अरे मैंने तो बैंक से लोन में लिया, ठीक है। तो आप पूछोगे इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, वो बोलेगा 8%, बोलेगा आप, फिर मैं बोलूँगा मुझे पता मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, $0, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तुम 30 साल तक 8% इंटरेस्ट पे करते रहोगे, मुझे $0 इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो आप यहीं पे जीत गए उससे। दूसरी बात, कितने पैसे तुमने अभी डाल के लिया घर, ओ मैंने घर डाल के लिया 20%, ठीक है, ओके। तो आप जल्दी से कैलकुलेटर खोलेंगे, उसने घर लिया है 70,000 का, तो आपने 70,000 लिखे, मल्टीप्लाई किया 0.2 से, ठीक है, राइट हियर, ठीक है। तो आप पूछेंगे कितने हज़ार का घर लिया, तो बोलेगा मैंने 20% डाउन डाला, तो इसका मतलब तुमने 14-15 हज़ार डाले होंगे, बोला हाँ। मैंने पता ये घर कितने का लिया, मैंने 10,000 में लिया, मैंने तुमसे 4,000 सस्ते में लिया। अब आप बोल सकते हो कि भाई ये वाला घर भी रेंट पे डाल सकता था और पैसे निकाल सकता था, सही बात है, और ये भी कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं, राइट। बट एंट्री कॉस्ट टू द हाउस, घर में घुसने के पैसे, घर में डील को लेने के पैसे थे, एक के 10,000, एक के 14,000, ठीक है, एक का 0% इंटरेस्ट, एक का 8% इंटरेस्ट, ठीक है। एक की मंथली इनकम, मंथली उसको सेलर को पे करना होगा 0% इंटरेस्ट पे मे बी $300-400, और इस बंदे को मंथली पे करना होगा $600-700, ठीक है। तो इसके पास रेंट के बाद खर्चे देने के पास भी बहुत पैसे बचेंगे, और इसके पास रेंट के बाद कुछ पैसे नहीं बचेंगे। तो ठीक है वो ओन कर रहा है घर इसी तरह जिस तरह हम ओन कर रहे हैं, बट हमने स्मार्टर वे से घर खरीदा है, वो इस वजह से कि हमने डाउन पेमेंट भी कम दी, हमें इंटरेस्ट भी कुछ नहीं देना पड़ा, और हम कैश फ्लो डेली का भी मंथली का भी ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ वाई सेलर फाइनेंस वाले घर अगर सस्ते में भी, अगर महंगे भी लगे हुए हैं और सामने वाला घर सस्ता है, तब भी बेहतर है वो इस घर से, ठीक है, तब भी बेहतर है वो इस घर से, क्योंकि आपने 10% डालना है, इसका 10% और इस घर का 20%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 90% हम सेम होगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हसनैन खान वालेकुम अस्सलाम। fake properties, yes, I will try to get the video out inshallah soon. सर अगर लिस्टिंग में मेंशन हो कि नो होलसेलर, तो क्या हम ऑफ़र दे सकते हैं? अदनान, आई एक्सप्लेन दैट टू यू कि हम दे सकते हैं, हमें ज़्यादा डिस्काउंट लेना चाहिए, मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो आप वीडियो जब लाइव हो जाए तो आप देख सकते हैं इसको बाद में, ठीक है। सो दैट दिस इज़ वाई सेलर फाइनेंस की 0.14 सेलर फाइनेंस इस पर 0 ऑफर होती है। अबू सर आप वीडियोस देख लें, उसमें आपको ख़ुद पता होगा कि ऑफ़र ठीक है कि नहीं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ही आपको बता रहा हूं, तो आप वेट करते रहेंगे, ऑफ़र देने से पहले मेरा वेट करते रहेंगे, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप कोर्सेज देख लें तो आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे ऑफ़र है, कैसी ऑफ़र नहीं है। लाइव कोर्सेज हैं, आप उसको देख लें, उससे होगा ये कि आपको मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा और मुझको आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको खुद आ जाएगी। मुझसे पूछने से पहले आप ऑफ़र दे दें एंड देन फिनिश करें, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपकी और प्रॉपर्टीज़ नहीं खोल रहा, क्योंकि हमारी काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि ये अच्छी प्रॉपर्टीज़ बुरी है, आपकी स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी ठीक नहीं थी, वो मैं एग्री करता हूँ, बट अब आप काफ़ी बेहतर ऑफ़र कर रहे हैं, दैट्स फाइन,
ठीक है। तो अगर आपने 0.5 की दी है तो सही दी होगी, ठीक है गाइस। सो रिमेंबर डेज ऑन द मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा वीडियो की, मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए, जैसे मैं फ्री पे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपसे बातें कर रहा हूँ, उसी तरह मैं आपको आसान दे रहा हूँ। इससे होगा क्या कि मेरे पास जो 50 डीएम आते हैं, सर इतने दिन से मार्केट में लगा हुआ है, क्या इसको हम ले लें, मुझे इसको 10 बार समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से जब भी आप मेरे अकाउंट्स पे जाएंगे, इतने डीएम आते हैं और सबके क्वेश्चन ये होते हैं कि यार इसका क्या करूं, इस डील को क्या करूं, ये डिस्काउंट है इसको क्या करूं, मैं कैसे सबको बताऊं टाइप करके मैसेज। ना ही कोई एआई है कि एआई को पकड़ के मैं डीएम में डाल दूं कि वो खुद कर ले, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसका बहुत आसान सा हल है, मैं वीडियो बना देता हूँ, वीडियो डाल देता हूँ। जो इंसान खुद से काम करना चाह रहा है, खुद से मेहनत करना चाह रहा है, वो वीडियोस देख के समझ जाएगा, अपना काम स्टार्ट कर देगा। जो नहीं, उसके हाथ में लाके आप सोने का चमचा दो तभी वो खाएंगे, तो वो लोग तो वैसे भी सक्सेसफुल नहीं होते दुनिया में, ठीक है। तो अगर आपने मुझे डीएम किया है और मैंने उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब है कि आपको उसका आंसर हर जगह मिल जाएगा, हर वीडियो पे मिल जाएगा, आपने बस उसको जाके चेक करना है, ठीक है। सो प्लीज़ डू नॉट फोकस ऑन मी। आप डीएम का फोकस नहीं करें, आप फोकस करें उन चीज़ों पे जो ऑलरेडी आपके पास मेंशन है। तो आप यूट्यूब पे आप मुझसे पूछें कि भाई आप यूट्यूब लाइव पे आए, मैं 4 घंटे यूट्यूब लाइव पे आता हूँ, उसके बाद भी मेरे डीएम, मुझे रोज़ कोई 100 डीएम्स आते हैं। अब और डीएम्स के कोई अच्छा आता है, चलो कोई पार्टनरशिप की बात कर रहा है, कोई अप्लाई कर रहा है, कोई एक डिफरेंट बात है, राइट। बट डीएम क्या आते हैं, 0.5 की इस पे ऑफर लगेगी, 0.6 की ऑफर लगेगी, इतने में मैंने ले लिया है, एजेंट ये बोल रहा है, एजेंट उसने कह रहा है, एजेंट मेरी बात नहीं सुन रहा, एजेंट मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहा, इसका मैं क्या जवाब दूँ, राइट। इट डजेंट मेक सेंस। तो इवन बिकॉज इसका आंसर सब मौजूद है और मैं 4 घंटे लाइव आता हूँ। अगर आप 4 घंटे में से 5 मिनट अपने नहीं निकाल के लाइव में आके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो मैं आपको टाइम क्यों दूं आपके डीएम में, डजेंट मेक सेंस, राइट। तो अगेन देयर इज अ प्रोसेस टू डू। भाई हाउ कैन आई स्टार्ट विद ज़ीरो, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम अ ज़ीरो। हसनैन खान आते आपका भाई ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें। हसनैन खान आपने करना बस इतना सा है, आप जो हैं यूट्यूब में जाएं और वीडियोस देखें यूट्यूब की, ठीक है। उन सब वीडियोस में मैंने स्टेप बाय स्टेप, डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो आप स्टार्टिंग की वीडियोस में जाएं, जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं, क्लास रिकॉर्डिंग नहीं, जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं वहाँ से आप देखना शुरू करें, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। वी हैव अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, अगर आप वहाँ ज्वाइन कर लें तो आप ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे, वरना अगर आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा डील फाइंड करने में, बट आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है। सो that's the whole spiel guys, that's the whole spiel. I'll wait for a few more minutes. अगर कोई और क्वेश्चन है गाइस तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि जो है आपकी मैं हेल्प कर दूँ, एंड देन आई विल लीव, ओके। I will leave after that. Any questions, concerns, complaint? Just make sure to ask me good questions. 99% of the things is already answered, guys. No problem whatsoever. Hopefully, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करने की फ़ीस है, टिकटॉक यस, डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करने की $10 पर मंथ फ़ीस है। बेसिकली ज्वाइन करने से आप यू बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी और आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं। टी जी गेमिंग, यस मैं वही बता रहा था इनको भी कि यस देयर इज़ अ फीस ऑन दिस। आप जब डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे यू हैव टू पे अबाउट $10 पर मंथ, बट उससे होता ये कि आप डेफिनेटली जो है अपनी डील को जल्दी क्लोज कर पाएंगे। बट ये काम आप ख़ुद अपने हिसाब से वीडियोस देखते हुए, ठीक है, यूट्यूब की वीडियोस देखते हुए कर सकते हैं। जो वीडियोस मैं वहाँ बता रहा हूँ, मैं वही बात रोज़ यहाँ पे लाइव में बता रहा हूँ और वही बात आगे बता रहा हूँ, ठीक है। So the answer is yes, the Discord is paid, but you don't have to pay. You can start in YouTube and go from there. ठीक है? So work on the education,
ठीक है, ऑफर देने से पहले आप पहले सीख लें थोड़ा सा, राइट? फिर आप बोलेंगे कि यार मैंने डीलें ख़राब कर दी। हो सकता है आपने जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रखा है वो अच्छी प्रॉपर्टी है, बट क्योंकि आपकी एजुकेशन ठीक नहीं थी, आपने सही से उसको पढ़ा नहीं था ऑफर करने से पहले, आपने डील लूज़ कर दिया। ठीक है, तो मेक श्योर कर लें प्लीज़ कि एजुकेशन ले लें। एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? कहीं दरख्त पे नहीं लगी हुई, यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देखनी है, वॉशरूम में बैठे हुए पीछे से यूट्यूब चला दें। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, सौदा लेने जा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो चला दें। ठीक है, लाइव क्लासेस 3-3 घंटे की हैं, 4-4 घंटे की हैं एक्चुअली लाइव क्लासेस, ये डेली की हैं, पता नहीं 1000-2000 घंटे हैं। आप इसको ना कान में लगा के सुने, कुछ नहीं करना, जो भी काम कर रहे हैं करते रहें, कान में लगा के सुने, एक दूसरे की डील को कंपेयर करें कि भाई ये डील आ रही है, क्योंकि क्लास में क्या होता है मैं डील लेता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप समझे कि ये डील मैंने क्यों मना कर दी और मैंने क्यों हाँ बोली और क्यों ना बोला, राइट? इस वजह से डील हाँ या ना हुई थी, उसकी वजह से डील आपकी ख़राब हुई है। अगर आप ये किसी और की डील पे सुनते भी रहे ना, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि मैं आपको क्या बताऊँ, राइट? एवरीथिंग इज़ फ्री। सिट डाउन, वॉशरूम में बैठे हुए हो यूट्यूब चला लो, खेलने जा रहे हो, बैटिंग का वेट कर रहे हो, यूट्यूब चला दो, रास्ते में हो, गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो, पीछे से यूट्यूब चला दो। आपके पास टाइम करने का बहुत है, हम टाइम को वेस्ट करते हैं छोटी चीज़ों में, वॉशरूम बैठे में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। उसी में अगर आप सीखने लग जाओ तो क्या मसला है, राइट? कोई नया टाइम तो इन्वेंट नहीं किया ना, आपको वॉशरूम जाना तो लाजमी है रोज़, मगर जो टाइम आप वॉशरूम में लगा रहे हैं उसकी जगह आप वीडियोस प्ले कर दें, दैट्स बेटर। आपने इस वही टाइम को यूटिलाइज कर लिया बेहतर। ठीक है, नहा रहे हैं, नहाते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को गाना सुनते हुए सुना है। अगर आप नहाते हुए गाना सुन रहे हैं तो उसकी जगह आप यूट्यूब चला दें। आपने नहाना तो है, रोज़ाना नहाना तो है, तो इसका मतलब आपने नई चीज़ तो, आपने टाइम तो अपना वहाँ लगाना है, मगर टाइम को यूटिलाइज ऐसे कर लिया कि आपने सीख लिया कुछ। ठीक है, 2 घंटे की 4 घंटे की वीडियो से आप चार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4 घंटे आप नहा रहे हैं, आप मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट, और कोई ऐड शैड भी नहीं आएगा 15-20 मिनट में। तो इसमें कोशिश करें, क्लास में खाना खाते हुए, लोगों से बात करते हुए, रास्ते में जाते हुए, घर में फैमिली के साथ बैठे हो और फैमिली कोई काम की बात नहीं कर रही तो कान में लगा लो और उसको सुनो। जैसे कोई आपसे मुखातिब हो, आप बोलो कि भाई हाँ भाई ठीक है, हाँ या नहीं का जवाब दो, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई नया टाइम ईजाद नहीं करना अपनी ज़िंदगी का। जिन टाइम में आप गलत चीज़ों में, ख़राब काम में वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को रिप्लेस करके उसमें रियल एस्टेट घुसा दो। ठीक है, और रियल एस्टेट का पढ़ो। आप जॉब करनी जानी है तो जाओ जॉब करो, बिल्कुल जो कर रहे हो करो। कहीं और यूनिवर्सिटी जाना है, बिल्कुल करो, उसको पढ़ो जो काम है। बट बीच के काम में जिसमें स्क्रोलिंग हम ठोस ठोस देते ना अपनी ज़िंदगी में, उसको निकाल के यूट्यूब को रिप्लेस कर दो और एजुकेशन रिप्लेस कर दो। भले रियल एस्टेट नहीं है, कुछ आप ई कॉमर्स का पढ़ लो, बात एक ही चीज़ है। बट ऐसा नहीं हो कि आप बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मैं कैसे देखूंगा इतनी सारी वीडियोस। आप ऐसे देखेंगे इतनी सारी वीडियोस। ठीक है, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके आप वीडियोस देखेंगे। बट अगर हम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करते तो डील कहाँ सबमिट कराएंगे? TF गेमिंग यूट्यूब लाइव पे, जिस तरह अभी आपने देखा अबू जर ने डील्स लेके आए हैं, बात करी है, इसी तरह आप डीएल सबमिट कराएंगे। हुज़ैफा ने सबमिट कराई है इसी तरह। ठीक है, तो मैं लाइव देख के आपको आंसर दे दूंगा यस और नो का। भाई मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं, स्टार्ट कहाँ से करूँ अभी? हसनैन खान, आप को मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, आपने बस वो उसको देखनी है। दिस इज़ द स्टार्ट। ठीक है, जिस वीडियो पे नंबर 1 लगा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसको आप छोड़ें, बस नंबर 1 जो लिखा हुआ है ना जिस थंबनेल पे, दिस इज़ द स्टार्टिंग वीडियो। ठीक है, ये आपकी स्टार्ट की वीडियो है, इसको आपने देखना है। मैं एजेंट से बात कर रहा हूँ ड्यू डिलिजेंस फ़ी पर, वो मेरी बात पर एग्री होता है तो फिर सबमिट करा देता हूँ। मैंने चेक नहीं करी आपकी डील, बट अगर आप इसको सबमिट करा दें क्लास में, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। हसनैन खान, मैंने आपको बता दिया। सर, जो एजेंट कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी आकर देखो फिज़िकल, उसको क्या बोलना है? ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये क्वेश्चन कि एजेंट बोल रहा है प्रॉपर्टी आके देखो,
ये क्वेश्चन मुझे पता चल रहा है कि अली ने खुद काम किया हुआ होगा, चीज़ें सेंड करी होंगी, उसमें से 50 सेंड करे तो उसमें से एक एजेंट बोल रहा है कि घर आके देखो फिर बात करेंगे, ठीक है। तो इस बात का जवाब काफ़ी एजुकेटेड है, मुझे पता चल गया कि अली ने काफ़ी काम किया हुआ है, नॉलेज है अली को, अली ने सही ऑफर्स भेजी हैं। ये क्वेश्चन आके अटके, तो दिस इज द क्वेश्चन आई वांट यू गाइस टू आस्क मी, ठीक है। इसको बोलते हैं एजुकेटेड क्वेश्चन। काम कहाँ से स्टार्ट करना है, पहला स्टेप क्या है, ये सब आपको मिल जाएगा ऑलरेडी ऑनलाइन, ठीक है। सारी वीडियो डाली हुई, मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी, वो देख लें, ठीक है। एनीवेज, एजेंट अगर आपको बोलता है कि प्रॉपर्टी में आकर देखो उसके बाद बताना, तो एजेंट का आपने आंसर उसको ये देना है, उसको बोलना है एजेंट मैं जो हूँ आउट ऑफ स्टेट इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप मिशिगन में हैं तो आप बोले मैं मिशिगन से बाहर का इन्वेस्टर हूँ। अगर आप ओहायो में हैं तो बोले मैं ओहायो से बाहर का इन्वेस्टर हूँ। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को देखने वहाँ पे नहीं आता, मैं एक बंदा भेजता हूँ जो कि सिटी में रहता है, और वो बंदा कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर, जो जैसे घर बनाते हैं, घर को फिक्स करते हैं, तो उनको नॉलेज होती है घर की, या इंस्पेक्टर जो घर को इंस्पेक्ट करता। तो आपने एजेंट को बोलना है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर या इंस्पेक्टर भेजूंगा ख़रीद के आपके घर में, और वो प्रॉपर्टी चेक करके मुझे बताएगा, और उसके चेक करने पे मैं हाँ या ना बोलूँगा, ठीक है। बट मुझे उस बंदे को हायर करने और सेंड करने में पैसे लगते हैं, वो फ्री में नहीं भेजेगा। तो ये काम मैं तब करूँगा तब मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। उसको बोलना कि जब मेरी ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी, ये काम मैं तब करूँगा, किसी को पैसे दे के वहाँ पे भेजूंगा और घर को चेक करूँगा। तो अभी मुझे घर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो पिक्चर्स में लगा हुआ है और जो आप बता रहे हैं वो बहुत है, ठीक है। क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे, पिक्चर झूठ नहीं बोली, तो मुझे अंदाज़ा है कि मैं किस प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, ठीक है। बट एट द एंड मैं इंस्पेक्शन करवा लूँगा और फिर ख़रीदूँगा, ठीक है। तो आप उससे बोलें पहले मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट करो, फिर जाके मैं खर्चा करूँगा, फिर जाके किसी बंदे को हायर करूँगा, फिर जाके करूँगा। क्योंकि ऐसे तो मैं 10 प्रॉपर्टीज़ पे ऑफ़र दे रहा हूँ, तो हर 10 प्रॉपर्टी में मैं 50-50 100-100 और 500-500 डॉलर का बंदा उसको अंदर इंस्पेक्शन के लिए भेजूँ, तो मैं तो लूज़ हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑफ़र भेजी है, ऑफ़र भेजने के लिए मैं 500 का खर्चा कर रहा हूँ, राइट। मैं तो 2-3 ऑफ़र में ख़त्म हो जाऊँगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हसनैन ख़ान, मैंने आपको प्रॉब्ली 4 दफ़ा तो दिखा दिया है, बट मैं आपको 5वीं दफ़ा फिर दिखा दूँ, आप इसको तस्वीर खींच लें। ये वीडियो की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या करना है, किस तरह करना है, ठीक है। हसनैन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तस्वीर ले लें, 3 2 1 बूम। ब्रदर मैं कतर से हूँ, तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? रहील, MD रहील, यस आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यू आर सेफ इन कतर, देयर इज़ नो इश्यूज विद ड्रोन एंड एवरीथिंग। आई होप कि आप सेफ़ हैं, बट अगर कतर में है तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ईमेल करनी है, सिर्फ आपको टेक्स्ट करना है, एजेंट से नेगोशिएट करना है और डील को कंप्लीट करनी है। हमें पेमेंट कैसे मिलेगी? MS, इट्स MS, आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से मिलेगी थ्रू रेमिटेंस, ठीक है। रेमिटेंस इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होता है, तो उस तरह आपको बैंक अकाउंट में मिलेगी, आपको बैंक अकाउंट होना लाजमी है, वरना किसी किसी भाई बहन ब्रदर का पकड़ लें आप। सर जो ओके, ओके मैं फिर कल क्लास में सबमिट करवा दूंगा। यस आप क्लास में सबमिट कर लें, उस पर डिस्कस कर लेंगे। अच्छी है ये, बुरी मुझे याद नहीं कौन सी प्रॉपर्टी है, तो बट मैं इसको वापस देख लूँगा। हसनैन मैंने आपको बता दिया आपकी वीडियोस का, भाई उससे बोलेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद इंस्पेक्शन करेंगे। यस मुश्तबा, एग्जैक्टली आप बोलेंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे ना, कि मुझे पता है कि आपने मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, अब मेरे पे है कि मैं इस ऑफ़र को इंस्पेक्शन के बाद लेता हूँ या नहीं लेता, तब जाके हम करेंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं करेंगे। I got my answer, Ali. Yes, Ali. No problem. Thanks, bye. No problem. अभी भाई भी अभी तक किसी की कोई डील की है आपने दिया है? यस अबूजर, मैंने इसके स्क्रीनशॉट भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। ये काम मैं अभी नहीं कर रहा, ये तो कम्युनिटी अभी स्टार्ट करी है,
आजकल मैं कर रहा होता तो दैट्स डिफरेंट। हाई ब्यूटी अस्सलाम। सो ये काम तो काफ़ी पहले से किया हुआ है, तो ज़ाहिर है काफ़ी लोगों को पे किया हुआ है, बट वो मेरे अपने लोग थे जो मार्केटिंग एजेंसी में काम करते थे। उन्हीं को पकड़ के मैंने ये काम पे लगवा दिया था, तो वो अच्छा हुआ था। फिर मैंने उसको एक कम्युनिटी की शेप दे दी। ठीक है, ओके इंशाल्लाह विल स्टार्ट। यस रहील फॉर श्योर। Okay, guys, I think it's about time. We should head out. अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। नो मनी टू जॉइन योर ग्रुप। मूवी बफ, आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको सब चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। डिस्कॉर्ड एक कम्युनिटी है, एक हेल्पिंग हैंड है। जिस तरह आप हर एक कोट है, आपका क्या नाम है, मूवी बफ। ओके, मूवी बफ एक कोट है। ठीक है, कोट ये है, यू आर द सम ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। ठीक है, आप उन लोगों की प्रोडक्ट हैं जो आपके 5 करीब के लोग हैं। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि जिन 5 लोगों ने जो हरकतें कर रही हैं, फॉर एग्जांपल वो 5 लोग डकैती कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, बाहर सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वरेवर। ठीक है, आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 6 महीने के बाद नहीं, आप लाजमी उनमें से एक बंदा बनेंगे। ठीक है, अब 5 लोग वो हैं जो रियल एस्टेट में मेहनत कर रहे हैं, 5 लोग वो हैं जो डील दे रहे हैं, 5 लोग वो हैं जो डील क्लोज कर रहे हैं, 5 लोग वो हैं जो डील कमा रहे हैं, 5 लोग वो जो हैं जो रियल एस्टेट में घुसे हुए हैं। ठीक है, तो आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, 6 महीने नहीं, 7वें महीने में आप बैठे होंगे कि यार ये 5 लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ये पागल है। या आप बोलेंगे कि यार, आप उनसे इंस्पायर होंगे कि ठीक है मैं करता हूँ, और ये आप जानबूझ के नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन आपको उस काम करने की तरफ पुश कर देगा। वो इस वजह से क्योंकि वो काम होता हुआ आपको दिख रहा है, राइट? सो दिस इज वाई इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टेड मूवी। अगर मूवी बफ, अगर आप खुद काम कर रहे हैं ना, तो आपके साथ कोई नहीं बंदा बैठा हुआ। आपके घर में बहन बैठी हुई है जो फॉर एग्जांपल मेडिकल कर रही है, आपके घर में भाई है जो 9 to 5 जॉब करके आ रहा है, वो बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, ये उल्टी सीधी हरकत है, जॉब करो चुपचाप पैसे कमाओ। दूसरा बोलेगा यार बिजनेस स्टार्ट करो, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स का। आप दूसरे दिन छोड़ोगे और उधर लग जाओगे, तीसरे दिन छोड़ोगे जॉब पे लग जाओगे, वो छोड़ोगे मेडिकल में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको डिफरेंट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, जब आप कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं, जो मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, चीखता रहता हूँ, वो क्यों करता हूँ? जब आप एक जगह आते हैं ना, तो आपको दिख रहा होता है यार वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी डील इतनी क्लोज होगी, तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, और रियल एस्टेट ये नहीं है कि आप कोई शराब पी रहे हैं, इट्स ए एजुकेशन प्लेटफॉर्म। लाखों डॉलर, करोड़ डॉलर, दुनिया के 90%, आप गूगल कर लेना, दुनिया के 90% मिलियनियर्स और बिलियनियर्स रियल एस्टेट से बनते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट ओनिंग और उसको रेंटल देने से बनता है। ठीक है, 90%। ठीक है, 10% इलॉन मस्क वाले भी होते हैं जिनका सारे पैसे कंपनी से मिले होते हैं, बट 90% मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स आर बिल्ट फ्रॉम रियल एस्टेट। ठीक है, तो बात आती है, ये काम फ्री में मैं बता रहा हूँ, सब कुछ आप कर सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा इशू हमारे लोगों का होता है, पैसे तो मैं नहीं दूंगा, बाकी जो करवाना है करवा लो। ठीक है, इसी वजह से मैंने फ्री भी कर दिया कि जिन लोगों को वो शिकायत है, ठीक है आप फ्री कर लो, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ, नो मैटर आप कौन बंदे हैं, आप 10 दिन वो काम करेंगे, 15 दिन आप छोड़ के घर बैठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं होता मुझसे, बहुत मुश्किल है। अनलेस कि आपके पास कम्युनिटी है, आप क्लास में जाते हैं ना, 10 बंदे 50 बंदे आपकी क्लास में बैठते हैं, आप क्यों नहीं भागते? क्योंकि आपको पता होता है कि 50 बंदे मेरी क्लास में हैं, मैं इनके साथ मिल के बैठ के बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आप आसानी से सीखते हैं और आगे निकलते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी नहीं किसी शायद अनवर, देयर इज मैनी अदर पीपल जो एजुकेट करते हैं मुझसे बहुत लाखों दर्जे ऊपर है। ठीक है, लाखों दर्जे, आप उनके लें, बट डू नॉट डू इट अलोन। आपने अकेले नहीं करना ये काम। ठीक है, किसी के साथ मिल के करना है, जो आपको वहां से पुश करे, आप उसको यहां से पुश करें, और दोनों के सर पे बंदूक रखी हुई हो। किसकी बंदूक? पैसों की, कि हर महीने मैं पैसे दे रहा हूं यहां पर, बट मुझे डील नहीं मिल रही, इसका मतलब है मुझे मेहनत करनी है। ये होती है बंदूक।
जब आपके ऊपर आएगा ना, बंदूक रखी जाएगी कि पैसे दो बोल के, तो फिर आप काम करेंगे। और ये आपकी मेरी नहीं, ये हर बंदे की नेचर है। मैं भी ऐसी था, मैंने फ्री में थोड़ी ना सीखा, मैंने थोड़ा ना यूट्यूब करके, हाँ भाई यूट्यूब करके बैठा हुआ पूरी पूरी यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ। मैं सीखना चाहूँ भी ना तो मेरा दिमाग बोलेगा यार ये फ्री है, इसमें कुछ ना कुछ तो मसला होगा, मैं नहीं करता ये काम, और मैं छोड़ के मूव ऑन कर लूँगा। ठीक है, तो अगेन फ्री पे आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको सब फ्री मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलें, बहुत वीडियो हैं, हज़ारों घंटों की वीडियो है, आपको मिल जाएगा। बट आई कैन गारंटी यू कि आपने वो नहीं पढ़ना, आपने नहीं पढ़ना, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना ही आप खुद स्टार्ट कर पाएंगे। बट आपकी मर्ज़ी है एट द एंड ऑफ द डे, जो जो पॉसिबिलिटी आपको बनती है। भाई क्या व्हाट्सएप ग्रुप है आपका जहाँ पे अपडेट करते हैं? यस, सैयद 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 अली सैयद अली, यस, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो अटैच है। कोई भी मेरे लिंक इन द बायो में चले जाएं। वी हैव अबाउट 3000 पीपल, यस, व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी है। हसन खान भाई, भाई दिन में कितने टाइम इसमें निकालना होगा? हसनैन आपके ऊपर है ये, ठीक है, आप जितना जल्दी जितना ज़्यादा टाइम डालें उतना ज़्यादा बेहतर है, नंबर वन। और जितना कम डालें उतना ज़्यादा आपका नुकसान है, दैट्स ऑल इट इज़। आप जब भी कोई चीज़ में आते हैं आपको ना अपना दिमाग, दिन, दिल, एवरीथिंग उसमें डालना पड़ता है। आप बोलते हो कि यार मैं इसको ट्राई, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो ट्राई करना चाह रहा हूँ, मगर ट्राई करने में आपने अच्छा खासा टाइम देना होता है अपने आप को, कम से कम 1 साल 2 साल। आप बोलते हो मैंने ट्राई किया है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, नई बिज़नेस चला, चलो आप इसको बंद करके मैं चला जाऊँ, ऐसा नहीं होता कि आप 5 महीने में गिव अप कर दो। हो सकता है आपके छठे महीने में कोई बड़ा होलसेलर डील लगा दे आपसे, आपकी मार्केट का या आपकी ई कॉमर्स का, कोई भी बिज़नेस का, ठीक है। तो आपने दिल लगा के मेहनत करनी होती है उस टाइम तक। आई डोंट नो, आप काफ़ी बुक्स जो आप पढ़ेंगे वो आपको डिफरेंट बात करती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि 3 महीने 4 महीने 1 महीना 10 दिन लगाया और आप बोल रहे हैं मेरे लिए नहीं है। दैट्स वो डिफरेंस होता है ना, मेरे लिए नहीं है, मेरा मूड नहीं है, या मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैंने इसको इतना ट्राई कर लिया कि इसमें और ट्राई बचा नहीं है। तो दिस डिफरेंस, सो मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएं, मेरे हिसाब से जो मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से 10 ईमेल्स पर डे, आपने 10 प्रॉपर्टी पे ऑफर करना है डेली। अब जो सीनियर स्टूडेंट है वो हर एक प्रॉपर्टी पे वो 5 मिनट या 10 मिनट में ईमेल करके मूव ऑन कर देते हैं, तो वो तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट में पूरा काम कर देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, आप क्योंकि नए हो सकता है आपको टाइम लग जाए, तो हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए प्रॉपर्टी को 10 प्रॉपर्टी को ईमेल करने पे। ठीक है, बट डेली करना है। उसके बाद जो जो जैसे आज आपने मंडे है, आज आपने 10 करी हैं, कल ट्यूसडे कल 10 फिर करना है। अब जो मंडे का रिप्लाई आएगा ना वो ऑन टॉप ऑफ द 10 है, ठीक है, उसका टाइम डिफरेंट है, उसको हमने 10 से मेक श्योर नहीं करना। तो आप जितनी ज़्यादा ईमेल करते हो उतनी ज़्यादा ईमेल का रिस्पॉन्स भी आता रहेगा, उतनी ज़्यादा फॉलोअप भी करना है आपको, उतनी ज़्यादा आप बिजी भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बट फॉलोअप में आपको 5 सेकंड लगेंगे, घंटे नहीं लगेंगे। सर मैं एफर्ट नहीं कर सकता, जॉबलेस एफर्ट नहीं कर सकता, जॉबलेस हूँ, ऑनलाइन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, रियल एस्टेट पे काम करना चाहता हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखते रहता हूँ। कुरैशी, यस, अगर आप कुरैशी अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वीडियोस को कंटिन्यू करें, हर रोज़ क्लास में आएँ, जिस तरह आप आज आएँ, ऑफ़र दें, कुछ नहीं समझ आएगा वापस क्लास में आए, यार एजेंट मुझे ये बोल रहा है इसका क्या हल है, तो मैं आपको हल बता दूंगा। ठीक है, बट अगेन ये काम आपने स्टार्ट करना है, ईमेल्स करनी है, सेंड करनी है, उसके बाद की बात है ये। ठीक है, होपफुली आई एम आंसरिंग यू गाइस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर द पीपल हु आर लाइकिंग ऑन इंस्टाग्राम, आई अप्रिशिएट यू सो मच। भाई प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। सैयद अली, सैयद अली आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर कोई नहीं है, आप यूट्यूब लाइव पे रोज़ जिस तरह आपने कॉन्टैक्ट नंबर की बात करी है इसी तरह आप मुझसे आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। बाकी सारी अपडेट आप डिस्कॉर्ड में मिल सकती है, वहाँ पे भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। आपकी कोई डील आती है सैयद अली, आप यूट्यूब पे लेके आएंगे, मैं आपको बता दूंगा जिस तरह मैं बाकी इंसानों का मतलब लोगों का बता रहा हूँ। भाई एक मशवरा दूँ भाई की तरह, रियल एस्टेट बेस्ट या फॉरेक्स ट्रेडिंग? देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग
इट्स अप टू यू। ट्रेडिंग में पर्सनली पैसे हैं और कुछ लोग बनाते भी हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ट्रेडिंग में काफ़ी इश्यूज इस वजह से हैं कि फॉर एग्जांपल आपका एक अच्छा ट्रेड लग गया, लेट्स सपोज आपने 10,000 बना लिए, $10,000, ठीक है, लॉट ऑफ मनी, 10,000 बना लिए। आप दूसरा काम क्या करोगे, उसमें से 5,000 रखोगे, 5,000 दोबारा इन्वेस्ट कर दोगे, अपने पैसे निकालोगे। आपको बाकी स्टॉक लेने के लिए पूरे 5,000 डालने पड़े, राइट। लेट्स सपोज आप बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं लेना, मैं सारे पैसे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपने नया स्टॉक लेने के लिए दोबारा से 10,000 निकालना डाला और 10,000 का स्टॉक मिल गया, ठीक है। अब ये बात रियल एस्टेट में सुनो, 10,000 में आपको 100,000 की प्रॉपर्टी मिला के दे रहा हूँ। मैं दोबारा बोलता हूँ, 10,000 में मैं आपको $1,00,000 की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। मैं दोबारा बोलता हूँ, 10,000 में मैं आपको 1,00,000 की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। विच वन इज डिफरेंस, विच वन इज बेटर, राइट। आपने 10,000 अपनी जेब से निकाले, ट्रेडिंग में डाल दिए। आपने 10,000 जेब से निकाले और 100,000 की प्रॉपर्टी खरीद ली। लुक एट द डिफरेंस गाइस, ये शुड आपका दिमाग को फाड़ देना चाहिए, ब्लो कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई भी काम बताते हैं दुनिया में, कोई भी काम, स्टॉक्स हो गया, ई कॉमर्स होगी, अमेजोन होगी, जो आप 10,000 लगाएं और वो आपको 100,000 की चीजें दे रहा है। दिस इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट। ये आप लोगों के दिमागों में नहीं घुसती है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हुए, वहां पे सिर्फ कैश चलता है, यहाँ पे कैश नहीं चलता। आप 10,000 पे आप 100,000 की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ठीक है। आप चले, आप 20% आपने डाल दिया, आपने 20,000 पे 100,000 की प्रॉपर्टी ले ली, जबकि स्टॉक्स मार्केट में, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो करेंसी में, ई कॉमर्स में 20,000 देंगे तो 20,000 की चीज़ मिलेगी आपको, या 20,000 देंगे तो 20,000 का आपको सामान मिलेगा, उस सामान को आपने आगे बेचना है। यहाँ पे आपको मैं 20,000 में $2,00,000 की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। इमेजिन दिस। चले, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ सुने, आपने 20,000 डाले, 1 साल मेहनत करी, वो $2,00,000 जो हो गया, 2,50,000 हो गया। अब ई कॉमर्स में आप 10,000 डाल के आप मेहनत करके दिखाते हैं और मुझे दिखाते हैं कहाँ पे आपको 50,000 मिल जाएगा ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स स्टार्ट ही, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से कर रहे हैं, स्टार्ट ही वो 20-25 लाख पाकिस्तानी रुपीज से होता है। और अगर आप प्राइवेट लेबल वगैरह की बात कर रहे हैं, फिर तो आप भूल जाएं, फिर तो करोड़ों में जाती है, राइट। क्योंकि मार्केटिंग का खर्चा, मेरे पास जब मार्केटिंग एजेंसी थी, जिन कंपनीज का हम काम करते थे, मार्केटिंग का एड एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, वो डेली 2-2 लाख 3-3 लाख का एड एक्सपेंस होता था, एड एक्सपेंस, ठीक है। प्रोडक्ट छोड़ो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग छोड़ो, PLU यूनिट्स छोड़ो, बाकी ROI छोड़ो, सिर्फ मार्केटिंग की कॉस्ट की बात करूं। सो दिस इज ह्यूज गाइस, ह्यूज। यहाँ पे आपको डील हंट करनी है, 0 पैसे लगाए, चले आप कम्युनिटी में आ गए, 10 पैसे लगाए, एक प्रॉपर्टी आप पकड़ते हैं। लेट्स सपोज आपने 3 महीने 6 महीने कम्युनिटी में लगे, 6 महीने आपको सिर्फ एक मिली, 6 आपने कितने लगाए, $60 लगाए आपने, $60, और आपको एक प्रॉपर्टी मिली। उस एक प्रॉपर्टी में भी आपको $500 रिटर्न मिल रहा है। सो दैट्स लाइक 1,000% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि इतना उससे लाख दर्जे बेहतर जिसके लिए आपने प्रॉपर्टी फाइंड करी है ना, उसको मिल रहा है। This is the difference, guys. This is the difference between real estate. You guys are sleeping like you slept on e-commerce, sleeping like you slept on Amazon, sleeping like you slept on cryptocurrency. ठीक है, नहीं वेस्ट करो अपना टाइम। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, bro, if you're making much money from this, then why are you sharing? Good question. देखिए, मैं जो anonymous, देखिए मैं जो पैसे बना रहा ना, वो पैसे बन रहे हैं इक्विटी में, ठीक है। घर को ओन करते हैं और घर को ओनर के बाद पैसे बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि घर की इक्विटी जब मैं घर सेल करूंगा ना, तब मुझे पैसे मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, मेरे पैसे उसमें फंसे हुए हैं। जैसे मैंने 10,000 लिया तो 1,00,000 की प्रॉपर्टी मिली, तो जब तक मैं वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करूंगा तो मेरे पैसे फंसे हुए उसमें, राइट। जिस तरह जैसे इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क अभी ट्रिलियनियर बन गया था, उसकी जेब में $1 ट्रिलियन नहीं थे, वो इन्वेस्टेड थे कंपनी में,
ठीक है, अगर वो निकालता पैसे तो उसके पास $1 ट्रिलियन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह होता है। और मैं क्यों इतने पैसे नहीं कमा रहा, क्योंकि मैं अभी वो इन्वेस्टर नहीं हूँ कि मैं जो हूँ सारे प्रॉपर्टी मैं खुद ले रहा हूँ। मैं जितनी ईमेल आती हैं मैं छोटा पैसे रखकर सारे फ़ायदा मैं इन्वेस्टर को दे रहा हूँ। ठीक है, बट द क्वेश्चन आया था कि स्टॉक या रियल स्टेट, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि स्टॉक मार्केट रियल स्टेट के जूतों से भी नीचे की लेवल है, राइट, क्योंकि स्टॉक मार्केट को आप लेवरेज नहीं कर सकते। ठीक है, अपने जैसे 10,000 का स्टॉक ले लिया, 10,000 का 10,000 ही रहेगा, आप उसको लेवरेज नहीं कर सकते। मैं अब 10,000 से मैंने 100% लेवरेज कर दिया, 90% लेवरेज कर दिया, और मैंने 100,000 की प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ लेवरेज। आप रियल स्टेट को, क्योंकि आप रियल स्टेट को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस को आप टच नहीं कर सकते, ना ही फील कर सकते हैं। बिजनेस एक आइडिया है लोगों का कि ये KFC है, अगर KFC का मैं नाम चेंज कर दूं, सब कुछ वैसे ही रखूं, कोई नहीं आएगा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस के आइडिया की वजह से। सो बिजनेस इज एन आइडिया, क्रिप्टो करेंसी इज एन आइडिया, इसको टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते। स्टॉक मार्केट इज एन आइडिया, यू कैन नॉट टच इट, राइट। तो ये सारी चीज़ें आइडिया हैं, बट रियल एस्टेट बोलते रियल इस वजह से है कि वो रियल होती है। माई फोन जस्ट डाइड गाइस, दैट इज सो स्टूपिड। Wait, I didn't put the wow, okay. Guys, I should have put this mic, but I didn't put it. But anyways, ourselves, yes. One second. बोलते मेरे पास डिट्रॉइट की 20,000 और 39 वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको इस पे क्या ऑफ़र दूं कि वो क्योंकि रीहैब उसकी 70,000 और 80,000 के अराउंड दिख रहा है। ओके, तो अगर 70 और 80,000 के दरमियान उसकी रीहैब है, तो आपको ये मालूम करना है कि कि A और V क्या होगी आफ्टर रिपेयर वैल्यू। प्रॉपर्टी को रिपेयर करने के बाद प्रॉपर्टी कितनी बनेगी। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी को रिपेयर करने के बाद प्रॉपर्टी बनती है 1,50,000, ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी ली है 20,000 में, डाले उसमें 70,000 है, ठीक है, तो आपकी ऑल इन कॉस्ट हो गई पहले 20,000 खरीदने के, और बाकी 70,000 हो गए फिक्स करने के, तो ऑल इन कॉस्ट हो गई $90,000। घर बिक रहा कितने का है? साफ सुथरा घर 150 का, ठीक है, तो जब 150 का बिक रहा है तो 90,000 आपके पास बच रहे हैं 60,000 हैं। उस 60,000 में काफ़ी फीसेस होती हैं, तो मोस्ट लाइकली आपके घर ले जाने वाले पैसे 20 से 25,000 होंगे उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। सो विच इज़ नॉट अ बैड, इट्स एन ओके डील, ठीक है। फिक्स एंड फ्लिप के लिए इन्वेस्टर्स को कम से कम 30,000 से ज़्यादा चाहिए होता है, 30,000 से कम वो मांगते नहीं है प्रॉपर्टी प्रॉफिट। भाई हम इन्वेस्टर खुद कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? कुरैशी, आप इन्वेस्टर फाइंड नहीं करेंगे, आप हमें सबमिट करा देंगे, हम आपके लिए फाइंड करते हैं। इन्वेस्टर बेसिकली फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, ऐड चला दें, यूट्यूब पे ऐड चला दें और फेसबुक पे कर दें, या आप जो है कोल्ड कॉलिंग करें, ठीक है, बड़ी आसान है। बट इसमें कॉस्ट लगती है, ज़ाहिर है आपको डेली $5-6 आपको लगाने पड़ेंगे अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, तो वो हम करते हैं आपके लिए। तो आप बस डिस्कॉर्ड में सबमिट करा देते हैं और हम इसको फाइंड कर देते हैं। भाई डिस्कॉर्ड की फ़ी $10 है, क्या उसमें कुछ ख़ास है? सैयद अली, इट डिपेंड्स आप किस चीज़ को ख़ास बोलते हैं। अगर आप ख़ास हेल्प को बोलते हैं तो ठीक है, आपके लिए हेल्प है। ख़ास आप रिसोर्सेज के लिए बोलते हैं, जिन सिटीज़ में ऑफ़र जल्दी एक्सेप्ट होगी या जिन सिटीज़ में हमारे पास इन्वेस्टर हैं वो सिटीज़ हम देते हैं, तो उसमें ख़ास से ख़ास अगर आप बोलते हैं कि मैं आपके एजेंट को कॉल कर लेता हूँ, वो आपके लिए ख़ास है, तो वो एक वो हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या ख़ास है। जो भी चीज़ें हैं ना, जो लिंक होता है उसका, उसमें लिखी हुई हैं, तो आप उसको देख लें, आपको समझ आ जाएगा। क्या कोई भी रियल एस्टेट कंपनी खोल सकता है? वैसे रियल एस्टेट कंपनी बेसिकली आपको पैसों पे खुल जाएगी, पैसे दे तो कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। मसला आता है रियल एस्टेट को ख़रीदना,
फंड्स को ट्रांसफ़र करना, वो सब चीज़ें, राइट। और पेपर वर्क का, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स का इश्यूज़ यही है कि इसको ओवरसीज़ बाय करेंगे, वो बहुत मुश्किल है। तो कर आप ये सकते हैं कि किसी भी बंदे को पकड़ें जो यहाँ पे रह रहा होता है, उसके साथ पार्टनरशिप करें, क्योंकि अब आप घर को ख़रीद तो लें, घर को फिक्स कौन करेगा? अगर आपका वीज़ा ही वो डिक्लाइन कर रहा है यूएस से, तो घर को फिक्स कौन करेगा? घर में टॉयलेट टूट गया, उसका काम कौन करेगा, राइट? तो वो सारे कनेक्शन कोई ना कोई बंदा होना चाहिए जो आपको उसकी हेल्प कर दे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छी डील लेके आएँ, थोड़े पैसे लेके आएँ, थोड़े पैसे वो लगाए और सारा काम खुद करे और आप पार्टनर बन जाए उसके ज़रिए, उसके साथ, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं स्कीमों पे जाएँ जो बोलते हैं कि भाई प्रॉपर्टी, जैसे दुबई में सेल होती हैं, राइट? इन्वेस्टर आपको बोलते हैं कि ले लो ले लो ले लो प्रॉपर्टी, और वो आपको सिर्फ बेच देते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है? सो दिस इज़, इसमें मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है, यार आप मुझे कोई भी प्रॉपर्टी लगा दो और मैं इसको ख़रीद लूँ, और अगर कोई मसला आता है उसके बाद फिर क्या करूँ मैं, राइट? बट अगर आप किसी के साथ पार्टनर करो जो प्रॉपर्टी लेके आ रहा है या पैसे लगाना चाह रहा है, तो फिर उसका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, उसका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। जब ऐसा होगा ना, तो फिर बंदा कहीं नहीं भागता। फिर कुछ भी हो जाए, उसका नाम प्रॉपर्टी पे आ गया तो आ गया, अब उसको डील ही करना है, राइट? तो वो भाग नहीं सकता, ना ही आपसे कोई भाग सकता। सो प्लस यहाँ पे लॉज इतने अच्छे हैं, कोई किसी की चीज़ लेके नहीं भाग सकता। सो मोस्ट लाइकली आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे कोई बंदा है उसके साथ वो कर लें पार्टनरशिप, उससे ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। उसको बोलें सारे काम तुमने देखने प्रॉपर्टी के वहाँ रहते हुए, मैं तुम्हारे लिए डील ला रहा हूँ और थोड़े से पैसे ला रहा हूँ, दैट्स इट, बाकी काम तुम्हारा है। Bro, how to make first 10K because it's the difficult first step of the stairs? Yes, 10K is probably the hardest thing. Money, पहली डील आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड होगी, बाकी 5वीं 6ठी 7वीं आपको पानी लगेगा। इसी तरह जब आप बड़े लोगों को सुनो तो वो बोलेंगे फर्स्ट मिलियन इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट मनी, ठीक है? पहला मिलियन बनाने में आपकी जान चली जाती है, बट दूसरा मिलियन कम्स वेरी इजी लाइक अ पीस ऑफ केक, ठीक है? क्योंकि अगेन आप पैसों से पैसे बना पाते हैं ना, तो अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, देन आपकी जो नेक्स्ट 2-3 मिलियन डॉलर्स हैं, दे बिकम सुपर इजी, ठीक है? अब ये बात मिलियन में नहीं है, ये बात हज़ारों में भी है, 100 में भी है, 5 में भी है, एवरीथिंग में है, ठीक है? ये बेसिकली लाइफ स्ट्रक्चर है। मैं आपको बहुत बेसिक एग्जाम देता हूँ। ये फ़ोन है, ठीक है? इसको मैंने पुश करना है यहाँ से लेके यहाँ पे, ठीक है? यूँ पुश करना है। स्टार्टिंग में मुझे हमेशा मुश्किल होगी, इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। देयर इज इनर्शिया हियर जो मुझे पुश नहीं करने देगा, बट जब मैं पुश करके आगे निकलूंगा तो मेरी फोर्स जो उसको ले जाने में जो लग रही होगी, उतनी फोर्स वो नहीं होगी जब मैंने उसको पुश किया था पहले। आपने पढ़ा फिजिक्स में, दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है? एक एटम की बात कर रहा हूँ, ये एटम ही है ना, एक एटम की बात कर रहा हूँ जो इतना बेसिक है, हर दुनिया की चीज़ उस एटम से बनी है। जब एटम इस लेवल पे आपको बता रहा है कि जब निकलने में मैं आपको मुश्किल दूंगा, जब आप निकल जाएंगे तो मेरे पास फिर मुश्किल नहीं दूंगा। तो इसी तरह आप जो भी काम करते हैं, नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी। नया घर ले रहे हैं, स्टार्टिंग में सेटल डाउन में मुश्किल होगी। नई बात सुन रहे हैं, स्टार्टिंग में आप उसको रिजेक्ट करेंगे। नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया गाड़ी चला रहे हैं, नया बाइक चला रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं आप नया काम, सब में स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी, नो मैटर व्हाट इट इज, ठीक है? तो अगेन हर काम में आपने ये सोचना है, इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है? पुश करने में जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स मुझे चलते रहने में वो नहीं लग रही। पुश करने में थी, जब एक दफ़ा मैं चल गया तो देन इट बिकम अ लॉट ईजियर। सो दैट्स द आइडिया यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, क्या कोई आपकी रियल एस्टेट को खोल सकता है? वैसे ये बता दिया 40K to 160K ARV आ रही है। अल्लाह हक, अगर 40K to 60 ARV आ रही है और आपने शायद 20 to 39K की प्रॉपर्टी है, 40K to 60K आ रही है, मैं कंजर्वेटिव रहूँगा, अपने नंबर्स को बहुत कम लेके चलूँगा, 140, ठीक है? और ऑफर प्राइस में बहुत कम दूंगा, 20, ठीक है? 20,000 की मैंने ऑफर दी, 20,000 में चलो मुझे प्रॉपर्टी मिल गई, मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा दी 80, ठीक है? तो मैं आ गया 100,000 में, मुझे घर ऑल इन पड़ा 100,000 का, और घर आगे बिक रहा है 40,000 ज़्यादा का, 140 का। दिस इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? क्यों? क्योंकि सिर्फ 40,000 बच गए,
उसमें से आपको एजेंट को कमीशन पे करना है, मार्केट पे जाना है, क्लोजिंग कॉस्ट पे करनी है, अप्रेजल कॉस्ट पे करनी है। कोई नया सेलर आता है बोलता है यार मुझे ये पसंद नहीं आया, तुम ये करके दे दो तो मैं कर ले लूँगा, वो कॉस्ट भी होती है, ठीक है। फिर होल्डिंग कॉस्ट होती है, फिर लोन की कॉस्ट होती है, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, सो मैनी थिंग। तो 40,000 का डिफरेंस अगर आपके पास बच रहा है, दैट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। मोस्ट लाइकली 40,000 में आप सबको पैसे दे दिलाकर आपके पास बचेंगे 15 या मुश्किल से 20,000, और 20,000 इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। इतना रिस्क लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आपको सिर्फ 20,000 मिल रहे हैं, दैट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो मोस्ट लाइकली अगर घर आपको 20,000 का मिल रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही कुछ ख़राब हाल में, मूव ऑन कर लें। आप नॉर्मल अच्छे से बुरे वाले घर में देखें, जिस अगेन अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ। 0.6 वाली ऑफर्स वो ज़्यादा ईजी हो जाती हैं कि उसको आप सेल कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा काम नहीं करना होता। मुश्किल से काम होगा 20,000 का, 30,000 का, 60, 70, 80,000, दैट्स लाइक अ फुल रिहैब, ठीक है, फुल गुड जॉब। ब्रदर मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कॉन्टैक्ट इशू आ रहा है। अबू रयान, आई एम नॉट श्योर ब्रदर वे कॉन्टैक्ट इशू, आप एजेंट से कॉन्टैक्ट का मसला हो रहा है, आपको कॉन्टैक्ट निकालने का मसला हो रहा है, आई एम नॉट श्योर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ब्रो काइंडली मेक अ वीडियो ऑन video so we bro kindly make a YouTube video so we can listen to it carefully because live is lagging. Anonymous, there is many videos bro, go watch the videos, there's videos already। आपको ये बात पूछने से पहले मेरा पूरी ज़िंदगी का हिस्ट्री चेक करनी चाहिए थी सोशल मीडिया पे, फिर आप आते तो आपको समझ आता। बट अगर आपको वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल अनोनिमस वीडियोस यूट्यूब पे हैं। मेरे टिकटॉक के स्टोरी पे एक वीडियो है, वो स्टार्टिंग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अरसलान ब्रो प्रॉपर्टी बाय कर लिया, सेल कहाँ करनी है? आपको सेल करना बेसिकली एड्स पे कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग पे कर सकते हैं। बट अरसलान सिंपल एंड ईजी थिंग बता रहा हूँ, $10 पर मंथ डिस्कॉर्ड अकाउंट है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन करें, वी विल सेल इट फॉर यू। आप 500-600 लगा देंगे सेल करने में, और अगर सेल नहीं हुई तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड में लगा दें, वो ऐड हम चला देंगे। हम 10 प्रॉपर्टी का चला रहे होते हैं रोज़ाना, 50 प्रॉपर्टी के चला रहे होते हैं, एक आपकी एक्स्ट्रा आ जाएगी तो हमारे कुछ पैसों में कमी नहीं आ जाएगी, राइट। दिस इज़ वाई। सर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है? यस अली, आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, कराची, पाकिस्तान में पैदा हुआ था। भाई ये फ़ी क्यों रखी हुई है? मलिक इसी वजह से रखी हुई है कि आप जब प्रॉपर्टी लाते हैं उसको आगे सेल करने में पैसे लगते हैं, ठीक है। नंबर 1 उसको हमने ऐड चलाना, तो वो पैसे हमें कहीं ना कहीं से कवर करने होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 प्रॉपर्टी की जब लेते हैं ना तो उसमें टोकन मनी देना पड़ता है, EMT बोलते हैं उसको, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। दैट्स अबाउट 500, 800,000 to $5,000, डिपेंड कि सेलर कितना मांगता है, ठीक है। वो पैसे देने होते हैं, वो भले वापस मिल जाए बट देने स्टार्टिंग में होते हैं उसको, ठीक है। फिर इन मार्केटिंग करनी होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट लिखना होता है, उसका काम होता है। सो देयर इज मैनी थिंग्स वी हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है, जो कि आपके $10 के रिस्पॉन्स में तो बहुत ज़्यादा मनी है, ठीक है। दैट्स अबाउट $4,000 से $5,000 हमें लग जाते हैं सेल 3 to 4 2.5,000 से 3.5,000 लगते हैं, 2,500 से 3,500 लगते हैं, ठीक है। बट इसकी कॉस्ट होती है, वो हम बेयर करते हैं, आपको नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ नेगोशिएट करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है और सबमिट कराना है, दैट्स इट। जिलों पे जैसे आपने बताया सेम इट इज़, मैंने किया, इससे मैंने किया, उसके बाद जब क्लाइंट से डील करने के लिए उससे कांटेक्ट करना है, या उससे आपने कांटेक्ट करना है, उसकी ईमेल आपको मिल जाएगी, आपको पता चलेगा। सो द बिजनेस मॉडल इज़ दैट वी बाय प्रॉपर्टी इन US फ्रॉम हियर एंड सेल इट इन US। तकरीबन ऐसा है कि हम बाई करते हैं, हम बाई नहीं करते, हम बेसिकली सेलर से निगोशिएट करके उसका हाँ लेते हैं और उससे ख़रीद लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे 10 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए, ठीक है। उन 7 दिनों में हम मार्केटिंग करते हैं और नया बायर ढूंढ के लाते हैं और उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और उस बायर से 300, 400, 1,000, 1,000, 5,000, 6,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ताकि हम आपको कमीशन पे कर सकें और सारा मार्केटिंग का खर्चा निकाल सकें, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो बिजनेस मॉडल
आई एम इन यूके, कैन वी सेल फ्रॉम हियर? यस, आप कहीं से भी कर सकते हैं, यूके में है, पाकिस्तान में है, कहीं से भी कर सकते हैं। कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कांटेक्ट ऐड नहीं हो रहा मेरा ब्रदर। ऐड आप कहाँ करना चाह रहे हैं अबू रायान? आई एम नॉट श्योर आप कहाँ ऐड करना चाह रहे हैं, बट कांटेक्ट आपको उसका नंबर मिल जाएगा, उसकी ईमेल मिल जाएगी, ईमेल करनी है। क्यों इतनी आप टेंशन में हैं कि कांटेक्ट नहीं हो रहा XYZ? ARV कैसे कैलकुलेट करते हैं? ARV थोड़ा मुश्किल काम है, कैलकुलेट करना आसान नहीं है। टेक्निकली तो वो इन्वेस्टर ही करता है जो इन्वेस्टर्स को ख़रीद रहा होता है, बट एहतियातन आप ChatGPT से पूछ सकते हैं। ChatGPT आपको ARV बता सकती है उस एरिया की, या उसको पिक्चर्स दें घर की तो बता देगी कि भाई बोर्डिंग चेंज करनी है, विंडोज़ चेंज करनी है, इसके इतने लगेंगे, इसके इतने लगेंगे। तो ये आपको एक एहतियातन, एहतियात तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस वर्ड को, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, आपको बस गाइड कर देगी। तो आप ये गाइडेंस ले सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इतने ही लगेंगे, ठीक है, तो ये गाइड होगी। We do all the things from here homeland, yes, anonymous, you don't do anything because जहाँ तक आपको पेपर वर्क, ID, पैसे, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, वहाँ पे हमारी कंपनी आ जाती है और फिर हम यहाँ से ID, डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, पैसे दिखा देते हैं। आप यहीं पे यहीं रहते हैं, ठीक है, आप फिर जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी खरीद पकड़ के आते हैं और फिर हम आपको अपडेट करते रहते हैं। हम बोलते हैं हाँ भाई इस बंदे से फॉर एग्जांपल अनोनिमस से बात कर रहे थे, हाँ वो हमारा ही एजेंट है, हम ही इसको पेपर वर्क देंगे। तो आप टेक्निकली कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी पेपर वर्क देती है आपके बिहाफ पे, ठीक है। So this is how it works. Work as a property advisor, yes, you can call it as a property advisor, property negotiator or accusation manager. Actual जो नेम है ना आपका वो है accusation manager, ठीक है। आप acquire करते हैं प्रॉपर्टी कंपनी को बाय करने के लिए, ठीक है। तो you become a accusation person to acquire the property और कंपनी यहाँ से बाय करती है, ठीक है। लव यू ब्रदर, एक मेन में आपको कंफर्म बताओ हाउस का क्या है? ओके, साउंड्स गुड ब्रदर, नो वरीज। रफली एस्टिमेट दे देता है ChatGPT, यस, रफ एस्टिमेट, ये देयर यू गो। अब मैं रफ तो मेरे जहन में था, बट उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, गंदा एस्टिमेट नहीं समझ आ रहा ना, तो आई डोंट नो, बट या रफ एस्टिमेट इज अ गुड आंसर, आई लाइक दैट, ठीक है। सर एक डील बिट्रिक्स में CRM पर भी बना दें, एक डिटेल बिट्रिक्स CRMs। अली, असल में बिट्रिक्स जो होता है हम लोग नए कंपनी के सेटअप के हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे, तो इस वजह से मुझे नहीं पता, बट बिट्रिक्स आप गूगल कर लें, वो एक डिफरेंट कंपनी है। आप यूट्यूब कर लें, उस पर काफ़ी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी बिट्रिक्स पे, बहुत मुश्किल नहीं है वो, ठीक है। It's a free CRM, so that's really helpful for all of you guys. I will study it and then I'll contact you to continue. Sounds good. मिलता जुलता अंदाज़ा, yes, exactly. मिलता अंदाज़ा, अंदाज़न आपको बता देता है, exactly, you got it. ठीक है? Guys, it's been 4.5 hours I've been on live. ठीक है? आप जब भी मैं इतना लंबा बैठा था ताकि मैं आप लोगों के DMs जो आप लोग DM कर रहे हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, बट मैं लाइव आके आपकी बातों का जवाब दे सकता हूँ। अगर आप अभी मेरे पास DM आएंगे, मुझे पता है, तो मैं उसका क्या जवाब दूँ, अल्लाह ही जाने। बट I'll see you guys from the other side. Again, if you haven't joined the Discord, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको नहीं करना, आप ना करें। आप YouTube पे सब देख सकते हैं, YouTube पे मेरी ही वीडियोस मैंने सब पढ़ा दी हुई हैं आपको, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी आज एक वीडियो डालिए, मैं 10 दिन डालूंगा, 50 दिन, 100 दिन में डालता रहूँगा वीडियो, आप जितना चाहें सीख सकते हैं। बट मसला वही आता है, यू आर गोइंग टू बी सम ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू, ठीक है। अब भले रियल एस्टेट में आ रहे हैं, बट आपके आसपास के बंदे, कोई बोलेगा यार अमेज़ॉन कर लेते हैं, कोई बोलेगा यार तुम जॉब क्यों नहीं कर लेते, यार तुम तमीज़ से जाकर पढ़ लो, यार आजा ये बिज़नेस खोलते हैं। ये आपको 10 डायरेक्शन में खोलेंगे, बट अगर आप कम्युनिटी में आ गए जो सारे एक काम कर रहे हैं, सारे एक चीज़ कर रहे हैं, सारी एक चीज़ एक तरह से डील कर रहे हैं और सारे एक फील्ड में हैं,
तो आप उस फील्ड में प्रॉपरली आएंगे, प्रॉपरली बेनिफिट होगा और प्रॉपरली कुछ सीख के जाएंगे। सीख के नहीं जाएंगे तो आप बहुत सारे कनेक्शन बनाएंगे, कैसे प्रॉपर्टी खरीदना है, कैसे सेल करना है, बहुत चीज़ें। अभी तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी आगे सेल कर रहे हैं, बट जब हम खुद खरीदने जाएंगे तब क्या होगा, तब की 1000 लाख स्ट्रेटजीज हैं कि आप कौन से इन्वेस्टर बनते हो, आपको ये इन्वेस्टर बनना है, आपको ये इन्वेस्टर बनना है, ये बनते हो तो उसका ये मसला है, ये बनते हो तो उसका ये मसला, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो बी इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी। आप वाकई में मेरी ना है, आप जाएं कोई भी ट्रेडिंग कंपनी की और उसकी कम्युनिटी ज्वाइन करें। ठीक है, ट्रेडिंग वो भले आपको बता दे, फॉर एग्जांपल फ्री में, मैं नहीं मानता ट्रेडिंग रियल एस्टेट से बेहतर है। जीरो ट्रेडिंग 1% है तो रियल एस्टेट 100% है। क्यों, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया था इत्तेफाक से। बट फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिंग में आप जाते हैं तो उसकी कम्युनिटी ज्वाइन करें, ताकि आपके आसपास का हर बंदा वही काम कर रहा है जिस काम में आप इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं है कि पीछे वाला बंदा आपको बोल रहा है कि जाके मेडिकल में एडमिशन लो, या जाके बोल रहा है यार तुम जॉब क्यों नहीं करते। उनका माइंडसेट नहीं है। आपको लुक अलाइक पीपल चाहिए, जो फील सेम करते हैं, जो सोचते सेम है, जो देखते सेम है। राइट, सो दिस इज व्हाई वेरी वेरी पावरफुल कि आप कोई भी कम्युनिटी हो, ठीक है, या अपने साथ के, अब जो होते हैं दोस्त, एक पान खा रहा है, एक सिगरेट पी रहा है, एक शराब पी रहा है, आप क्या होगे, आप गुटखा खाओगे। एक रियल एस्टेट में है, एक स्टॉक मार्केट में है, एक अमेजोन पे है, आप क्या होगे, आप निकल जाओगे HC करने। राइट, आपके पास ये सारी चीज़ें, चार लोग चार डिफरेंट बात कर रहे हैं, बट अगर सारे बंदे आपके रियल एस्टेट में हैं और सारा फोकस ही यही है कि रियल एस्टेट और रियल एस्टेट में डील कैसे लानी, अक्वायर कैसे करना, ओन कैसे करना, तो फिर आप भी वही बंदा बनोगे जो आपके आसपास के लोग हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल वर्क बताओ। मलिक, आपको मैंने बता दिया है, यूट्यूब वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आप स्टार्ट से लेके एंड तक देख लें। इस वीडियो में आपको ईमेल कैसे निकालनी है आपको पता चल जाएगा। Before going, just tell what's the eBay store business model. eBay store business model, I've done it in past. आप eBay पे अपना लिस्ट लगाते हैं प्रोडक्ट अमेजोन से लेके, ठीक है। अब वैसे इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। लीगली आप नहीं कर सकते, बट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। eBay पे आपने प्रोडक्ट लगाई, ये माइक, ठीक है, कितने का लगाया, $12 का। आप गए अमेजोन, अमेजोन कितने का दे रहा है, $10 का। दैट्स अ होल मॉडल। eBay पे लगाया 12 का, आपने अमेजोन, अब मैंने ख़रीद लिया 123 मेन स्ट्रीट का आपसे eBay से, तो आपको पैसे मिले, आप क्या करोगे, जल्दी से अमेजोन पे जाओगे, 123 मेन स्ट्रीट पे बिजनेस वो डालोगे और शिप करा दोगे, तो वहाँ से अमेजोन से शिप होगा आपके पास, बट आपने ऑर्डर किया खुद से और आप $2 का प्रॉफिट निकालोगे। ये होता था पहले, अब नहीं है अलाउ, eBay आपको फ़ौरन बैन कर देता है स्टोर। व्हाट एल्स, ईमेल का मैंने आपको बता दिया। हाय समियो, हाय समियो, व्हाट्स द eBay स्टोर बिजनेस मॉडल, मैनी पीपल अर्निंग फ्रॉम इट, इट्स लाइक ड्रॉप शिपिंग। यस, इट्स लाइक ड्रॉप शिपिंग, बट इट्स वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। थोड़ी सी इधर से उधर हुई, आपका पूरा eBay स्टोर गया। राइट, और eBay स्टोर आप खासा नहीं बना सकते पाकिस्तानी नंबर पे या पाकिस्तानी आईडी पे। सर एक डील, सर जो प्रॉपर्टी बाहर से ओल्ड लगती है और अंदर से न्यू हो, उस पर कौन सा फॉर्म लगेगा। गुड क्वेश्चन अली। अगर प्रॉपर्टी बाहर से ओल्ड दिख रही है और अंदर से न्यू है, मोस्ट लाइकली 0.7 या 0.6, ठीक है। अगर कोई बंदा घर अंदर से बना रहा है तो 90% ऑफ द टाइम वो बाहर से भी फिक्स करेगा, वरना क्योंकि बाहर से दिखने वाली चीज़ ही सेल होती है ना, अंदर तो रेंटर रहेगा वो ठीक है, बट अगर बाहर से ख़राब दिख रहा है, आप किसी घर में जाओगे जो बाहर से ख़राब दिख रहा है, नहीं, आप बोलोगे यार अंदर से जैसा भी है बाहर से ख़राब दिख रहा है, मुझे इसमें डर लग रहा है, मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो इसी तरह रेंटर भी सोचेंगे, इसी तरह कोई भी नया ख़रीदने वाला सोचेगा। तो अगर बाहर से बुरा लग रहा है तो आपको पैसों का कम कराना लाजमी है उस पर, तो 0.6 से 0.7 के दरमियान, भले वो अंदर से अच्छा है। बट मोस्टली ये होता है कि बाहर से भी लोग ठीक कराते हैं, अंदर से करा रहे होते हैं। वो पागल नहीं है कि सिर्फ अंदर से कराते हैं और बाहर का छोड़ दें। तो या तो ये पिक्चर्स का मसला होगा, लाइटिंग का मसला होगा, या कुछ और मसला होगा कि अंदर का ठीक नहीं हुआ होगा, उन्होंने बस पेंट शेंट करा के ख़त्म करवा दिया काम, ठीक है।
That's called reselling. Yes, Mushtaba, you're right. Reselling basically on eBay. That's also the thing. Yes, should target home which interior is good but exterior is bad, so we get in cheap fixing. Yes, anonymous said it right. Yeah, एक और चीज़ आप ये सोच सकते हो कि बाहर अगर ख़राब दिख रहा है और अंदर भले अच्छा है, लोग उसको बाय नहीं कर रहे होंगे, राइट? तो इसका क्या मतलब है, आप उसको ले सकते हैं सस्ते में, घर को फिक्स करा के हम महंगे में बेच देंगे उसको। एक्सटीरियर इज चीप क्या? ज़िलो पे जैसे हम हाउस विज़िट किया उसके बाद मैं कहाँ ईमेल करूँगा, क्या नेक्स्ट करना है? अबू रयान अगेन आप इस वीडियो को प्लीज़ देख लें, ये 40 मिनट की वीडियो है, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? मैं आपको 40 मिनट भी बैठ जाऊँ तब भी आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट मेक श्योर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट नंबर 1 है इस वीडियो पे, ठीक है? नंबर 1 हैशटैग नंबर 1 वो जानबूझ के मैंने लिखाया था एक्चुअली, तो आप उसको देख लेना, ठीक है? So anyways guys, that's all. I'm very tired. I have to now go and do my own work, क्योंकि मैं भी पैसे इसी तरह बनाता हूँ, मैं सिर्फ कोई कोर्सेज से थोड़ी ना बना रहा हूँ, और कम्युनिटी से, क्योंकि $10 इज़ नॉट गोना मेक मी एनीथिंग, बट उससे होता ही है कि मैं बंदे को हायर कर सकता हूँ। जैसे हम लोग अभी हायर कर रहे हैं एक बंदे को जो कि टेक्निकल काम करेगा हमारी कम्युनिटी के, वेबसाइट के, आप लोगों के डील का फॉलो थ्रू, वो सब चीज़ें, ईमेल वगैरह वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो सारे काम करेगा, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतर करेंगे। बाकी आपसे कल मुलाकात होती है गाइस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन एल्स। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू ब्रदर अबू रयान, आप भी खुश रहो। Okay, go back, focus on real estate guy. I cannot tell you enough. It's very important for you to make money, for everyone to make money. ठीक है? AI सब कुछ रिप्लेस कर सकता है, वो ये नहीं रिप्लेस कर सकता कि आप खाओगे क्या, वो ये नहीं रिप्लेस कर सकता कि आप पहनोगे क्या, वो ये नहीं रिप्लेस कर सकता कि आप रहोगे कहाँ, ठीक है? इन 3 चीज़ों में से हम रहने पे फोकस कर रहे हैं, जो कि रियल एस्टेट कहलाता है। आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। एनी क्वेश्चंस कंसर्न, गो ऑन यूट्यूब, वॉच फ्यू वीडियोस। अगर नहीं समझ आ रहा कमेंट करते हैं, यूट्यूब के मैं कमेंट्स खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ, बट डीएम एआई करती है या कोई और बंदा करेगा अगर हम आप तक पहुँच गए तो, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स हैं। ओके गाइस, किसी भी स्टेट किसी भी सिटी में टारगेट कर सकते हैं। मलिक, यस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, होपफुली मैंने आपको उसका वापसी में कुछ बदला दिया होगा, जो कि आपका इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू कुछ सीखने को आपको मिला होगा। होपफुली आप कोई घर लाएंगे, घर ढूंढेंगे, रियल एस्टेट में आएंगे, इंशाल्लाह यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। I'll see you guys tomorrow, same time, 9 p.m. Pakistani time, 9:30 Indian time. We will go from there. Bye for now.